Yo, my ladies and gentlemen, what's good, guys? Hey, you, me. Guys, मेरी आवाज आ रही है तगड़ी लेवल की G8 EU G8 Negros और मैं मोबाइल में जरा ये चैट ओपन कर लूं ताकि तुम लोग की बातें सुन पाऊं। एक तो मैं मोबाइल में नेट ऑन कर ले तो मेरा मोबाइल ही मर जाता है। वालेकुम अस्सलाम। अय्याज व्हाट्स गुड ब्रो? यस आ रही है। Not interested in coming first, second, third or anything. क्या मतलब? Bella, how are you? I'm G8, my friend. I'm very G8 and always be G8able. सब्र मैं जरा अपनी ये स्ट्रीम ओपन कर लूँ ना। अभी तो मैं पीसी से रीड कर रहा हूँ। गाइस आ जाओ यार, एक बड़ी मस्त चीज आई है, ब्रांड रोड चैलेंज एक साथ खेलते हैं। ठीक हो गया? ब्रांड रोड चैलेंज ये एक साथ खेलते हैं। पेल भाई बिग फैन, क्या बात है मेरा भाई। यार अब एसी बन जाओ। फैन तो मैंने लगाया हुआ है, वो भी बड़ा था बट काम नहीं कर रहा है यार, पसीना पसीना। और यार ये मेरा मोबाइल फट जाएगा यार एक दिन। जैसे नेट ऑन के मोबाइल पे तो मेरा मोबाइल रुक गया एक जगह पे, यूट्यूब भी लोड नहीं हो रहा। ओ माय गॉड मैन, बैक करूं बैक भी नहीं हो रहा, एक जगह पर अटका हुआ है। केला एयो मई गाइस लाइक कर दें से जो स्ट्रीम पे आ रहे यार। ये छेट ओके ये रहा मेरा लाइव स्ट्रीम। शुक्र है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम नो सी। पहले मैं अपनी स्ट्रीम को लाइक कर दूं मोबाइल से। ओह ये आयशा जान हाउ आर यू? 40 मैच के की कब स्टार्ट होगी भाई? अभी ना 40 नहीं खेलेगी, अभी खेलेंगे गोड लाइक की टीम, इंडियंस की जो टीम है। कल भी इंडियन की टीम खेल रही थी, आज भी इंडियन की टीम खेलेगी। कुछ समझे? 40 अभी मैचेस नहीं खेल सकते। 40 डायरेक्ट फाइनल में हमें मिलेगी, डायरेक्ट फाइनल में। इंशाल्लाह और ताला अजीज। कैसे तुम लोग आओ यार, थोड़ा सा एंजॉय करते हैं इस जिंदगी को, छोटी सी जिंदगी को। थोड़ा कुछ पैक करो। हाई प्रायोरिटी CMD run it as administrator. Okay, everything is gettable. ब्रेन रोड रॉयल ये ट्राई करते हैं। गाइस क्या कहते हो, शुड वी ट्राई दिस? छह 600 लोग खेल रहे। बिल अब कहाँ से हो? मैं घर से हूँ। फाइनल कब है? फाइनल आई थिंक तीसरे दिन पे, 2 दिन बाद है, 2 कि 3 दिन बाद, नहीं सॉरी 2 दिन बाद फिर सर्वाइवल स्टेज है, 5 या 4 दिन बाद फाइनल है। यस यस सर। रेंगल खेलो? नहीं मेरे भाई, इस ग्राफिक्स में रेंगल तो बिल्कुल भी नहीं खेल पाऊंगा। गैट्स आओ जरा तुम, क्या हो गया? गैट्स तुम लोग जरा मेरी टीम में आओ, क्रिएट टीम। अपन लोग जरा ये वॉर्म मोड खेलते हैं, बोल रहे बड़ा स्मैक्सी वॉर्म मोड है। पहले आई एम अलोन एट होम और मेरे शराफत देखो कि मैं आपकी स्ट्रीम देख रहा हूँ। क्या बात है रईसी भाई, अच्छी बात है ना यार। मेरे साथ खेलोगे पीएल भाई? क्यों नहीं, आज मैंने टीम कोड दिया, सबके साथ खेलते हैं यार। जो 8 बंदे प्रकट हो गए ना, देखो मैं अपने दोस्तों की रिक्वेस्ट नहीं उठा रहा, मैं अपने दोस्तों की रिक्वेस्ट नहीं उठा रहा।
पील मर्जी अब तेरी, क्या कहूं। देखो 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 देखो, मैंने शहीदी भाई आई एम रियली सॉरी, मैंने थोड़ा सा ऑडियंस के साथ खेलना है। वालेकुम सलाम। शहीदी तुम एक काम करो, टीम कोड से आ जाओ, टीम कोड से अंदर आ जाओ, वरना ये लोग फिर बोलेंगे कि अपने दोस्त को बुलाया, हमारे साथ नहीं खेल रहा। बाइक खोलो। हम लोग जी मैं अस्सलामुअलैकुम अभी पीएल आते भाई, हैं। बिग फैन। वालेकुम सलाम शेरी मोहतरम साहब। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम मादनीकर। पीएल माइक खोल लेना, इधर गेम में भी स्ट्रीम पे बोली जा रहा है। वालेकुम अस्सलाम माप्रो। गाइस 4 बंदे और चाहिए, 4 बंदे जल्दी नादिल हो जाओ ताकि हम ये ब्रांड रोड चीज खेलें। और इज दिस क्या तुम लोग वो खेल रहे हो? हाँ ना, ओ ये वॉम मोड खेल रहे हैं, वॉम मोड। शेदी भाई ओ कैसी हैं पीएल आप? पीएल 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 फैन बोलिंग सबके। मैं ठीक। पता है भाई, तेरे पास इमोट है, पता है। भाई आप तो लिफ्ट ही नहीं कर रहे यार, आई एम रियली सॉरी, बट आपका कमेंट ही नहीं आया अभी तक यार। ये फर्स्ट कमेंट है आपका साइको साहब। बिग आपको फैन, चलो बीबी फैन सुल्ताना फॉलोइंग खतीजा जल्दी ने। आ जाओ भाई, मैं जा रहा हूँ। तुम जा रहे हो? वैसे इनवाइट कर रहे थे पागल आदमी। ओके पीएल, हाँ हाँ, मुझे लगा एंगल खेल रहे हो। रेंगल? तू पागल है, इस टाइम मैं हाँ रेंगल रैंगल खेलूंगा खेलो ना। ये मैचेस के दौरान, क्यों इस और टाइम क्या वो हो भी रहा है? ऐसी ग्राफिक्स में, तुम जरा देखो मेरा पीसी पड़ जाएगा। ओके ओके। साइको मोटू बोलो। ओ मोटू साहब कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम मिस्टर एक्स मैन। 511 82 48 यार, अभी तो मैं ऐड नहीं कर सकता, आई एम रियली सॉरी, रियली सॉरी। ऐशा साहब सलाम पेल भाई, वालेकुम अस्सलाम। ए के तकियां हसन भाई। टुराने। पीएल भाई क्या हाल है? यो पिल हम कोड मेरे भाई, आप कैसे पिल भाई, हो? जी जी। ये जैसे जुनिथन पीएल आईडी आप किससे कौन जानते हो खेल रहा मुझे? होता है? पीएल रात के टाइम मुझे अल्टीमेट जानते रॉयल हो? खेल रहा होता है। यार ये गाइस, ये तो अपने जानने वाले आगे बोल रहे हैं मुझे जानते हो। अब तो लगता है मैं भूल गया। नहीं मोटू साहब, अभी मैं तुम्हारे साथ ये स्ट्रीम पर तो गप्पे शप्पे नहीं वो कर सकता, प्राइवेट में ही करूंगा। जुल्करनैन मोटे, कैसे भूल सकता हूँ यार तेरे को। हेलो, हेलो वो हेलो इस साइड पीएल पे मुझे भी ऐड जानते कर हो? लो। आपको पता नहीं। ये पता नहीं, मेरे इस इलाके में टक्कर मशहूर है। मुझे नहीं जानते यार पिल आप, भाई, ब्रांड जी बंदे को जी। नहीं जानते। ये जोनीथन लेडी से कौन खेल रहा होता है आपकी जोनीथन लेडी से? जोनाथन वाली आईडी से? जी में वो तू मेरा मुझे दोस्त है। जॉनी मैं भाई वाली आईडी से क्या मिस्टर फेनिक्स लाइव तो ऐड है लेकिन वो रिक्वेस्ट ही नहीं उठाता। वो वही आप तो साइड पे जी में खेलते ही तू नहीं मुझे हो, इस वही वाली वाला। से ऐड कर लो। पीएल भाई, मेरी दिली ख्वाहिश है कि आप मेरे से रूम खेलें। यार मैं फट आप जाऊंगा, बिग फैन। यार मैं फट जाऊंगा बिग भाई, बिग भाई मैं फट जाऊंगा ओ पीएल भाई मेरे साथ चुप रहा खेलो। यार, मैं फट ओ जाऊंगा मेरे भाई। ब्रेन रोट रॉयल, मैंने सुना है कि इसमें तुम अपने घर भी बना सकते हो, हर चीज बना सकते हो। हाँ गई, क्या ये बात सच है? क्या दिस बात इज वेरी सच? डे 1 साइन इन, यू गोट। नाउ गो टू द डिजाइन एरिना एंड प्रिपेयर द शूट टू शूट अ ब्रेन रोट। अच्छा, हेलो पीएल भाई, व्हाट इज दिस? ब्रदर। हेलो पीएल हेलो। अबे यार ये क्या है? हेलो। इधर बात सुनो। हाँ हाँ हाँ, अभी अबे इसमें है घर कैसे? बनाना होता है। आप दोनों आप हम एक साथ खेलेंगे। हाँ मुझे गाइड ये तो वो है, ये तो माइनक्राफ्ट की तरह है। अच्छा ये माइनक्राफ्ट की तरह है, व्हाट द हेल।
आ जाओ गाइस, लकड़ियां वो काटते हैं। उधर है, मेरा भाई खेलता रहता है। भैया ना ये आईडी किसकी है, ये आईडी किसकी है? अबे इसका तो यूसी में वो चीज लगेगी। मार गया लेकिन ये नहीं खबर अच्छा होता। क्या लेना है, क्या लेना है? यार नोट सेलेक्ट करने हैं यार, ये नोट जो जा रहे हैं ना इनको पकड़ने। नीचे जाओ यार, किससे मारने? जो पहले मारेगा वो था। अच्छे से मार के पैसा मिलता है। ओके हाँ बस ठीक है। What the hell is this nigga? भाई मेरे पास तो 16 पैसे हो गए, 16,000, 21,000। पीएल भाई ये क्या लगा? यार ये पबजी वाले ने बोले ये बड़ा सही मैप है, ये जरा ट्राई करो, दूसरे ऑडियंस के साथ खेलो। हेलो यो उस्मान के पास हूँ मैं वो डैमेज है उठा रही है। ये ले Berrini Octopusini. Winner winner dai chicken dinner never box box box. यो सामने Scimpanzini medicini. वन Bananino taurino. Winner winner dai chicken dinner never box box box. Ice creamy Jimmy. अभी ये कौन सी भाषा बोल रहे हैं? विनर विनर चिकनर Ice creamy Jimmy. वो फायर आर्म भी खुलते हैं। Winner अपग्रेड क्या क्या ये आए बंदे कहां से? तो भाई यो मेरा भाई मजदूर करेक्शन आप इधर मैंने रूम खेलना है ना? क्या चीज? रूम खेलना है? खेला हुआ भाई। Bro, I can not. हाँ रूम। नहीं नहीं, I can not play room यार, आप जीत गए। Stellina padellina. Gara Mara Rambra Raman Mara Raman. Testosterone. Talpa di ferro. यहाँ पे मुझे कैश कर दिया। Gara Mara Rambra Raman Mara Raman. फिर भाई यहाँ पे कैश हो गया। Scimpanzini medicini. पीएल भाई What is this बवासीर man? ये क्या बवासीर है? हटाओ। वो ब्रेन रॉड्स का नाम बोल रहा है भाई, ये क्या बवासीर है? पबजी वाले मुझे इसमें तो मजा आएगा, ये तो कोई और चीज है। लीव मी अलोन निगर्स। मैं आ रहा था टीम में, किस लाइन में आ गए हो पीएल भाई? पता नहीं ये पबजी वाले हमें किस लाइन में लेके आ गए। बोल रहे बड़ा सही चीज है बट आ हेल ना मैन। भाई ये भी लग गया, वो हेल। वो ब्रेन रॉड्स का नाम ले रहा है। अच्छा फिर कैसे हो? आई एम गुड। अब इस बैटल में क्या चीज है? ऐसा डब्बा दे दिया, क्या बात है? Gara Mara Rambra Raman Mara Raman. Dan Madu Dung Dung Dung. Tak Tung Tung per Kuntung. यार ये क्या थूं थूं कर रहा है पागल? केले को दूसरे साइड पर रखो। हाँ इस केले को दूसरे साइड पर। यार लोगों ने कल बोला कि हमें रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं, इसलिए इस साइड पे कर लो। मैंने बोला ओके चलो अब बढ़िए।
भाई दिमाग खराब हो गया था जब ब्रांड रोड्स की शॉर्ट ट्रेंडिंग पर थी। यार ये इन लोगों ने बनाया क्या है? व्हाट द हेल इज दिस निगर्स? आई वाज थिंकिंग समथिंग क्रिएटेबल। ये लिए कौन सी आइडिया? पता नहीं यार। पहली बात सुन जी, बताओ हंटर साहब। यार पीएमडब्ल्यूसी में कितना टाइम रह गया? बीस मिनट है अभी भी। ओ माय गॉड मैन। गियाट ना खेल, ब्रांड रोड फारिग मूड है। तो ये वैसे ही गेम वाले इतना बोल रहे हैं मैक्सी मूड है, खेलो एंजॉय करो। यार इस पबजी मोबाइल के उसमें स्टार्ट होने में तकरीबन अभी 20 मिनट है। यार ये गुजारा कैसे करेंगे यार? ये टाइम कैसे स्पेंड करेंगे गाइस? कुछ बताओ। यार ये कौन सी आईडी है? फाइल लगाई हुई है क्या भाई? ये तरह की फाइल लगती है पागल? ये फाइल्स चीज है, फाइल नहीं है। मेरे फ्रेंड ने मेरे को गिफ्ट कर रखी है गेम खेल के। क्रोम में जाओ, आगे बताता हूँ क्या बात है। ये जिन अल्फा का ट्रेंड है, पबजी बच्चों को गेम प्रमोट कर रही है, जैसे भी तेरे साथ बच्चे खेल रहे थे। हैं? चला जाओ गाइस, आ जाओ आज ये वाव मूड खेलते हैं। मैंने एक बनाया स्मैक्सी सा। क्रिएटर टीम 6 बंदे, 5 बंदे चाहिए, सही है। 3v3 है, मतलब 6 बंदों में स्टार्ट होगा। तब रूम ही बना लेता हूँ, इससे बढ़िया रूम ही बना लेता हूँ। प्ले टुगेदर, क्रिएटर रूम। आ जाओ गियार्ड्स। फिर मैं किलो आपके साथ आज ये वाव मूड खेलते, तब तक हमारे 20 मिनट गुजर भी जाएंगे। 17 मिनट रह गए। अरे हाय, ये 17 मिनट कितने ज्यादा होते हैं यार। आपको समझ ही नहीं आएगा, ये वो अलग ही लेवल के बच्चे हैं। क्या बात कर रही है मोटे? केओस प्राइम साहब। बिल आज किसको सपोर्ट करोगे? आज अपन लोग देखते हैं यार, जो टीम अच्छा खेलेगी। यार वैसे गोडलाइट में देखना चाहता हूँ, गोडल नहीं है, वो लोग कैसे खेलते हैं आज गेम, क्योंकि वो तो उसमें बहुत तबाही खेल रहे थे बीजीएमआई में। उन लोगों का कोई चांस ही नहीं था। वो कोई 15 के 14 पायदान पे थे, नंबर पे थे, और आखिरी दिन पे वो पूरा टॉप पे आ गया और डोमिनेट कर दिया पूरे टूर्नामेंट को। पर लास्ट मैच में टीएजी वालों ने भी किया था डोमिनेट। मैं देखना चाहता हूँ गोड लाइक कैसा खेलती है यार, और ये लोग वो कर पाएंगे? यार इसका डाउनलोड ही नहीं है गाइस, कोई ऊपर आ जाओ। एक गोड लाइक होगी और एक ई एरिना होगी। ई एरिना वो बेचारों ने बहुत 4Thrive से मार खाई है। अस्सलाम वालेकुम पीएल भाई। वालेकुम अस्सलाम मेरा भाई पाकिस्तान विलेज। आज नोटिफिकेशन नहीं आया
वरना आज भी टॉप पर होता। क्या बात है, खैर अभी भी टॉप पर आ सकते हो। अबे 30 MB रह गया था यार। आई एम रियली सॉरी मैन, आई एम रियली सॉरी मेरे भाई। है नो गया। ओके खैर नेक्स्ट मैच में खिलाओगे। हाँ मे बी, अगर हमारा टूर्नामेंट स्टार्ट ना हो जाए। फाड़ ही दिया यार। ये आइडिया आपने बनाई है? नहीं, ये मेरे फैन ने, एक फैन उसने गिफ्ट करके दी, गिफ्ट किया। और पाक भाई देखते हैं कौन सा अच्छा खेलती है। वैसे अभी कल पाकिस्तान तो टॉप कर गई, फाइनल्स में चले गए और इंडिया भी चली गई। इसके बाद एक और लगाओगे? पता नहीं यार, अगर टूर्नामेंट स्टार्ट नहीं हो और तब तक खत्म हो गया तो देन खामखा लगूंगा। क्या टू फेस रिवील कर दे भाई, पागल है। वो मैं करूंगा यार, डोंट वरी यार्स। They are dead. इंडिया रिपब्लिक, तुम ओजी को क्या कहोगे? ओजी को क्या कहूँगा मैं, अब क्या कहूँ ओजी को? पागल हो, कैसी बातें कर रहे हो? ओजी यार बहुत अच्छा खेले, बहुत अच्छा डोमिनेट किए।
पाकिस्तान ने भी बहुत अच्छा डोमिनेट किया भाई। पाकिस्तान और ओजी तो वन साइडेड ऐसा मान लो लेगी, वन साइडेड नहीं बट मान लो ऐसा लेगी। दोनों भाई दोनों तबाही। दोनों भाई दोनों तबाही। यार वैसे नो डाउट यार ओजी बहुत अच्छा खेली और हमारी टीम की तो भाई बात ही मत करो। नो चिकन डिनर की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ एलिमिनेशन लोबी फाड़ के वो लोग टॉप 1 पे आए। 80 एलिमिनेशन माशाल्लाह यार, मतलब सारे पॉइंट्स एलिमिनेशन के हैं। ओ क्या बात है, समाज सेवा। पीएल भाई द ग्रेट, क्या बात कर रही है मेरा भाई। तुम देखो यार 80 एलिमिनेशन 4Thrives के अकेले पे। और ओजी वाले के कितने पॉइंट्स थे? 95 से कितने थे? हटो। पिल कैसे हो? I'm good मेरा भाई, I'm good, very good, you know। यार ये कैसा केला कैसा लग रहा है गाइस? आलू सही था कि केला सही है? हाँ, मेरे से ज्यादा ही शोर हो रहा था। समाज सेवा। नहीं क्या बात है। नहीं 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 क्या बात है। इस बंदे ने बर्स्ट पहन लिया।
इन लोगों को जोन में आना पड़ेगा। मेरा कितना टट्टी है, मैं नहीं लगा पाया। शी पीएल यू स्पैम मत करो प्लीज, डोंट गाइस स्पैम। नेग्रो I'm big fan। ओ क्या बात है। Bro can I also play with you? Yeah of course। नेक्स्ट रूम शायद लगाऊं अगर ये हमारा टूर्नामेंट स्टार्ट नहीं हुआ तो। Which is only 5 minutes left। 5 मिनट रह गए। यार सिर्फ एक शॉट, हाउ द हेल। भाई एक टीका लगा लो प्लीज। नहीं हेल ना, हेल ना। हाय यो वे मैन वाज गुड ब्रो। यार ये ज्यादा स्पैम मत करो, टाइम आउट मिल जाएगा यार। He's giving him revive, Negro. Oh nice। Leave। Yo I cannot leave यार, सिर्फ 4 मिनट रह गए मेरे भाई। भाई इसके बाद इन्वेंटरी टूर। आर यू सीरियस मेरा भाई? इन्वेंटरी टूर। ये किधर गया यार? नेक्स्ट जीरो। सेंसिटिविटी प्लीज। ओके सेंसिटिविटी देखो। ये नहीं मेरी दुकान ही नहीं देते। जीजी पेल जीजी थैंक यू मेरा भाई। वैसे जीजी इसके बात का ये ले लो मेरी सेंसिटिविटी।
इसे रिवाइव मिल गया और इसमें भी कीड़ा है कि ये पीक देगा। Negro यूआईडी दे दो अपने यार। इस आईडी की तो मुझे याद नहीं है, मैं दे दूंगा जब लोग भी चले जाओ, मुझे याद दिला देना। You are now the proud owner of a Ferrari. वाई यार मैं से मार सकता था। वही एक इंजेक्शन टिका यार। 9 सेकंड का रिवाइव शिट मैंने ऐड नहीं किया। रिवाइव ऑफ 9 सेकंड्स। कितने डीपीआई पर? 1200 डीपीआई। देखते कितना टाइम रह गया PWC को स्टार्ट होने में। वेटिंग फॉर PUBG Mobile Esports। ऑलमोस्ट पहुंच गया। बिल भाई बेस्ट डीपीआई बताओ फॉर बर्स्ट स्प्रे अंडर द 1200। मुझे क्या पता मेरा भाई, आई हैव नो आइडिया। वो अपना लौंडा भी आ गया। गई थी वो मूड किस तरह लग रहा है आप लोग को? वो मूड अच्छे है बट मैं हग रहा हूँ। No chance, Negro, no chance. GTA 5 फर्स्ट प्ले ऑनलाइन पीसी ने यार, अगर वो मैंने लगा लिया ना अपने पीसी में, मेरा पीसी खराब हो गया। वो उसे रिवाइव मिल रहा है। इंजेक्शन मैं वापस नॉक हो गया। नहीं शुक्र है, उसने शुक्र है मेरी तरफ नहीं देखा फर्स्ट। वैसे वो फिर भी अब तो भूल गया वो ये वो मैप मैंने बनाया है। ये मेरा मैप है मेरा भाई, पागल हो। This is my wow map, Nigresh. Are you crazy? Oh hell no. दो बंदे हैं, डैमेज है।
डिस्क्रिप्शन में आईडी पुरानी है, यस पुरानी वाली आईडी है पीएल। यस मुइस पाजी साहब। गया पीएल भाई 1000 प्लेट पर कितने डॉलर बनते हैं? पता नहीं, मेरे अभी तक बने नहीं मेरे भाई। जब बनेंगे तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा, मुझे याद दिलाना। मैं दिखाऊंगा कि मेरे 1000 प्लेट पे कितने बने। वैसे ये बहुत अच्छी चीज़ है, तुम लोग भी स्टार्ट करो। आई विल एडवाइस टू यू गाइस, दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। यस मुइज साहब। यार मेरे से M4 पे स्प्रे बिल्कुल नहीं दिया जाता, या स्कारल और या AUG, दीज आर गेटेबल वेपन्स फॉर मी। हेलो, यहाँ पर एक नूब ऑफलाइन बोल रहा हूँ, नॉक पड़ा। सलाम पीएल भाई। वालेकुम सलाम मेरे भाई, हाउ आर यू? ओ लास्ट बंदा उधर है। मर जा। नाइस। पीएल भाई इस आईडी पर कितना खर्चा किया है? मैंने नहीं किया मेरे। Hey, 1 HP, 1 HP, literally 1 HP. अंधाधुन क्या 12। मैंने कितने की डैमेज दिया? 209। क्या बात है, 209 का डैमेज। इंजेक्शन मारो यार। यस यस यस, बढ़िया। You are now the proud owner of a Ferrari. फायर दे देता हूँ ताकि पर बोले कि कैंप करके नहीं मारा। वो 2 बंदे क्यों उनके? शी कोड शेयर कर दो। कोड ऊपर लिखे हुए देखिए 2856 9010। अबे जोनाथन के भी रिक्वेस्ट उठाले रूम खेलते हैं गाइस, देखते हैं टूर्नामेंट स्टार्ट हो गया कि नहीं।
Let us see. So 2024 was टाइम है. जोन से बाहर क्यों जा रहे थे? Ring roses, puppet of noobs. डिस्क्रिप्शन में अपना वाव का कोड दे दे यार. भी डिस्क्रिप्शन में ओके मैं देता हूँ. गेम ऑफ द ईयर. फिर भी लॉन्ग वीडियो खुद एडिट करते हो? यस जी हाँ. ये बंदर रिवाइव हो चुका है. वालेकुम अस्सलाम के हसनैन भाई. एक और रूम प्लीज पीएल. यार अभी तो नहीं, कल खेलेंगे इंशाल्लाह इसको वापस से. इसका रूम कल खेलेंगे. मैंने जंप नहीं करना था वल्लाह अज़ीम. शी जीजीज प्रा आहे लामेन. गाइस मेरा कर्सर दिख रहा है उसका? ओके चल गाइस, टाइम हो गया अपना EWC PMWC at EWC. लेट्स गो मई.
with Hora and Etsy. In Miramar, we have Hora. सबर ये गेम बंद कर लेते हैं एंड गेम लूप पे हटा देते हैं गाइस सही हो गया रेजोल्यूशन चेंज कर लेते हैं टू 2560 to 1440 एंड उसके बाद इसे अनलॉक करके बड़ा कर देते हैं और इसके ऊपर ये पहन देते हैं और अब लॉक लेट्स गो गाइस 4 minutes are left 4 minutes is left To the outcome. Yeah. So, yep, hopefully through group stage. All right, any final words before we let you go? Just guys, just keep supporting us and we'll keep delivering. And of course, it's our first time at the global stage and we'll try our best. We'll just play our natural game and hopefully we secure. एस पावर की इन्वेंट्री हो रही है इन्वेंट्री बोल इन्वेंट्री इंटरव्यू हो रहा है Pleasure to talk to you. Good luck. Pleasure talking to you. Thank you very much. भाई अगर ये लोग भी फाइनल्स में चले गए ना तो फिर इंडिया की टीम फाइनल में 2 टीमें होगी इंडिया की तरफ से ओरेंगुटेन्स और ये गोड लाइक और हमारी पाकिस्तान की सिर्फ अकेले एक 4Thrive बट इंशाल्लाह डोमिनेट करेगी लुक देखना बस So coming into the group here, into Group B, what's your thoughts about the group, and are there any गाइस क्या ख्याल है गोड लाइक क्या कर पाएगी डोमिनेट कर पाएगी क्या नहीं हाउ आर यू ब्रदर आई एम गुड एके हसन पिल रूम नहीं केलना नेक रियो 我可能很多在 A 组，然后但是其实还是有一些不好的地方，是因为我们有很多跳点冲突，就我们荣都地图、海岛地图、沙漠地图都。 जरा जरा उर्दू का देखते हैं उर्दू का क्या सीन चल रहा है ये मैं अभी आईक्यू से हारा हूँ अच्छा आईक्यू से मैं ये हारा ठीक है मैं वो जीता नहीं देखा शिट ए लूपा गुड टू सी यू हटाओ यार इसने म्यूजिक लगाया उस पे कॉपीराइट आएगा third place Background. and you were the MVP, of course. So do you think that you're going to be able to do a similar performance here at PMWC? What do you think about your performance? Do you think you can take it all? 当然，你们在 PMMI 澳 2 minutes is left यार नहीं यार इंडिया को तुम ये क्लोन इमोजी दिखा रहे हो यार इंडिया को दिखाओ बट टीम्स को मत दिखाओ यू नो टीम अच्छी है खतीजा अब थोड़ी देर में सुल्तान की एंट्री होगी खतीजा सुल्तान की नोकी का व्लॉग उसने अपलोड ही नहीं किया पहले भाई गेम लूप स्टार्ट कर रहा हूँ बट फेल टू स्टार्ट लिखा आ रहा है पता नहीं यार आपकी गेम लूप की फाइल उड़ी होगी गॉड लाइक बहुत अच्छी टीम है गाइस इन लोगों ने BMPS में डोमिनेट किया था BMIS से की क्या है जो अभी इंडिया में हुई थी गॉड लाइक फुल नीचे थी मतलब उनका जीतने का कोई चांस नहीं था और आखिरी दिन पर उन लोगों ने ऐसा कमबैक मारे ना कि सबके होश उड़ा दिए और फिर लास्ट मैच में TAG टीम एपेक्स गेमिंग वालों ने ओए 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 हिस्ट्री बना दी BGMI में उन लोगों ने तकरीबन पता नहीं कितने टीम है कहीं कोई 30 किल्स होंगे उनके डोमिनेट पे डोमिनेट किए जा रहे हैं हर टीम को uh, 40 seconds गैट्स इंस्टॉल भी किया बट नहीं हो रहा फ्रेंड रिक्वेस्ट उठा देना वरना अनसब्सक्राइब कर दूंगा धमकी दे रहे हो कर दो मेरे भाई ये क्या कैसी बात होगी
क्या हो रहा है? गाइस वैसे एक बात है, बीबी सुल्ताना खतीजा ने नहीं है वापस से 50 मेंबरशिप मार दिए थे, और मैं उस टाइम स्ट्रीम पर भी नहीं था, स्ट्रीम उस टाइम स्टार्ट भी नहीं थी, वो मैंने शेड्यूल करके रखी थी और उसने 50 मेंबरशिप मार दिए थे उस टाइम. Look man, this guy is crazy. Look this shit. इसने 50 मजीद मेंबरशिप मार दी थी और उस टाइम स्ट्रीम को स्टार्ट होने में 10 घंटे थे. क्या बात कर रही है यार सुल्ताना खतीजा. This guy is crazy. क्या ही वो है यार 3D एनिमेशन. ये किस डिजाइनर ने वो किया होगा और उसे कितना पैसा मिला होगा CWC के जानिब से, PUBG मोबाइल वालों से. I just need some coffee and a croissant and I'll be set in Paris. As yesterday we saw Group A conclude. We saw 5 teams that are going to be going to the finals and 3 teams ended up getting eliminated. We also have half of the teams that are going to be in survival. Welcome back, ladies and gentlemen, to the PMWC at EWC 26. My name is the 7WG. And for everybody currently watching, don't forget to use your social media. And if you are using your social media, use those hashtags EWC and hashtag EWC26. And while you're at it, check out the EWC Play app and do your predictions, because some predictions have been right. But Max, sadly, some predictions have been wrong. What prediction? I don't know what you're talking about. I've done no predictions this year so far. Lies. But no, no. Unfortunately, I only got one correct prediction, which is Team Flash. No, they did really well going into Group A, so I was very happy about it. But what a surprise. For Group of Death, a lot of underdog teams actually did rise up to the occasion and actually secure their final spot very early on. And especially, again, an Indian team made it, which is... अभी सुल्ताना खतीजा ऑफलाइन है डिस्कॉर्ड पर, एंट्री मारेगा पूरी देर तक. क्या बात कर रही हो तुम? पीसी के साथ पंगे नहीं लेते, ये मैंने डिजाइन किया है. You've got some massive contenders in both groups. So Group A being as hype as it was, I am definitely looking to Group B to be looking at some more hype action coming over the next 2 days. Yeah, we'll definitely be looking at a lot of hype action. But there you go. We have the qualified teams that are going to be continuing on. देखो guys, 4Thrive, Orangutan, Aurora Gaming, Team Flash, Enigma Galaxy, NGX, ये लोग डायरेक्ट फाइनल में. और जो ये है ना, ये सर्वाइवल स्टेज खेलेंगे. कल नहीं, दूसरे दिन ये लोग सर्वाइवल स्टेज खेलेंगे. और सर्वाइवल स्टेज में जो टॉप 6 आएगा, आई थिंक टॉप 6 से 5, वो फाइनल में क्वालिफाई हो जाएगी और बाकी अपने घर जाएंगे. जैसे कल 3 टीम्स गई थी, एक TTG गेमिंग और दूसरा कौन सा था यार, नाम भूली हूँ मैं. जहानत कमजोर है. Absolutely. It's definitely something we need to really think about is, yes, they can dominate. And it's always fun to see, right, a team that can dominate and come in first or second without any wins whatsoever. But with that smash ruling, we are going to be looking at, do they have that win potential when the going gets tough? That's going to be a massive factor at this year's PMWC. It will be a massive factor. Who's going to be able to win it? And will they be winning it via smash rule or not? So far, honestly, I'm hoping that it ends up happening here at PMWC at EWC 26. But something that we were not expecting yesterday was a funny moment for Aurora, because during Rondo, Max, there was a moment. फिलहाल इंडियन टीम फाइनल में, हाँ एक टीम है ओरेंगुटन ओजी, वो फाइनल में.
अब दूसरी टीम देखते हैं गोड लाइक वो भी फाइनल में जा पाती है कि नहीं. Ended up happening right here, where he ended up getting just absolutely splat down by Oh, hey, you know what? That's a good helmet. That's a good advertisement you could put there. But yeah, unfortunately, the cover flare is a little bit random where it's going to be falling. And normally, you want to communicate, guys, steer clear. The cover flare is coming down. I guess he didn't say that at that moment, so that was quite unfortunate. And they did get knocked, but I believe they got back afterwards. But cover flares, they could be your friends or your enemy. Be careful. Yeah, if you were ever wondering if it can knock you, yes, it can knock you. Yes, we have full proof up there. But let's just remind everybody about the prize pool, because there's so much money on the line here. We got a prize pool of $3 million, 1.7 for the finals, 152,000 for survival, and 1.14 million for group stages. I mean, yesterday we saw with 4Thrive being able to get that first place, they ended up with something along the lines of like $70,000, $72,000. $72,000 4Thrives को मिलेंगे, पता है, क्योंकि वो नंबर 1 पे टीम आई है. थॉग मैन, थॉग. नंबर 2 को पता नहीं 40 मिलेगी कि 50 मिलेगी. नंबर 3 को 40 या 30 इस तरह. Yeah, that's right. I mean, for Group A, if for मैचेस कब स्टार्ट हो रहे हैं? अभी थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएंगे. ग्रुप बी भी सिर्फ आज, ग्रुप बी के सिर्फ आज मैचेस हैं. आज होगा और कल होगा. आज और कल ग्रुप बी के मैचेस होंगे. इधर हो रही है उर्दू वाले. वेलकम बैक टू अनदर डे ऑफ द PUBG मोबाइल वर्ल्ड कप 2026 ग्रुप स्टेज. और ग्रुप स्टेज का फाइनली आज के दिन से हमारा ग्रुप बी का स्टेज शुरू होने जा रहा है. कल के दिन पर हमने इवेंचुअली ग्रुप ए को अपने जो मैचेस है वो एंड करते हुए देखा था, और क्या ही शानदार इख्तिताम हमें होता हुआ दिखाई दिया पाकिस्तान की साइड से, जहां टीम 4Thrive टॉप करके टेबल को फाइनल्स के लिए क्वालिफाई करते हुए दिखाई दिया लॉन्ग फॉर द टीम. लेकिन फॉर आज टुडेज एक्शन, टुडे या आज हम लोग मिक्स कर ले इसको, लेकिन आज का जो एक्शन है उसके लिए मेरे साथ हाँ जी आज के एक्शन के लिए हमारे साथ मौजूद है आराधी भाई. सलादीन, वेलकम टू द शो. कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर. मैं बिल्कुल ठीक हूँ. उम्मीद है कि जितने भी लोग यहाँ चैट में मौजूद होंगे वो भी इंजॉय कर रहे होंगे. खुशबाश. 1,99,00,000 lives 4Thrives. ये है मे बी $72,000 कितने होते हैं? बस उतने मिल गए उन्हें. That back-to-back gave them a lot of energy that kept them in a great spot for the overall runnings, because as much as the individual twists. Guys, I think इस EWC के अरबी में भी कमेंट्री है ना? PUBG Mobile PMWC Arabic commentary. हाँ, इनकी अरबी की भी वो है. डॉग, इन लोगों ने कल क्या कहा होगा यार 4Thrives के रिलेटेड. اتوقع الشكل يكون افضل ان شاء الله باذن الله. وما زال لديهم فرصه. ومن ايضا طرف اخر लेट्स सी यहाँ पर इन लोगों ने क्या बोला था 4Thrives के रिलेटेड जब 4Thrives ने यहाँ पर फाड़ा था. شارر كيو لاعب واحد من فريق الفورت. بطولة غير كل شيء بالنسبة لفريق النيجما جالاكسي. يظهر من جديد عملية. अबे यार ये कमेंट्री तो बड़ी सही है. ये सुनते हैं क्या कहते हो गाइस? अरबिक लगाओ, जहाँ अरबिक लगाते हैं. تحرك यार अरबी में हर चीज सुनने का बड़ा मजा आता है. امام فريق النيجما جالاكسي هل سيكون هناك استقبال؟ لكن الفايت بين فريق الار كيو واستقبال على فريق الاكس بروجكت او الاكس فورس ريجكت عفوا. مغادرة للاي جي اي، المغادرة ايضا لفريق الجي اس تي ار والار جي سي، كلهم غادروا. وهاول فريق الولف يتدخل على فريق النيجما جالاكسي. صاب على لاعب ساتان، اسقاط على لورد. كوبس يبقى كعنصر وحيد. يتفاجأ الآن فريق النيجما جالاكسي ب3 إصابات من فريق الولف. سكارفيس يدخل في الوقت المناسب. نتابع الآن سكارفيس يضغط على لاعبي كوبس كآخر وحيد متبقي. وها هو فلك يكشف عن طريق لاعب سكارفيس. أي وضعية يمتلكها هذا الفريق؟ النيجما جالاكسي يبقى بلاعب وحيد بعدما كان مسيطر من ناحية التحرك والتمركز، لكن هذا لم يكن كافي للاستمرار في المباراة.
والآن محاولة التدخل بفريق الفورتي. فورتي يخدم كوبس كعنصر وحيد متبقي بفريق نيجما جالاكسي. تي 24 يحاول عن طريق النيد. تي 24 سيأتي بلعب كالسي. تي 24 هذا هو النيد الجميل. نعم تي 24 يحاول على الأول والثاني، وفلك من جهة أخرى يتدخل. ها هو فلك أمام العبيران. فلك يا ولد يا ولد يا ولد. فايت باكستاني تركي. الله يا فلك، أي انتصار في هذا الفايت يا فلك. تدخل اللاعب كوبس، هذا الولد غير عادي. نعم كوبس هو من يقدم معنا أداء جنوني جنوني جنوني. أنت يا كوبس جنوني. هذا الولد يغير كل شيء. والآن كوبس अबे ये क्या कमेंट्री है? ओह माय गॉड, अनकर रमेशी नहीं, अनकर फलक. अबे ولد يحاول أن ينسحب ويغادر، لكن المغادرة ب5 إقصاءات أو 4 إقصاءات فريق النيجما جالاكسي. الله عليك يا كوبس، أي قوة ضاربة، قوة أمريكية تبين الآن. अबे ये क्या कमेंट्री है मेरे भाई, कसम से. العربية التي غادرت معنا المباراة بمركز 7 و4 إقصاءات، ويكون ويقصي فريق الفور ثرايف بالمركز الثاني. متابعة كسب نقاط من لابار. وزيفة من جهة أخرى يحاول التدخل وكسب نقاط إضافية بالنسبة لفريق الفورتين. يكسب معنا 9 إقصاءات لحد هذه اللحظة. متابعة الآن للاعب سيوس. بوز مكشوف من هذه الناحية، وتشيفوس هو من يتدخل بفريق الاراركيو. ممكن نقطة تذهب إلى فريق الفورتي. محاولة، ولكن سيوس هو من ينهي الجدال ويقصي فريق الفور ثرايف بالمركز. आमीन सुम्मा आमीन. आज ये देखते हैं, मजा आ गया, हमारे दुआ कबूल हो जाएंगे. احنا متعودين الفا 7 شوي يخوفك، فلا نبغى نشوف فرق نحب نركز عليها يعني. طيب نطلع. خواتين हजरात, ओह माय गॉड यार, ये तो बड़ी सही कमेंट्री. आज यही देखते हैं. आज So many dang champions here, right? So आज खेलेगी ये कौन सी टीम है? ETSH, एरिना, TT प्रोजेक्ट, होरा, गॉड लाइक भी खेलेगी. we got some superstars that are coming out as well. And here we were talking about group of death, group of not death. Now we have possibly the group. दिखाई देंगे once again. ये बंद करते हैं यार. अरबी देखते हैं, अरबी तो बड़ी मैक्सी है यार. आमीन आमीन. They all want to survive here. No, that was that cheesy, maybe a little bit. But it was cute. No, but I feel like in terms goosebumps, goosebumps ke goosebumps. 4Thrive's doing really well in their group, winning group A. I think that here, as you just said, Hot Jukes, a team can come out of nowhere and just dominate. God like में Jonathan है नहीं, God like में Jonathan नहीं है. Group, not only in terms of teams to try and qualify, but also to predict. I have no idea who's going to make it. Yeah, and if we're talking about that, we gotta now actually talk about Yangon Galacticos, because they are the defending champions. पेल इनका तो करियर सेट हो जाएगा 40 का. अभी वो तो ऑलरेडी सेट है मेरे भाई. अभी इन लोगों ने ग्लोबल जीता था, उससे पहले नेशनल जीता था. कितने कमाए होंगे, पर खैर किसके पैसों पे ध्यान नहीं देते. जाइलो chance to show up, and they're here not because they ended up. बिल स्ट्रीम में डिले है नहीं, 0 डिले, 0 से भी कम. Last year, right? The broadcast just a few days ago, and I'm going to repeat what I said back then. Is that जो डिले वो YouTube वालों की तरफ से, मैंने डिले कद्दू नहीं रखा. Podiums were quite consistent for these guys, but I want to see them get wins when the circle is shifting away from them. If they do that, I think they're going to do what it needs to try and hopefully qualify to the finals, and after that make it and become the champions here at PMWC 2026. So slight changes in the aggression would be required, but Yangon, of course, they made it before. Maybe they can make it happen again here in good old Paris. Hopefully we see it happen. I mean, yeah, you're right. We haven't really seen much of them when it comes to this year. And we actually casted PMMI together. Yes. And we saw them, you know, in 2026 make something happen on, in my opinion, one of the toughest lobbies we have seen this entire year. And they ended up in 22nd place. So not the performance they wanted, right? But this is their bounce back opportunity. They're coming in as the defending champs. I hope they put in just a little bit of extra work to say, you know what? Let's go back to back, baby. Let's make it happen.
फिर भी नॉर्मल डेज में तो एक वीक में 2 बार लाइव आते हो, पीएमजी में डेली। बहुत नीच आदमी हो भाई। नीच नहीं हो यार, इस चीज़ के लिए मैं बहुत वेट कर रहा था एंड आई लव वॉचिंग दीज स्ट्रीम्स ब्रो। बहुत मज़ा आएगा भाई। फाइनल्स में तो मज़े ही मज़ा होगा। फाइनल में जो होगा ना, ओ माय गॉड, छोड़ो यार, कैन एक्सप्लेन। मैच कब स्टार्ट हो रहा है? मैं खाना नहीं खाया, देखते हुए खाऊंगा। मैच अभी थोड़ी देर में स्टार्ट हो रहा है यार, अपने लिए खाना लाओ। क्या कहते हो गाइस, मैं भी जाके खाना लाऊं? और ये किस कंट्री में हो रहा है? ये पेरिस में हो रहा है, फ्रांस में। Yeah, true. I mean, actually, I want to bring up a topic. I think France है ना, पेरिस फ्रांस में ना। You talked to them after PMGO Season 1, and they said they didn't prep right. And I hope they prep going into this one, because otherwise this is going to look pretty bad going into this lobby and the group of death, as some of you guys call it. Well, don't forget, we actually got a chance to talk about with Rebel, and he did say we ended up prepping. We did a lot more prep this time around. They're feeling like they're ready. I'm hoping that is going to be the case. I know Kalaris was able to catch up with Alpha 7. Let's see what they had to say. Hi, Kalaris here at PMWC for day number 1 of Group B. I've got the man, Revo, here to talk about everything that's going on. First question for you, man. Obviously, it's been a bit of a mixed bag this year, obviously, with PMGO as well as PMMI. Coming into PMWC, though, how are you guys feeling overall? What's it feeling like? We are feeling confident. We did like very good preparation, so we are ready for everything who comes to in our face. So we're gonna face them. We're gonna fight them. And who wants to fight with us, we're gonna fight, and is that. So obviously you guys with Gizao and Obscure, you've had big highs, PMGC, but obviously some kind of lows here and there. How was the overall synergy with the team so far? Because it's kind of still a bit of a fresh roster move as a whole. I think like when it got on PMGO and PMI, our synergy got a bit low because like we lost, and it happens with all the teams. So now we are feeling good. We are confident. Our synergy is really good. And then now I think the team is taking the EWC, so we are ready. Any final thoughts for this as it does go on? Obviously, PMWC is a very important tournament for you guys as a whole. So, did you watch out on the groups yesterday? That's what I kind of want to know. Did you? Hello, bro. What's good, bro? Mr. Daku. ही मैसेज मेरे इतना गंदा तक इग्नोर ही कर दिया यार। आपका मैसेज आया ही नहीं। क्रॉसर हाइड कर, इट्स रोटेटिंग। ओके, मैं हाइड कर लेता हूँ। अब वो सही है गाइस। पहले आज हो रहा टॉप मारेगी यार, लगता तो नहीं है। अल्फा 7 भी है, बट देखते हैं। लेट्स सी व्हाट हैपन। There, Rebel. I want to see a win in the first game if they want to be able to start off strong. They can't mess around. I'm so glad to hear that he's feeling good going into this tournament, because they need to do good, right? They have not hit a single final this year, and it's shocking after such a massive win. But let's go ahead and dive a little bit into their numbers so far. So you look at what they did in PMGO Season 1. It was only 6 matches. They got a 3rd place in that Game 1, but they didn't even crack the top 10 afterwards. भाई सबसे इम्पोर्टेंट मैच दिए ये रोंडो है। रोंडो में अगर आपने 25 पॉइंट्स निकाल लिए ना, आप आगे हो सबसे। फिर किसी का बाप भी आपको नहीं वो कर सकता, यू नो। वेल भाई लेफ्ट वाला लड़का मेरा ओजी जीतेगी या हारेगी यार? ओजी तो फाइनल्स में चली गई। मेरी चैट के आगे स्टार क्यों आ रहा है? ये एक बड़े ही दयालु बंदा था, सुल्ताना खतीजा। उसने कोई 200 मेंबरशिप्स खरीद लिया, आई थिंक सो। तो 200 मेंबरशिप जो गिफ्ट किए हैं वो तुम लोगों को ही गिफ्ट किया। बोल रहे एवरी सब्सक्राइबर्स ऑफ PLY डिजर्व अ मेंबरशिप एंड दिस इज़ अ वेरी गेटिबल थिंग। इसका फ़ायदा ये है कि जो भी मैं पहले अपलोड करूँगा वो तुम लोगों के पास आएगी, जो भी मैं आगे करूँगा वो तुम लोगों को पता चलेगा PLY नेक्स्ट वो क्या करेंगे। एंड क्योंकि मैं वो करूँगा, अनाउंसमेंट डालूंगा मेंबरशिप्स में वाले उसमें। और दूसरी बात कि तुम लोगों के ऊपर ज़्यादा ध्यान में रहेगा, यू नो। जैसे सुपर चैट्स के ऊपर, सुपर चैट्स जब बंदा करते हैं तो उसके ऊपर ध्यान चले जाते हैं, या वो स्क्रीन पे ही पड़ी जाती है। मुझे फिर भी नहीं मिला। आज फाइनल्स है नहीं, आज डे 3 है।
फिर कल डे 4 होगा ग्रुप स्टेजेस का, फिर उसके बाद डे 5 सर्वाइवल स्टेज का होगा, डे 5 के डे 6, और 2 दिन सर्वाइवल चलेगी, फिर उसके बाद फाइनल्स होगा। Some of the other squads, now it's your time to put in your prediction. Alpha 7, top 5, survival, or bottom 3, Hot Jukes? It's got to be top 5, right? It has to be. It's too devastating for their legacy if they don't make it into the finals. So I don't even want to see them in the survival stage. Alpha 7, please do something. Top 5. I'll cry. I will literally cry. He will. I will not like this at all. You will cry? I will. It'll be a single tear of just defeat. And, we will bring you back with us when we see that happen live. All right? अरबी क्या बोल रहे हैं? ممكن لو كملوا بالإنجازات وتحقيق الإنجازات يعني أكثر، كل ما إنه الفريق شاف إنه آمين. Cannot continue to have this kind of performance here throughout this year. When we talk about some of the other squads that are also going to be in this group, we got to talk about none other than S2G. S2G is a squad that we're expecting. यार OG को कोई निकाल दे, बोट है सारे। नहीं मेरे भाई, देखो हेड स्पीच मत दो ना, छोटे बच्चों वाली बात मत करो। जो अच्छा टीम है ना, बड़ी सोच रखो मेरे भाई, जो अच्छी टीम है उसे सपोर्ट करो, क्यों फजूल का हेड देने। फिलहाल के लिए अपन लोग जरा ये कंट्री और ये पॉलिटिक्स साइड पे कर लेते हैं, हिंदू मुस्लिम साइड पे कर लेते हैं। जो टीम है अच्छा खेलती है, बस अच्छा खेल रही है, उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, नो मैटर। WPL, और क्या बात है यार। भाई सुपर चैट कैसे करते हैं? कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। वो देख ऊपर लिंक है ना सुपर चैट का, सुपर चैट हियर नीचे होगा बिल्कुल, या वो है ड्रॉप फ्लेयर, वहां से सुपर चैट करते हैं। ओह माय गॉड, 30 सेकंड, 27, 26, 25, 24 स्टार्ट होने वाला गाइस अपना मैच। अभी रूम लगेगा, प्लेयर्स आएंगे, रूम लगेगा, बट अभी प्लेयर्स की एंट्री तो प्लेयर्स की एंट्री होने वाली है गाइस, प्लेयर्स की एंट्री होने वाली है। मेरी आवाज सही आ रही है ना? मतलब स्ट्रीम की ज्यादा तो नहीं है मेरी आवाज से? Sixteen teams have patiently waited on the sidelines for their chance to shine. Players who are hungry to make a statement on the Gadia City grid. Barney, yesterday 5 teams secured the spot in the final, while 3 of them saw the key crushed. Now, Group B is facing exactly the same challenge. Like, it's 12 games, 2 days, and every game counts. That is right. Well, you know my favorite statement. I know you only get one chance at a first impression. I've also noticed we never even introduced ourselves yet. My name's Barney Banks, and I am your host alongside this fabulous Frenchman, Luti. Thank you for that, Barney. But you know what? The stage looks set. The Group B is ready for battle. So it is time to introduce our team, starting with Sports. Arena. Good like esports. $721 GS Esports. Team Vitality. S2G Esports. OA Esports. And the margins are so tight. Every rotation, every elimination, every point matters. Nous y voici. Group B is locked in and ready to go. Day 3 of the PMWC group stage at EWC 2026 starts right now.
Last year, Yangon Galacticos arrived at PMWC as underdogs. This year, they return as defending champions, with the chance to do something no team has ever done before: win the PUBG Mobile World Cup back-to-back. They have to push now. Alpha 7 getting cut out by Their journey to the title was anything but straightforward. After struggling to find their rhythm in the group stage, Yangon were forced to take the longer route through the survival stage. Their entire tournament came down to a single point. One fewer elimination would have ended their World Cup journey before the grand finals had even begun. For this year, I do believe in my team because we had like a little bit of training time and we put a lot of work to that. We had a lot of discipline, so yeah. Shots back and forth, trades on either side. But after surviving elimination, Yangon looked like a completely different team. Their rotations put them in strong positions. Their utility created openings and their confidence grew with every match. They knew when to fight, when to remain patient, and how to turn their opportunities into chicken dinners. By the end of the second day, Yangon had claimed 4 wins and moved to the top of the leaderboard. On the final day, the pressure continued to build as multiple teams became eligible to win. But Yangon remained composed, trusted their own game, and stayed at the top until the tournament was theirs. What changed between survival stage and grand final is especially our mindset, you know. फलक नहीं है। अबे तुम पागल हो, ये ग्रुप स्टेज 2 है, फलक फाइनल्स में बैठे हुए हैं, उनके फाइनल में होंगे मैचेस, अभी नहीं होंगे। फलक तक आउट, क्या बात है मेरे भाई। फलक का कल होगा? नहीं, कल भी नहीं होगा, फलक फाइनल्स में होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है पीएल भाई? आई एम गुड मेरे भाई। ये लाइव ऑडियंस नहीं इस मैच में है ना मेरे भाई, क्या बात कर रहे हो। वहां पर बैठे हुए सपोर्ट कर रहे, तुम नहीं सुन रहे थे चीखे जब टीम एंटर हो रही थी। Team has ever won the PUBG Mobile World Cup twice. No champion has ever successfully defended the crown. Yangon Galacticos now have the opportunity to become the first. This year the question is no longer whether Yangon can win. It is whether anyone can stop them from doing it again. Can Yangon Galacticos make history and win PMWC back-to-back? Or will a new champion take their crown? New champion, 4Thrive. The stage is set. अरे येड़े, वे हर्ष येड़े, अभी सुना नहीं? गॉड लाइक पता नहीं कौन सी टीम है। गॉड लाइक इंडियन टीम है ना? हाँ ना। Teams, a new group, the return of the champions, and so much talent is right behind us, getting ready. I know, they absolutely are. We have some godlike fans with us right now, which is cool. You can imagine they're going to get pretty loud at some point today as they start to pop off, or we hope they pop off. We got some big names coming in as well. We got Nongshin Redforce, Hyunbin, an absolute monster on that squad. Alpha 7 looking to potentially be just a little bit better, which isn't all that difficult considering the run that they've had this year. But it sounds like they've done a lot of preparation in the meantime, according to Revo. And again, like I said, I think Revo has cemented himself as probably the best shotgun player, close range player in the world. But I think Falak's going to give him a run for his money going forward. Hey, I wouldn't be surprised, dude. The signs of life we were seeing back in the first stage with the way that it was played, Blank, it was incredible. Do you know what's even cooler? It is the ancient charm set from Yangon Galacticos. You can join the PMWC event in-game, redeem those perks for a chance at those outfits, which look fantastic, I might say. The culture, the style, the way it's all tied in, the smiles. Good like की टीम में मैं होता तो मजा आता। One of those. क्या बात है? Saw him in the flesh when they came out yesterday wearing them, boy. What's he? It is he. It is he. I mean, it is a vibe. It's a complete vibe. I love it. I need to get my hands on it in game at some point. But they were rocking it yesterday. God like ने इंडिया में डोमिनेट कर रखा था। अब देखते हैं यहाँ पर EWC इंटरनेशनल में कैसा खेलती है। Let's see guys. क्या ये यहाँ पर भी डोमिनेट कर पाएंगे या सीधा सर्वाइवल या घर जाएंगे? Survival stages में अगर fans on either side, so many teams that are being represented here, friends, family, the coaching staff, and the onlooking fans that want to see once again another rise to success for a squad like Alpha 7 Blank. They've done it before, and what a tantalizing prospect it is having two of our champions in one group. Very different right now when you look at the current landscape for either of them, but still, they both won it.
गेम स्टार्ट हो गया गाइस. लोग स्पॉन आइलैंड पे, प्लेयर स्पॉन आइलैंड पे. अभी जहाज इस तरह निकलेगा तो बस आ जाएगा. Way to the top for them last time, but they made it, and like we've said before, absolute underdogs. But there's been a lot of time, a lot of focus brought into this one, a lot of training in the back end. They've had their filler arc, now they're ready. Imagine ये यहाँ दे यार, मस्त बहुत मुश्किल है क्या दे. ये लोग बहुत अच्छा खेलते हैं. PL भाई इंशाल्लाह 40 will dominate. हाँ इंशाल्लाह, होप सो. फाइनल्स में 40. एक इंडिया की टीम फाइनल्स में और एक हमारी टीम फाइनल में. अब इंडिया की दूसरी टीम है, देखते हैं ये लोग भी फाइनल तक क्वालिफाई कर पाते हैं कि नहीं. It's very true, Blank, and it's starting to get loud in the venue. लोगों की चीखें पीछे देखो यार, लोग ढोल बजा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं. All sorts of different instruments, and they're absolutely giving it. The beat of the drum is going. Paris, are you ready for Rondo? Get loud, because it's first game of Group B. Let's see what these teams can do. We're going straight through the middle of the map here on Rondo, through Bamboo, past Neox. It's going to get hot. It's going to get heavy here on the first map of the day. Just soak it in. For the viewers at home, it's a very... यार अगर गोड लाइक में जोनाथन होता ना मजा अलग आता, बट नहीं है. Goosebumps. It's in the air, Blank, the excitement and anticipation. And this is before we've even seen a single Elim. Running it through right now. Vitality out early, down towards that south side. Tiamba, Eagle sending out towards a recall beacon for the rest of the team to get out and get dirty in the mix of it. TT Project all heading over towards Fengtang actually, so not really going for a split early on the game here. Ida heading over towards Neox. Darkin have proven himself time and time again to be one of those good close range players you want to see in those moments. But before we do kick things off on such a mad map, we do have an interview coming through with Vitality just shortly, but things are already getting a little bit crazy here. Obscure opens up, Alpha 7 for the first elimination of the game. Godlike also going crazy over towards S2G here, Jackie. We started off with some big opening elims straight out the gate, and that's what we want here on a battleground like Rondo. Alpha 7, what have you got in store? They usually display a ton of mechanical talent, and this would be the perfect environment to display that. An enticing head-to-head. Ravo on the move. 30 rounds to play with, looking for the peak up from Tiamba as they start to run. Like to starting में मर रही है, खैर इन्हें recall मिल जाएगा. Starting to get a little bit spicy. Tiamba on the outside at the moment, just looking in. They already have Eagle down towards that south side, like we said, but Jiggle is down there, and Jiggle's a bit of a difficult player to come up against. Luckily, he's on the other side of Tenlong Garden right now, so Eagle is safe for the time being. Tiamba can play a little bit less safely here. ETSH also finding some shots over towards Aura, but they're already on 3 eliminations this game. Recalls already coming through here. That is a damn lot of eliminations to start things off, but we are cooling things down now. Brief moment of respite. Arc there. Trying to get the charge on point. 40 finals detonates with the stereo setup. Hoping for the peek out from necessary to see if you can get an opening follow-up from this. That's already 2 elims on a hot drop that we've seen so far from Alpha 7. What are they going to be leaving with? That's the question. Playing on the inside here, looking to push up over towards necessary now. DP in hand, a good weapon for a 1v2, but pre-fire's coming through the window. It's a good one with the AKM. Will make it happen. Revo again in close range. He's nasty, but it's Loco to come up to the plate now. Grease out inside, will go down. The backup is there, but the backstop does get taken out. Hustler crew causing problems as Tiamba starts to flow on in. Loco got an opportunity to reset himself as well with the meds. Just enough time to be in a good position to continue the fight, but Tiamba, smell the blood in the water. Nade on the wrong side of the banister, it won't connect. Just trying to get these bandages quick so we can reply. Shotgun for the close range engagement on the peak though, not swift enough. Goodbye, Loco. This is cheating. Guns point at you, you're going to go down there. No matter how crazy you are. Revo taking shots over to QZ, who has been an absolute demon in some of these lobbies earlier in the year. He absolutely Oh, Manya ने बंदा नॉक किया. Revo goes down, and
Alpha 7 taking a fair big hit there. They'll immediately reset on this one though. They got themselves 3 eliminations. It's the most anyone's got in the lobby so far. अबे गुड लाइक अच्छे किल रही 3 elimination निकाल लिए बे. Decent nade though coming through from speed on ETSH. Fair bit of damage over towards Aking. We'll have to back off the angle. Sky on the back lines though. Nora. These guys usually dominate over towards Yulin, Jackie. Well, is this going to be a usual result for them? On the periphery right now, setting up like vultures, keeping a good understanding of the landscape to see how these other teams are going to fight amongst themselves before they overcommit to anything too heavy on the investment front. Gold leg ने 3 eliminations निकाल लिए. Nice nades get a bit Alpha of chip 7 ने damage भी off, but they roam ETSH to ने the भी. background, and Sleepy could be caught. That's going to be the connection from NASA. An instant Sleepy, tag yeah. followed through with a flush there straight away. Sleepy's generally like the off-anglist on the side of Aura. Catches players off guard, but ETSH, they've got their eyes wide open at the moment. Circle's got some suspenders on it right now as it does lift heavy over towards the north side of the map. E-Arena is in position. A bit of a split right now. Mania no finish हो गया. Mania from Godlike should be able to get that red इसका back up इसका I again. think recall भी नहीं है. North side of the map. अबे गोल्डन की फाइट दिखाओ ना. 2-2 split, so they've got to play aggressive there. They've got to puff out the chest, ensure Aura that teams versus don't get 10. too comfortable in that region because they're trying to confirm on both sides of the river here, Jackie. हल्का सा damage मिला है. You got to fight Okay, for that's that control. And the battle against Thora is still continuing right here, right now, with Tiamba also taking a piece out of them. Milu on the rock up on the roadside. Good spot down towards the hill. Fine speed. Great reply. Nearly the double up as well, Blank. क्या cover था? Incredible reactions there coming through from Milu, and I mean he's been doing a lot of work right now. Good shots from the sidelines, so that's QZ. ये अगर नेड मारता ना तो ये दोनों हो जाते पता है. एक finish हो जाता ये दूसरा knock हो जाता. Get the res over towards Milu and Fajita. Now left, अभी टीम kind of क्या पागलों की तरह खेल inside रही of है. Yulin, unsure how he wants to play this one out. Eliminations Needs to देखो. get the near over towards QZ, isolate the singular player, knows roughly where he is. That's 12K on the stair line. Now realizes he has to back this one up now. Misses the nade, will head upstairs. Akin gets some shots. It's an easy pick off for QZ. Tiamba up to 6 elims on the game already. We're looking at 1 a minute at the moment. They're starting to rise. Taking pole अभी position तक Tiamba right now into the dominated game. team लग रही है. Meanwhile, Let's you got see the आगे setup क्या here होता with S2G up close and personal. A compound clash between the two. Dopeness, what can you do? SMG on the clear, runs into the pre-fire of Kamikaze, so that's an easy conversion for an elimination point, bringing them down to 3 players in this elaborate fight. Very curious to see how STG does this tournament. There was some luck earlier in the year that gave some fortuitous opportunities to get further into the circuit. But all these players are strong in their own right. They just haven't had those shining moments at the moment. But this clear looks good. I feel like S2G's been putting in a lot of work in the back end at the moment. It's starting to show right now up against Dopeness at least. And even if it was a fairly easy clear, the way they were going about it, the 2-2s, the jumps around the corner, felt coordinated. It's usually what Turkish teams are so good at as well, is that synergy, that coordination, which is why it did feel so out of character for STG in the past to be so unlinked with one another. अगर एक बंदे की 20 आ रही है तो सबकी 20 आएगी. You gotta have the basics down, and the protocols look nice there, at least with the way they played off each other. So hopefully that's a sign of things to come. Squads on the move up towards the zone right now as well, getting themselves into position. Curious, Blank, my how this is going to go for A7. On Rondo is dancing because we can get many eliminations there. We have a good strategy to play on dancing. And we are back in with it. Just a quick interview with Vitality very, very quickly there. See him on screen right now, rotating round, but not yet to get a single elimination on board. Next circle shift now, Jackie, over towards the west-hand side here. Wolves feeling quite good about this, but for Alpha 7, this is a really, really nice opportunity for them. They swing around the western side, they try to cut in early. They're right next to a red beacon as well, so they can hold off other teams that they like, but this is a super hard shift. A lot of teams on that eastern side feeling fairly uncomfortable. GS team now needs to re-rotate back over towards where they just came from on the north side of the map. Like करते हैं कि गेम नहीं कैसे करेगी भाई मोबाइल डिवाइसेस है. So far so good for the excitement factor here. And I'm sure you can hear that as well.
The fans getting amped up as this one starts to kick off. Guizao driving on through. Circle starts to close in. Yangon Galacticos starting down towards test track, now looking to move over towards the rest of the team. Like versus Alpha 7 मिलेगी हमको क्या guys? On that north side, looking towards that high ground, right, to get a little bit more scouting through, but it's feeling more and more likely it's going to drop back down towards the southwest side, sit around Stadium. But again, Stadium's such a big place, so isolated, that cuts out quite a bit of the area. You don't really want to be playing on the northeast side either, Jackie. So you are locked in to this southwest region. We also have the lake down towards that southwest side that sits on the slope downwards. This is awkward terrain. इधर हर चीज होती है ये जहाँ पर वो है ना टूर्नामेंट फैंस वेट होते हैं कोई ढोल बजा रहा होता है कोई बाजे बजा रहा होता है कोई सीटी मार रहा होता है needed from some of our squads to play around it with the way the circle's been developing. और ये रियल टाइम हो रहा है हो रहा होता है ये प्लेयर्स भी सुन रहे होते हैं ये ढोल फैंस की चीखें वगैरह तो तुम सोचो लोग कितना पैनिक होते होंगे. Do they display themselves? They're going to be able to hold themselves nicely. Could be a chance for an engagement forced upon them as well. It's TT and Nonshin that are not too far away. Checking the top side of Stadium there makes sense as well. A lot of times you leave a player up there. It's a cheeky maneuver, get some shots out, but S2G keeping their sides clear right now. I like playing up against this pillar as well. सारे टीम सारे प्लेयर्स जिंदे एक भी अभी तक नहीं मरा और मैप छोटा हो गया बड़ी खतरनाक आतंकवादी होगी बे. So I think that's a good shout from S2G so far. They have a very central position to work with off the back of that. And even so, they can catch players moving through. Godlike's taken a slower approach on the north side. I like it though. I think what they're trying to go for right now is leave that two-man over towards the northern edge, ensure that teams coming through from Nanshuan बाजे की आवाज आ रही है 14 अगस्त से यार ये इसमें हो रही है. I think पता नहीं मेरे को पीछे से आवाज नहीं आ रही क्योंकि मेरा हेडफोन है से पहले आवाज ही नहीं आती बट ये इसमें आ रही है जहाँ तक मैं सुन रहा हूँ ढोल बज रहे बाजा बज रहे ये पीछे फैंस वो कर रहे हैं. Committed actually, even dropping the emergency cover flares here too on S2G. Oh, mate. Well, big shift on it. The investment there in the cover players, like you say, not really going to pay too many dividends for them as it will be taken out of play quite quickly. Thinking about the future rotations that are still yet. अरबी वाला तब लगाएंगे जब ये मैच खत्म हो जाए और फिर ब्रेक आते हैं 5 मिनट के लिए तो अरबी वाला सुनेंगे और खतरनाक मोमेंट्स उसमें सुनेंगे. वो लोग बड़ी एनर्जेटिकली पढ़ते हैं यार बोलते हैं मजा आ जाता है. Line for them to get into a good position. Started it off nicely with the opening 3. Wolf versus S7. It's great out. It's big chip damage, Blank. It's a struggle at the moment. Nade over the top here. One more airburst might do the trick. Goes incredibly low. Has to lob one back to his own. Will scare the entrance a little bit, but it's only about 20% of the HP taken off, and he looks to keep the aggression up. Carrillo gets another first aid kit through, but the vehicle is absolutely stomped out right now. He might be able to get it a little bit of a distance out of there, but Alpha 7 knows that they need to get a move on. Stadium being such a big feature of this next circle as well leaves E-Arena in a really good spot, but how has Tiamba managed to squeak their way in? पहले इस मैच में डिफेंडिंग चैंप्स की टीम का नाम क्या है? ये किधर गई? यंग गैलेक्टिकोस 11 नंबर पे. At least early on the drops. If they get into a devilishly good position with what they've shown, maybe that could be a bit of a dark horse twist in the narrative for them going into game 1 on Rondo. Yes, limping over. Milu opens up over towards Schweppes though. The off-angler for E-Arena. Bit awkward. GS might hear this and want to aggress on it. Again, there's lots of little angles you can play in, but Milu will clean up one. Gets immediately refried by Morban. ETSH finding Carrillo inside the Pagoda. Alpha 7 might just need to abandon on this. I think it's the only play they have. So either give it up or make it work right now on the mechanical side. They are taking pot shots back down, by the way. Alpha 7 versus ETSH versus Wolf. Wolf किधर गई? Alpha 7 now moving Doom. Squeeze out, gets knocked out of the vehicle. Revo not in a good position, leaving Obscure with it all to do now, but NASA Alpha 7 का भी एक जिंदा है. नहीं दो जिंदा Alpha 7 के. ETSH. Revo went down to the blue, he did his job.
Alpha 7 के दो knock है. Through, Skjørt now needs to move up, get a little bit closer. Has to hit the first aid kit soon. Nasser though cleaning out these eliminations. He peaks with that much HP. He's confident. इसके ये player अगर revive हो गया ना. So close to his demise as well, but they're able to at least top themselves back up, get over towards the recall tower if possible. It could be a saving grace for Alpha 7 Blank. पीछे बाजू check करो. Drop down towards that south side now. He has time to do it. Alpha 7 की तो बड़ी energetic audience है. A little bit more difficult. He has to commit now and kind of skidding off the road there. Doesn't feel good. Next circle will hit Stadium. We have not seen one of these in quite a while, and we get to see our first one now here in EWC. GS team playing on the outer edges at the moment. Rihan working off these stairways. It's a good place to play. The back of it is on fun to work against. But Nongshin Red Force, they're up first. JS9 in the hands of XZY. Nice first knock round the backside. Nade in to attempt to convert something from this as well. So many teams breathing down each other's necks here towards the stadium. A fitting finish potentially given where we are right now, Blank. It's on brand, it's on point. Where does it go from here? Tony K with a quick pop of the stims, get himself back up. Surf going to start coming in as well, ushering those teams forward. We saw that recall play from Alpha 7. They do reset the squad. वाले भी आ गए. ये क्या झंझड़ा बन चुका है. यहाँ पर 4 टीमें हैं. Than just one. How far can they take it? Oh my the God. arena lobby leaders right now with the elims 9 under the belt. Tiamba fell आधी earlier. lobby तो यहाँ पर है अकेले में. Coming up swiftly on the Nongshin. That's an opener from Elementrix, but TT get line of sight, and the scrap continues. The first Wolf shut down as the response from E-Arena's good. E-Arena not been slow about it at all. They want to get thick into the action. It's a good nade. E-Arena Not है. quite finding connection though on towards them. But Wolves, they are down on their feet, looking to get the reds off as quickly as possible. Slonic going very, very low. E-Arena looking for these flushes now. Emergency Wolf वाले जाएंगे. Wolf वाले मरेंगे. An emergency at the moment. सारे 1 HP है. Check करो. और players भी उनके knock है. Brother. Trade off there. Slonic low. अभी वो एक बंदा net कर रहा था. Oh no, he's back on it. So some shrapnel on the side. They're looking to clear out space though. They know they have to do this. They were here very early on in the game, but I like how much presence they're showing here. Carrillo again, getting stuck in for Alpha 7, but they take some hefty blows as Sleepy from Mora finally gets his revenge at the start of the game. Last player standing. गए ये भी गए. This fight just doesn't stop either. Wolves up against the arena for so damn long. They finally buckle under the pressure. Wolves out of the running. Alpha 7 once again left with a solo. Ida taking the hit towards that reigning champion. Bar elimination. Look at this, guys. अगर ये लोग इन लोगों ने अगर चिकन निकाल लिया तो 22 points इन्हें वैसे मिल गए. Feels almost like the torch has been passed down from Vampire now to E-Arena. उसने गेट बंद कर दिया था. हाँ. This Thailand team doing incredible work so far. TT Project look to get themselves out of this awkward situation. Alpha 7 still up and kicking now. But down to one player. 70 limbs on the map. It's not bad. But it could be better here. But at least they didn't go out with absolutely nothing. I think for Alpha 7 they'll take that right now. एक चमत्कार हो जो और Alpha 7 चिकना निकाल दे. Head over towards stadium now just because it is fairly locked down on these outer edges. देखने के लिए मिल सकता है हमें guys. तीन टीमें बहुत close एक दूसरे We do have a circle on our hands here. A lot of teams on that eastern side quite pleased with how this has worked out. Stadium वाली जगह पर बन गया circle. Razak, the famous duo. Oh my God. From Indonesia. Now looking to pump up a little bit more damage. Moment. Grabs himself the old master at the moment because he has been next time eliminate 13th elimination added now. A chicken dinner here would be fantastic for the point tallies. Joker ने मार दिया. ऐसे वाले भी eliminate हो गए. 14 kill. Finally arrived. 14 kill ये keep themselves alive in our opening game. 14 eliminations. To at least draw a few more points out from it, but it finally bites the bullet on the wrap back over to stadium. But like you say, E-Arena right now, ruling the roost with some of the fights they've been able to pick off on. Softening up the competition that's been coming their way as well. If they can lock this down, could be in a very tasty position
Already 14 elims. How far Gordon do they versus take 10 it? And what TT. did Godlike do here? Effect with the clap back. Oh, Good for nice. one. Nice nade from S-Power, but FS tries to hold on to it. तीन बंदे An के Gordon intense के encounter between these two sides. Lost players Godlike in down there. to 2, but S-Power making the difference for now. Godlike on our edge is a top position to be in. S2G on their अबे नहीं अटकना नहीं था sideline. A quick roll back on our edge is a top position to be in. S2G on their sideline. A quick roll back. S-Power makes it look easy. ये रीना मैंने मार दिया अबे ये रीना किल पे किल निकाली जा रही है In their tracks. The proactivity from E-Arena has been insane so far. There's not a fight that they have not been unwilling to be a part of. Dominate They की get जा line of रही है sight. You my best duck your god head down because Eria are absolutely farming in this battleground right now. S2G. Heavy hit coming over to Hustler Crew. You got the off angle set up, looking to take pot shots down and save his mates. Kamikaze trapped behind the vehicle. They want to close the gap onto it. S2G going in aggro. Vitality in the distance as well. Kamikaze with a single knock. ये लोग फंस गए HC वाले फंसे हुए Trapped behind the बहुत गंदे ridge. फंसे हुए AZM. You can hear his jammer pack just went out just then. Now needs to get a move on. S2G, they post up. AZM One taking HP, a huge वो मर amount जाएगा, of कौन से damage. मर जाएगा? The blue might just do the trick Yeah. here. We'll take him out. S2G with 9 limit on the game. S2G ने no elimination ये रीना ने 15 elimination भाई ये रीना पूरा one sided जा रही है 15 points for first right now, and the split on the actual minimap is insane with what we've been set up with. The only team that's looked comfortable realistically has been E-Arena from the position they've been in. EA ने तो सबको पहल रखे Giving a single हाँ inch right now, and they have cleared out the entirety of the northwest side. Now they can pretty much STG versus shut most 2T. teams down towards that southern edge. Schweppes opening up STG onto GS पहले once जाएगी, again, and they पहले are जाएगी just STG. swarming on them. S2G sorry. Another goes down in Malik. वो ये रीना ने वहाँ And पर एक E-Arena दूसरा looking टीम for फाड़ दी more and more points. 17 अबे! elims. Can they go further? Can they hit the 20 bomb? Well, finally, it Oh, seems like Joker. someone's willing to Ooh. test them. The Arena taking casualties, but they're looking मर to गया reply back. They रेहान will ने keep दो प्लेयर themselves नॉक alive कर दिए with ये रीना Tourniquet, के it seems, over at the stadium. Mixed Vitality pushing on to S2G. A back and forth fight, a quiet game otherwise for Vitality. They were playing their cards close to their chest, but they've got to fight for control right now. क्या हो गया Flush बच गया over थोड़ा towards सा S2G, all 4 players down potentially. Axel. One nade in hand, it's going to be an important one. Quick spray up towards Hamzy G. Quickly drops back down to his belly. Some more damage. I mean, he's hitting every shot. Just continue with it. ये बंदा बचा कैसे चलो नॉक हो गया नीचे दो प्लेयर्स जिंदे हैं S2G के The numbers dwindling for S2G. Peek round the back of the rock, and Axel hits it swiftly. Let's Goodbye, go. good night. They're down as Vitality starting to get some energy going their way. Meanwhile, Ida taking it straight to the face of the reigning champs. Yangon inside the back of the warehouse. Emerel incredibly low, and Vitality smelling the blood in the water. They can wrap off, play this safe, get into a better position. But can Yangon hold on? Emerel flexing those big muscles here inside the warehouse. Nade starting to go through. Romeo. YG वाले बहुत गंदा Difficult फंसे spot now. Will swing out the side. Can they do Desperation this? play indeed, but doesn't find the swift shot through the smoke here. Rita moves up. So YG Smile वाले goes गंदा down. Ida putting a frown on the faces of Yangon Galacticos. Okay. Last play incredibly low. YG के Romeo is out. अभी ये रीना वाले तो पूरे वन साइडेड लेके जा रहे हैं 18 Down and out in एलिमिनेशंस Rondo. And one by one, we और whittle 4 through प्लेयर्स our जिंदे इनके squads. The only fight we've seen taken to E-Arena left them in a position with 2 players knocked. They reset from it and continue to live on. You asked the question, can they push to 20 elims? They only need 2 more, Black. But can Vitality suck up some of the points as they do advance onto the weakened Ida? Emerel with the detonation on the vehicle. Vitality, you're going to have to recover from this swiftly. What's the decision making? That's a rough one. Rita playing in the side building. Good burnout from और him. अगर ये नॉक Tries हो to गया get अभी back बस inside, इनके लिए but हर the चीज shot of इजी Axel है has been an absolute अभी tear इनके लिए this इजी game है so far. संभालना Good damage सिचुएशन all around. Feels like a lot of the eliminations have been stolen away ईडा from गई him. That is an ये भी नॉक insane pre-spray from Razy. Gets a lot of damage done towards Emerel. He One was not HP. expecting it. Almost jumped into the headshot. The flicks are crazy from Villarones. ये कैसे They're स्ट्राइक playing on पे a चलाई different इसने pace of the game right now, and it does work out for Vitality to What bring the the thunder fuck ये back क्या down to स्ट्राइक पे Ida. थी
Man with the quickest fingers in France. Could not believe what I just saw. And I don't think either could they either, honestly. They witnessed that and it was terrible. Lufa will move up from Dopeness, takes down the first player so far from the arena. They are down to 3. Vitality still sitting pretty with 4. And teams have to push out into them. 2 fights happening back to back. Stereo setups from our teams with Hora taking the hit straight to Vitality. Jiggle the only one keeping his eyes peeled over onto the arena encounter versus Dopeness. They use the opening nade. Schwepp setting up for another one, but on the peak takes a few shots, low on HP. No fear with the steal versus Vitality. Can Dopeness actually defend themselves now? Molotov forces him through the doorway, opening up the lines of sight. Now just one player left alive here. It is Speaker. Last player reh gaya. Bhai arena need to break their way out of here. 19. If they finish this fight, they're up to 22. An unbelievable game. Speaker has to make the crazy play, and there it is. GG's here in a 22 elimination game. The first match of Group B. Arena is bringing it. 32 points हो गए अगर इन लोगों ने चिकन निकाल लिया. Not only are they looking for an opening game win, they're looking to do it by 22 sending a eliminations message. यार. होरा वाले आ गए. Oh my god. ये अभी होगा मुकाबला. They weakened Vitality amongst all this, but they were able to reset. Investing some of their utility, they're still alive with 4. This is gonna be a crazy shit. Hora waiting on the steps on an off-angle setup. Vitality flank मार रही है. Back. No need to overcommit yet. Forced out of the vehicle though, tucks in behind the tree. If you fall to sleepy, it could get very awkward quickly. Crazy, put on the backside of the tree here. Has to drop something. The cover flares. All that's left to keep them alive. E-Arena pushes away over towards the northern edge. They're going to hold ये out चिकन here. अगर E-Arena ने निकाल दिया ना guys. Aura coming in with 4 players. It's going to be hard to clean out this game here. E-Arena though, they are on fire so far. This team is warm, ready to go, no fear. Time to put some more eliminations in the books. Vitality with a quick rescue. Can they make it back? They do. Goodness me. थोड़ा सा बच गया बंदा सामने वाला. It's tense now. एरिन आगे की तरफ निकलने की ट्राई कर रही है. ओह! टॉप की जगह पकड़ ली. No, it's gonna be easy for them. Literally, this is gonna be easy for them. More eliminations here. They have already. कल लोड ने हाइट पकड़ी तो उसने कितने एलिमिनेशन अकेले पे निकाल दिए थे. दूसरा भी जा रहा है. Gonna head up next. No one's taking shots. Getting the high भाई उन्हें ground. पता नहीं है कि कोई ऊपर जा रहा है. The cover flares come down underneath. Oh my god, this is gonna be so easy. Hora वालों को बहुत गंदा सरप्राइज मिलेगा guys. Crazy. Jiggle moved down. Mike seen him though. Crazy shit. Cover flares on the roof. You are wild for it. Jiggle, I don't think he's had any idea. He doesn't This know. idea नहीं है. He doesn't know. Now he knows, Black. Joker. Oh my god, ये रिना वाले निकल गए. निकाल लिया इन लोगों ने चिकन. हाँ निकाल दिया चिकन ही निकल गया. The emergency cover flares drop down. Now Chicken given निकल an गया incredible peaking advantage up against Vitality. A little tank here and there, but इन लोगों के पास जोन भी इन लोगों के पास हाइट भी है या तो हो गया हील बैटल और वाइटलिटी तो वैसे भी मरेगी. They have the perfect setup. Oh my god, ऊपर कवर्स चेक करो. You have entered E-Arena's arena at this point. ये रीना के पास बहुत किल्स आएंगे. वाइटलिटी भी गई. ये ओपन से आएंगे. From the top side, control of the ground floor as well, with Mormon in position. And Vitality know that they are forced to advance eventually. You're exposed either way. The Joker's looking for the peak back towards the warehouses. How far can they take it with the E-Limbs? They look for that deep damage. There's another knock from Schweppes. अबे भाई ये रीना से 4Thrive की तरह खेल रही है. In the bag. Blow up the vehicle. Don't let them go any further on the back of this one. Aura can do nothing but stand by and watch. एक नेट उधर नेट जा सकते हैं. M79 brought out to hopefully bring a train, but the rescue I don't think is coming from Razak next. Joker finds the peak off the back of it. Mormon holding the angle. But they're patient. They're real patient about it. But a nasty headshot Federales saves the day here. Joker has to not be greedy. That tree saves his life in that moment. The sideline just not quite there. Oh, Mormon.
That's the issue, Blank. The duo so heavily focused at the cover flare setup on the roof side. If they leave themselves exposed, can Mormon steal this away from the ground, draw the crosshair off, and guarantee himself something to play with? Stage 9 now. It gets spicy. Center dots towards this loot crate. E-Arena may need to drop down at some point, but they'll see what they can get done in the meantime. Vitality playing it slow, but will have to move. Even more emergency cover flares इनके ऊपर नेट्स करने चाहिए Vitality के ऊपर. Vitality बहुत गंदा पंच से वहाँ पर हो रहा गया. Oh, shot down again. Joker gets the peek out. Federales cowering close towards the limited cover he's got, but no fear. Sees an opportunity and swings round. Federales with a hold. Some clean connections in the past couple minutes here. They see this, they know the knocks are going through. They look to send nade, they feel like they're in range. It's on target, a bit of chip damage. Razy has to back out. One more nade at the top. It looks on target there, it's unreal from up on high. They are dropping bombs down towards Aura. This is insane work. Sky goes down. More eliminations available here. Might take them to 29, Jackie. One away from the big 30. And there's only a single member of the squad left to try and fight against them. The dream of E-Arena on Rondo, as they've been living their movie, Elim after Elim. And Sleepy is all that remains between them and an unbelievable game one. Schweppes looking down upon their arena, their stadium. What a ridiculous result here for E-Arena. It has been sublime from start to finish. The circle begins to close. We're getting right into those final moments. Just one more minute before it all finishes. Coming down to the bitter end. Sleepy looking up towards the sky, but will he be on point when they're forced to drop? It's all a matter of timing. Oh, Two crosshairs going to be swiftly on his angle. Can he withstand the duo drop? That's one with the shot. All over the last man as Schweppes tries to withstand the peak. Sleepy on the double up. Quick shots, can't quite connect it. Down. The zone's nibbling away at him. Black next to that finish it. Thailand makes a stand here at EWC. They've got half the points as some teams earned yesterday at the end of it all in one match. इसका अरबी वर्जन देखेंगे. Oh my god, इन लोगों ने तो 40 points ले गए. I think 40 points. It wasn't even a single pop-up play. It was the entire team working in unison from start to finish. The mechanics, the movement, and the setups. They read the game perfectly. Yo, hit the calls made on a first game of all things. पहले गेम में इन लोगों ने 40 points लिए. One sided पूरा, one sided. कोई टीम अभी इन्हें रीच ही नहीं कर सकती. कोई टीम इनकी तरफ जा ही नहीं सकता. I mean, it's just disbelief on players' faces. God like it. I don't think anyone looks all that sad about it. They're shocked. That's all it is, Blank. कोई अभी ने कोई टच ही नहीं कर सकता. आ जाओ गाइस, इसका जरा अरबी वर्जन देखते हैं. इसका जरा अरबी वर्जन देखते हैं, इसका बड़ा मजा आएगा वल्लाह. My favorite drop spot on Rondo is dancing because इधर आओ. यहाँ पर कोई 3 फाइट्स हमें बड़े खतरनाक यो किस्म के मिले हैं. उसका अरबी جوائز لهذا خيارا موفقا. هو قالت كلمة جميلة يمكن ما يعني لفتت انتباهنا هذا اللاعب اللي حصل مجموعة جيدة من الأوقات. الفا 7 फाइट तो हुई नहीं थी. बस से जरा म्यूट कर लेते हैं. ये फाइट हुई नहीं थी. यहाँ पर एक फाइट हुई थी बड़ी यो किस्म की. आई थिंक इनकी हुई थी ना, स्टूजी और इनकी. हाँ, एक केरी. लेट्स सी. बड़ी यो किस्म की फाइट हुई थी यहाँ पर. गॉड लाइक की. ये रीना की. ومن ثم استقبال بإقصاء طور في هذه اللحظات
واكثر لهذه التشكيله. وكاريلو سقط اولا، هذا الامبراطور في هذه اللحظات امام التشكيله اللي يارينا من بعيد، والاكس سبيد وفاهيتا والقوه المصريه المتحركه بلحظات هي الاهم في عمر المباراه، ولكنه بسكيور من بعيد. اتى رصاصته وصلت من هنالك عن طريق الريفو. عين القط بدا بمحاوله الضغط، يصل سريعا الفا 7. هل يقرر الهجوم؟ كويسو يصل من زاويه اخرى، درايف باي والاروع يتساقطون. المصريين يتساقطون امام تشكيله الفا 7. زاويه اخرى، ناصر عليه العوده مجددا امام لوب سكيور. هيفو ساقط على ارضيه الميدان، كويسو ساقط على ارضيه الميدان، وناصر ناصر الان من اجل ان ينصر تشكيله اتش. النهايه سجلت 6 من الاقصاء، ولكنه بسكيور والسامبا تبقى الى اللحظه الاخيره وتؤمن على 7. अभी एक ये फाइट होगी, अभी दूसरी यो किस्म की फाइट तबर वो गॉड लाइक की थी. अच्छी यहाँ की भी फाइट سيستمر في هذه المباراة. مباراة جمالية، مباراة روعة، مباراة بداية نتكلم عن افتتاحية ولا أروع ستكون معنا ومعكم في روندو مع البدايات هذه. لنذهب سوية شوف النهاية وين ممكن معتز بالاستديوم، يعني اللي ما يشتري يتفرج. يعني اللي ما يشتري يتفرج تعال تابع النهاية. وصلت هنا في الاستاد من أجل الجمهور ومن أجل التواجد والحضور في هذه المباراة. وسط الزون نتابع الجي اس، هذا الفريق الذي ينتظر، هذه الاسود التي تنتظر الصقور. وبرزان تنطلق الان بماليك من اجل ان يملك المباراة من البدايات على شمشون. اسقاط لاول، هجوم على ثون، تحدي عن طريق التايلانديين. الفيلة ايضا من زاوية اخرى يقدمون واحدة من لوحات الفن بتسعة اقصاءات. جوكر شوابيكس ورعب التايلانديين مبدعين في روندو. التايلاندي مبدع في روندو. تكلم عن تريني كي وكذلك مورمان، جوكر وشوابيكس. هذه التشكيلة ماليك نتكلم عن خسارة ماسكو، لكن 3 اسيست. भाई अंडरस्टैंडिंग 0%, جوز بامز 100%. إلى المعركة الحقيقية، إلى الميدان الحقيقي، إلى الاستاديوم في أراضي روندو. تكلم عن وولفز، عن هذه التشكيلة، عن دخول، عن كم من فريق، كم من رقم، كم من لاعب. عدوا معي إن كنت جيد عزيزي المتابع، عد معي كم من رقم، كم من لاعب سيدخل إلى المكان. شوابيكس إسقاط أول يسجل على من؟ سونيك. أولى الإسقاطات لمنتريكس من مكان آخر. الذئاب يحاولون الانقضاض على المكان، يحاولون الدخول على التايلاندي، على الفيلة. اسقاط يسجل، خسارة، نقطة تكتب باسم مورمان. قبل قليل إشعار أتى سجل، والآن محاولات وولفز، محاولة الدخول بهذه اللحظات. شوابيكس من مكان آخر، نيد باستقبال آخر على من؟ على تشكيلة وولفز، على الذئاب. الله هذه بإذنه، هذه مو بعينه، لا مو بعينه، ما شافه بعينه، بإذنه بالسمع بالصوت. أخذ برصاصات ومن ثم سبام داخل سموك لأخذ الإسقاط. وولفز الأول سقط أرضا، الثاني يحاول 1 ل1 ودفاع وتحصين حصن أكبر، وكانما هي قلعة. هذا مو استاديوم، هي قلعة وسيتنتهي فيها المعركة بهذا المكان. هورا وولفز وعادوا من جديد ب4. قلعة تايلاندية معتز، قلعة تايلاندية وضغط عراقي، ولا يتصل الله على القوة التايلاندية التي تصل على النهاية التي سجلت. خطف نقطتين للعراق 2، التايلانديين 3 ب3 ب3. الان احسن ولا انت احسن؟ لا بانكوك احسن ولا بوكت احسن؟ هذه دي فرق من بعيد وخرج بحصة الاسد. صامد و12 اقصاء، الاكثر عددا الى حد هذه اللحظه. 12 اقصاء وصل اليه بالفعل التايلندي، ولا يزال صامد ولا يزال. خلاص هذه قلعته، يحاول الدفاع، يعني حصن متينه ستكون حاضره في المكان. زرق الى مكان اخر، اوبسكيور هادئ. اكو ذبح الليج. هذه اللحظات لمصلحة هذا الفريق، لا يهادن ابدا كل التحديات. رصاصات هنالك من اجل الاقصاء 14، من اجل النهاية على اوبسكيور اللي يحافظ، لكن الرصاصات تاتي. والجوكر لبس القناع وتحرك على تشكيلة الفا 7. الاقصاء الرابع، لكن بعد 10 فاضات كثيرة. هذا طبعتي وتشجيعي كل هؤلاء اللاعبين، وبالليف انتظر دوره. هذا
هذا لوفا للحظات لكن لا هدوء بهذا المكان. بيسقط أول برد اعتبار آخر يأتي واحدة بواحدة. جاد لايك الهنود هنا من مكان آخر. يس باور يحاول النهاية على ما تبقى من هذه الآمال على من سقط أرضا قبل قليل. أي تبقى وحيدا هو الوحيد في هذه الأراضي. محاولات هنا محاولة. الله 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 على لقطة. الله على جوكر. الله على المبدع. على التايلندي. على الفيل. على إيرينا في هذا المكان. عد معي يدين هسه ما تكفي. 5 و5 وحط يدك 5 كمان. 15 إقصاء يسجل لإيرينا في هذا المكان. مبدعين خرافيين. لننتقل إلى من؟ إلى اسطنبول. دقوا 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 الطبول في هذا المكان. هيا يا رجال العنبول دقوا الطبول في روندو من أجل أفعال تصول وتجول على أرضية المباراة. تحرك عن طريق سولكي العجوز. عاد إلى زمانه يواصل. والكاميكازي من بعيد على الاتش سي. جيمسون سقط. لوكو سقط. وعزم أمام لوست من بعيد. تتزايد الإسقاطات ويستمر التركي بتقديم جنون المباراة. لوست من بعيد أتى بالأولى أتى من أجل تركيا. أتى والكامي كامي كامي كاميكازي تركي قوي. نصر لا نضول. अबे ये कौन सी कमेंट्री है मेरे भाई? خرج الحسابات. النحلة تحاول ولكن 20 يا لا مهندسين في هذه اللحظة يحاولون يقولها مبروك. واعية ريزي تكلم على الاقساط على تواجده معنا وتحضر لفيتاليتي ريزي لفيدراليس اكسل इनका कितना पहुंच गया? अच्छे लोग तो अभी गुफ्तगू करेंगे. كذلك نتكلم عن ريزك الرباعية تتواجد معنا في هذه اللحظة. فرصة لكتابة رقم قياسي عالمي جدا. الرقم القياسي كان مسجل باسم تشكيلة فامباير ب 24 إقصاء. الآن 23 إقصاء. مبروك. وهنالك 7 لاعبين بأرضية الميدان. قولها مبروك. خليك تقولها مبروك من هذه اللحظة على اللحظات اللي نتكلم بها أيضا على أن يعتلي القمة، على أن يصعد إلى القمة، على أن يستقبل في هذه اللحظات فيدراليس. لكن بالمقابل هناك أيضا لاعبين ينتظرون. شوف اللحظات، شوف الجمالية اللي نشهدها أيضا ونتكلم. هذا مهندسين مو لاعبين ببجي، مهندسين في هذه اللحظة يحاولون استقبال جوكر سيسجل مع مساعدة شوابيك. سيسجل. أسقط الأول. يكسل يسقط أرضا. والثاني من الممكن لما لا. فالمهمة صعبة الآن عليك يا ريزك. صعبة أن تتعدى وأن تخطي خطوة إلى الأمام. لا خطوة إلى الأمام مع وجود شوابيكس. ألغام حقل ألغام صنعه زرعه جوكر وجده شوابيكس. الله اسقاط سجل على ريزك والثاني سيكتب لاعبين. الله يا فيدراليس. فيتاليتي لسعة أخرى من جديد تأتي لفرصة لتقدم لخطوة أخرى إلى الأمام، إلى الاستاديوم، إلى الميدان. ميداني ما بين التايلندي، ما بين الفيلا وما بين النيبال، ما بين هورا. ينتقل يترقب. هذا وكأنما ماسك كاميرا خلاص يترقب من بعيد. شاهد عيان فيدراليس والثنائية الموجودة هنا. شاهد عيان يراقب من بعيد. الثنائية يتواجدون إلى مكان آخر، إلى التايلندي، إلى هورا، إلى ما أراه أنا وما أترقبه. رقم قياسي عالمي جديد أصبح قريب الآن بعد لحظات من تشكيلة إي أرينا اللي ممكن أن ينهون على الهورا وممكن أن ينهون على الفيتاليتي والمحاولات. شوف أعطى فرصة لكسب كفرات أكثر. وصل شوابيكس اللي طاحت بريزي. النهاية على فيدراليس وكذلك المحاولات من بعيد. الجوكر أمن على نقطتك. أمن على تاريخك من باريس، من بانكوك إلى باريس. كانت الرحلة طويلة جدا ولكن من أجل هدف واحد، من أجل كتابة تاريخ مختلف ورقم قياسي لأجمل شوابيكس. نيد بس هذه النيد وصلت بس من أجل كتابة الأرقام أكثر. جوكر يسجل. نيد أخرى تصل. قياسي تايلندي عالمي جديد. كتب الرقم الجديد وضربوا بيد من حديد ولا يزالوا يضربون. أي متعة يقدمون شوابيكس يا أرينا. 27 يا لها من مباراة، من متعة يقدمها هذا الفريق. إي أرينا فيلا أتوا ليحطموا الأرقام، ليكتبوا التاريخ في هذه البطولة. EWC نتكلم عن ببجي موبايل، عن شوابيكس. شوف المتعة
والتشيكن دينر سيحصل بلاعبين. شوابكس كان حاضر بالاثنين، شوابكس كان مع البامباير حاضر مع الاثنين. هذا رجل التاريخ، رجل الارقام، رجل الكلام والابداع. 28 اصبحت اقرب، والتوقيت في تايلاند سيتغير، والاسماء في تايلاند كانت كلها فامباير، اليوم كلها اي ارينا، كلها تايلاند ارينا، كلها بانكوك ارينا، كلها الفيلة والخفافيش ونمور تايلاند كلها تتحرك من اجل هدف واحد. اقفز وطير، واحدة من اللقطات، اقفز وطير. 28 اقصى ماذا تنتظر؟ خلصت، انتهت. حاول ان يقطع الجناحات سليبي. عدالة المباراة ان ينتصرون، عدالة المباراة ان يكملون، عدالة الفن ان يكونون. كانوا التايلانديين كانوا بالامس ويكونون اليوم، والتاريخ يكتب في بانكوك الى باريس. يستحقون. ये तो और भी तो बड़ी स्मैक से वो है. चलो स्टार्ट हो गया हमारा दूसरा मैच. That was just the E-Arena show. Yeah, that's the crazy bit about it though, right? Oh my god. मैं कुछ समझ आ रहा है कि नहीं भाई? समझ 0%, अंडरस्टैंडिंग 0%, goosebumps 100%. I mean. Now it's a little bit more of a known territory. Maybe this is where things do return slightly to normality, but hey, we'll see if that energy carries on for E-Arena. We will. We'll have to see. I mean, for E-Arena, I wouldn't really care if they even went down to 16th here, personally. I mean, it'd be fine. You can rest for the day, boys. You've done 3 games in one. But we are heading down towards the south side. This is a hilarious score line that you can see. 39 points. What the fuck, man? One-sided जा रही है लोंडे तो. 29 elimination. Oh my god, goal. Fine down. यार वैसे इनकी ऑडियंस बड़ी वो है यार. ये जो ई एरिना के फैंस है ना, पीछे उधर बैठे हुए हैं, जहाँ पर ये मैचेस खेले जा रहे हैं, वो तो बहुत भाई ढोल मूल बाजे शाज हर चीज बजा रहे हैं, चीखे मीखे, इवन माइक में भी आ रही है. और टॉप प्लेयर्स वही ई एरिना के. No elimination, 8 elimination, 6 elimination. A lot of good stuff. डैमेज भी इनका है 1650 का डैमेज, 60 का डैमेज, 1228, 1184. क्या बात है यार. Here now on E-Arena 2. And it was a lot of success. उन्होंने तो इंडिया के 11 पॉइंट्स ले लिए एक मैच में. Trying to target them. Maybe that's going to make you go, you know what? A lot of fans out there. Brother. What is this? What is this? All right, boys. Let's just qualify 2 games. We're good to go. Let's do it. They get themselves a really, really nice start here. As do Alpha 7 though. To be fair, true. Over towards the north side of Everest. Wolves could probably swing in behind there if they wanted to. Might go past ruins, something like that. But wait and see. A lot of water in this one. We are cutting out a lot of space early on. Remember, there's this huge amount of fields down towards that south side, so rotating through there. Some of the sight lines might get sketchy for some of our squads. Yeah, might change things a little bit with how they play this one, like you say, cutting out a fair amount of that landmass with the first shift on the circle. For some of the teams further back as well, down to, of course, the Sivnovska military base. Pernix? नहीं खराब आ रही है, बहुत खराब आ रही है. Get yourself involved for that Naruto event as you can run in stylish, much like Hora are here, taking the fight straight to Godlike, and that's an opening pick. No follow-up, you are isolated to 1-free Elin. Godlike down to a tree. That's a tough thing. That is a tough thing about this kind of playing path is you're not always. मैंने कहा भाई not coming slow, सांस तक नहीं ले रहे भाई वो लोग. Have to go for a split here, but Aura, they're an aggressive team. They're going to see you dropping on the shoots, know that you're a single over towards that position and punish you for it. I don't feel too bad about what happened to Godlike there in terms of the fact that it's difficult, right? If you're Godlike, that kind of Pakistani team finals में. And Aura just tried to take it where they could, playing a little bit faster loose there, honestly. See if Godlike can bounce back with just the 3, certainly possible. अबे ये डोल चेक किया तुमने, what the hell? It's early doors. So no need to hit panic stations just yet. Obviously does make your life a little bit harder on this one to be able to come out swinging into the first more consistent battleground we're going to see today for these squads. But a trio can still get work done. Move up from Hora off the back of it as well, clearing some distance swiftly as they wrap over towards the zone. A7 and E-Arena have taken some nice distance towards each other as well, splitting off to either side of the coastline so they can loot happily. No reason to stick into each other there.
Tiamba. Again, these guys started really well on the last match on Mondo. They looked good. Yeah. Happy to see them play the way they did. They are rotating to Mill to Power though, which is somewhat concerning. I don't know if they got the memo that the circle's on the northwest side. But loot is a necessity. And again, with that kind of playing path, you are sort of strapped for options. They'll pick this one up. Head on out later on. There's a lot of teams just not moving either. They know that moving into the circle is going to be tough as it is. Oh my god, yaar. Half expecting starting में Magia को पेल दिया गया. Situate themselves in Yasnaya. Likely will make a northern rotate past shooting range. Try and play off the back of that. Potentially over towards box compound. Take a stop off there. Bit of an earlier split off as well from S. यार ये पीछे जो ढोल बाजे बज रहे हैं इनसे ये प्लेयर कितने वो होते होंगे इरिटेट होते होंगे मोटिवेट नहीं मोटिवेट होते होंगे मोटिवेट कैसे चीखे वो जालिम तू अगर 1000 बंदों के सामने तू स्पीच दे तू तो काम जाए तेरी सुसु निकल जाए और ये प्लेयर्स तो गेम खेल रहे हैं परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं छोड़ भैंस की टांग में पेपर ना दे पाऊं अगर सर मेरे पीछे खड़ा हो सर पे खड़ा हो Swarmed by tons of teams. Oh my But I think the god game plan overall and the अबे यार कीड़ा काटता है अचानक सर पे आके खड़े हो जाता है 14 अगस्त उधर मनाया जा रहा है You can be pretty happy about that. It is early doors though. We've got plenty more to watch as the day goes on. Dopeness on the south तो side. जब भी पाकिस्तान की टीम होती 14 अगस्त के टाइम पे क्या होता है वहाँ पे ओनली 14 अगस्त के टाइम पाकिस्तान की टीम एंटिंग होगी The arena though they have उस टाइम फाइनल्स होंगे डेट की आज rallying around it at the moment. 8 अगस्त है 9 अगस्त Hospital फिर 10-11 अगस्त को South George Apartments 12-13 अगस्त तक हो गया आई थिंक 14 तक हो गया आई डोंट नो Closer and closer as our teams race to get themselves back into a better position inside of the zone and set up on this one. Non-Shin Red Force starting to make their entry with a trio from Godlike on a bit of a split of either side. S2G going right down through the middle. This is the bridge crossing from Vitality as well. No one there to attempt to deflect it, so it's a free pathway out from Sivnovka to get back to the mainland. They'll be happy with that. लगाई होती है साउंड के लिए और हेडफोन्स लगाई होती है बैर के साउंड रोकने के लिए अच्छा वालेकुम अस्सलाम anything because on this type of circle you genuinely don't really need to worry about making this bridge crossing. I think it would be almost a bad play from someone to try and camp this, but it's always a possibility, right? So they're going to take it slow in the meantime. Axel's already made it halfway up the bridge and probably is going to try and get a little bit further up here. Federalis holding behind, but they have nothing to worry about. They really don't. I'm genuinely putting that down to nerves here from Team Vitality. But you need speed on this type of circle. You need to get into position. There's not a lot of spaces to take up here. Yeah, you can't afford to have the paralysis by analysis of wasting too much time on that one. In the midst of all this, we did see that opening knock that came out from Schweppes, now converted into a full elim there. That was Wolves that got slightly too close to the territory of the arena up by the compound. Rest of the team did get out though, Blank, doubled back round hospital side and got themselves into safety at least for now. Yeah, I mean, for E-Arena, they did pull off South George Apartments here. They tried to regroup this, which is making a lot of sense to me because typically on this kind of circle, you are going to get a lot of movement over towards the western side of Everest. This area here, real big funnel for a lot of teams. E-Arena knows they're going to be going against a lot of squads. I think for them, they're coming off such a big fight here, but they do need to dial things back. Understand that they can't take too many fights. Third parties going to be galore around this area too. Your GS team over towards that eastern side now. Alpha 7 back to basics in North George. Well, how that zone was off the back of the plane path we had coming into this one, at least you gifted a fair amount of safety when it not had to really run too many risks early doors. Over the course of the past 8 minutes, just been able to loot and sit pretty, getting a lay of the land established. Fairly late rotates for some of our squads as well. Obviously, we saw Tiamba fragment off, go over to Milton. They're still going to be coming in late onto this one. And Vitality now entering the safety of the zone. It's about to move. हाँ, Godlike के ना 7वें नंबर पे. Okay, E-Arena
I mean, last game they played Stadium. They were there for quite a while, right? So we can say that there was some circle look in that sense, but there was nothing lucky with the way they put down every other squad inside the lobby. Here they are getting magnetized again. But again, it depends how they want to finish this out. We have seen plenty of teams in Group A get good circles and not really be able to convert off the back of it. Now, I really do want to see another big game in the arena here. Would be fantastic to watch happen. और इंडिया की दो ओजी भी है इंडिया It's going to be difficult. I'm not going to hold my breath for it. पीएल तू क्यों नहीं गया आपका घर है जो चला At least if you needed a warm up to prove that you're able to play some very aggressive PUBG Mobile today, that was the game for it. सर में दर्द करके रखा है इनको जाके The circle luck will only go so far. It's more what you do with the position you've presented. तेल की शीशी बेचकर आता हूँ Again, a little bit of a gift they'll be happy with, but more to be done. Potentially a bit of an encounter on the later rotate from our squads outside of the zone, with Godlike getting eyesight back over as well. So room there that things get a little bit panicky. The Hustler crew. Yunbin, even from distance, that's on Shin Red Force getting stuck into the action. ये रीना वाले भाई बस कर रहे हैं सीन कर रहे हैं दो किल निकाल दिए as well as Arena at the same time. I think there was not a huge amount of expectations here for Hustler crew. Go into groups. So I do think that Hustler crew going down again for 2 players. Not sitting on a great average at the moment. They've only got 1 point over these 2 matches so far. Sat down there with TT Project. So I think that Nongshim Red Force want to turn that around. This is a team that is very, very good. Have just come off some big success here, Jackie, this year. Would love to go straight towards the finals. At the very least, qualify through to the next stage of the tournament. But goodness me, if we took a look at the map right now, you can see just how jam-packed it is. We have 1 team playing on Everest in Aura. Everyone else, like I said, is in that horrible tunneled zone on the western side. A few compounds around that area. S2G currently playing that one that sits underneath Everest on the southwest side. That's a good spot to be working with. You can clear a lot of space from there too. The fact that we still have about, what would you say, 30% water in this one, with Everest being a big chunk of it. No one really wants to move into apartments just yet. It's a nasty circle. So these are the 2 back-to-back games where it is mechanically and tactically difficult. And seeing how much of a backup plan you've got in terms of adapting with these circles, like you're saying, it's not a regular game. Definitely It's not problem solving. No, it's not, but... Oh, no. In the world is that? Makes you want to be sick, honestly. That is gross. E-Arena is probably going to regroup over towards that western side, potentially. Circle E-Arena का क्या साथ दे रही है पिछले मैच में भी और अभी भी. Circle like this, you've got to shore up your front at the moment. Make sure you drop the riot shield because teams are going to be coming at you thick and fast in the near future. Alpha 7 sit all the way over towards the peninsula on that northwest side. Oh, this is disgusting, mate. Yeah, this is absolutely unbelievable. All of our squads still alive and kicking. Such limited space. Such little ground left to play with on the mainland. A few shots being taken out from various squad. Wolves continue to be fought by E-Arena. TT getting stuck in versus Vitality as well. This is the fight that's going on right here, right now. Neos down behind the back of the vehicle. Effect and Zerich, they just got to call it quits. Yeah, TT Project just going to move on this one. You got to get further in towards the circle here. Difficult push out for Yangon Galactico, stuck on radio tower right now, held out by Nongshim Red Force, who are looking to be the arbiters of the fields. Playing Scarecrow right now versus all the crows coming up from that south side. And once again, already it's E-Arena that have been able to find themselves free elims with the picks they've secured. You got that wrap over the top of the bridge from George Paul as well that's coming in from ETSH as they're going to look to try and chase and get into a good stable position inside of the zone. Ravo with a pickup. That's one back over on at 72, 1 GS. Ada now, moving forward. Adrenaline shot in at stage 3. I mean, it's got to be done. The boys got 2 of them. You need a lot of adrenaline to make your way through these next circles. It is pain that is ahead for a lot of these teams. How well can they weather it?
Can they grit their teeth and hang on? Aura, Jiggle looking forward now. Yangon Galacticos. Dropping some shots down towards them. Oh my god. AUG in hand. Pichhle Aura, champion versus Hora. still doing well, honestly, over towards this eastern side. You see the sheepish nature of it. I'm going to replay here of the fight. Nah. Oh, cinematic on that one. That was the follow-up pick onto Ethis. Neons was already down in the back line. Good defense there to make it very uncomfortable for TT that left as a duo. Emerel from Ida with a shot onto Godlike as well. I will say though, man, this is a really cool push that we kind of missed from S2G. They were playing down towards the southwest side, remember. This is a hell of a swing they've been able to make over towards the north side of the circle. We're getting our next one coming in through now. How much water is going to be in play? Oh. What is this? What are we doing? We got to stop. It just keeps going. Less and less land mass left as the squads have to fight and step over each other to have any sort of stable ground within this one. Vitality have had some uncomfortable fights to force into a stable location on the zone. They did shut down a good majority of Tian, but leaving them with just the solo. The play zone taking out Tiamba there just feels poetic right now because it is the circle that's doing the brunt of the damage right now. We're playing all the way over towards the western fin of Georgia Pole. These players have to tread water going forward. This is getting messy, it's getting nasty. Alpha 7 set themselves up beautifully on this game. Necessary making the necessary maneuver, hanging out all the way towards the beachhead. What the fuck, ये क्या हो गया? अभी इतने सही सिचुएशन में. Trying to stay alive as they bounce either side of the vehicle. Bit of chip damage. Hoping he can clutch on to his life at this point. ETSH, after completing their long rotate, do run into Yangon once again. And for the reigning champions, it's not been a great start to the tournament so far. Back-to-back blows taken their way. Vitality trying to win out versus Nonshin Red Force. Yangon left with just Smile, but that might turn into a frown if they can get the angle onto him. Cleaning up with the elims, make it uncomfortable for ETSH at least, but this goes both ways. Good Molly, good Molly. Ensures he can try and get the res up upstairs, but he's got to be quick about this. Fajita with a nade, looks to post it up. It's looking decent, tries to get the airburst on the balcony, I like that. But Smile dropped off the top side. He's doing good work here. A grin appearing on his mouth. Now look for one more, steps up and gets it! A 1v4 essentially for Smile. Insane stuff. Now S2G holding up against GS. Kamikaze with the move. Does he expect the backstab? Running around with a vision, closes the gap. A good reposition from Lost, finds the angle through the window and gets that one on target. Vitality on the move up around the coast as well. Rita trying to keep Razy in the backline, pinned on the coast. S2G still fighting whilst Hora find that angle onto Smile. Yangon lived for a little bit longer, but it finally comes to an end. Vitality की out elimination है. Looking out, I mean, Aura had a decent game last time around. भाई 1v4 मार दिया. Finish हो गया. There's a good setup on this northeast side. We've got to go further though. S2G's in the way. Again, S2G, blinder or rotate from them, look fantastic. Don't know how they managed to snake their way over towards that spot, but it has absolutely paid dividends now. Dopeness caught on the outside. Eagle is still alive, by the way. No clue how. He is just healing it out. Sleepy though. AWM, nasty headshot, brings the pain. It's Joker that we've got here running from tree to tree, looking for a backstab onto the Dopeness group. Was their setup. Smokes down, trying to give themselves some soft cover to play off the back of the engine of the vehicle there. The Turney K giving the game away. Lufa with a push. Ooh, it gets a bit awkward on the run-up though. I mean, Joker's low. If you can at least close the gap, maybe a single knock to give them an edge to work with. Panic stations coming in. Turney K Eagles. Eagle with the steal. Hello. That's from distance. I mean, they had to quickly turn around there. He was causing big problems for them. Speaker will find out with Barrel. The arena though, they have to regroup on this. They were trying to play guard and artifact, pull out all the weeds on the south side, but not meant to be here. But now they have an angle. What's been causing them problems, where they've been feeling that ache.
We've got the gamble played from Rita that he set up quite some time ago, going for the wide berth over towards the zone. What's this? Oh, क्या मारे बे? Just disgusting. I mean, no one's having a good time right now. We are going out into open zone. The wall's been pretty much giving themselves a lovely little lifeline here as they get towards the top 8, and necessary might just make it through. Grab himself a loot crate off the back of it as well. See how far this lone wolf can go. It's a similar situation, man. This is what Ida wanted to go for, with Rita just swimming, going for his wrap on his own. Razy looked to try and close the distance, going for a similar sort of play. Had a bit of a vehicle there down towards the coast to at least get some distance on it. Alpha 7, meanwhile, they've been sitting and waiting for a fight to come to them just on the ridge of the zone. Vitality have been farming up the elims as well, a bit of a sleeper team with how they've just third-partied onto a lot of these fights, but E-Arena finally, their eyes light up and they want to go for the wrap straight in. This is what E-Arena had to do. It's a miracle, by the way, that they get 3 players over towards this location, because Vitality, they were waiting for that moment, waiting for them to leave the building. Luckily, they rotate over towards the roadside, get a tiny bit of sideline cover. And now they set Alpha 7 up in front of them. This is a great position to guard off against. S2G also similarly tries to make a good rotate, but it's Alpha 7 still taking those shots. E-Arena similarly also sending bullets their way. Aura makes a move in the midst of all the chaos on the northern coast. S2G down and out as they take shots from all sides, leaving them in a brutal position. Brittle though is Alpha 7 with a peek up towards the top. Good shots in. Vitality finally take the fight back over to E-Arena. They wanted to catch them on the egress. Instead, they'll push. Nades over the top flank. Good chip damage. Mormon low, but they bailed, going over towards the coast. Necessary sat there with a Mini 14. It's a wild push-up from E-Arena. They're just looking for anything. Necessary will find Schweppes though, that's big, and E-Arena now left as one. Joker, the Bears of our line, finally goes down. E-Arena is out. They tried to scatter Vitality, forcing them out the way. A 12 elim game here on Emerel is pretty damn good, honestly, from where they were playing. 14 ने बस dominate कर दिया मेरे भाई. Alpha 7 and Vitality. 2 organizations that will look to take blow for blow right here and prove how much they can do. Paranoia about Necessary deep back on the tip of the map that's still in play. Rita still going for his lengthy rotate to give himself a chance to steal away points from the other remaining squads, and Hora keeping it calm on the coast. Rita's got the scuba gear on right now, looking to make landfall eventually. Razy, Vinade up front, surprise Carrillo sidestep that one. It is scary though, having Razy and Razak together here. M79 pulled out to try and create a little bit of cover in front of them, but don't know if he's got any more shells left in that bad boy. Revo moves up though, nade in hand, pulls out his a little bit later than Vitality. We've got to keep on that fight though. Axel opens up towards Revo. We want to see what's going on. Carrillo's down, Obscure might be next, leaving them just one player now. Guizel on top side, gets absolutely obliterated, and Vitality full of life with his endgame. They line them up and knock them down. Vivi Vitality as they're coming alive in France. 15 elims on the game so far. And for Alpha 7, it all falls onto the solo. What can you do? That's a big net to open it. Goodbye, Razy. As Alpha 7 are looking to clap straight back and give as good as they get, but Hora see them. Backstab shots from No Fear. Guizel's got limited time though, the Blues starting to move in, rolling towards him. It's an inexorable approach, terrifying. Razy likely not to get back up, but Necessary still alive here. Like we said, the lone wolf living his dream as he gets up towards the top 4. Hora might have been pipped at the post last game, but they're going for the chicken. Oh, another nade. What happened? Oh my god. Oh, it's brutal, but try as he might to hold on. He got the 2 clean knocks with the utility, but it's not enough in the full fight. But this has left a broken and bruised Vitality with only a solo, forced to get their players up. Hora cleared out Wolves. Potentially a full regroup here though for Vitality. Where do they go? They can play this ridge line. Swings up slightly, but what do you do after that? The game Vitality might just slow down, and Aura 400, 556. They are ready for a spray down, but Vitality
I don't know how good the util's looking, how good the supplies are looking on side. And versus a full 4-man all spread out along the coast, this is an impossible push for them to make. Horror might have got second last time, but they are looking for the first. Horror, they've got Sleepy, the sniper with a hell of a scope, waiting for the opportunity to leave them broke on the peak over the top of the ridge. If Vitality come into this, it's going to be on the back foot, an uphill battle, down a man, draining their resources, like you say, whilst Horror are just waiting to strike. All quiets down now. They need an opener, but the smokes are out. Vitality's got no choice but to try and isolate here. Luckily, they've got vehicles. They set up now. They put the pedal to the metal. Now looking to move over towards Horror's side. Swinging out into the open. Ray Z wraps round. Sky also similarly layering on the backside here. Can't quite find the shots here. Sleepy digging those bullets into the backside of the vehicle, creating those dents, but Circle moves away now. How do they approach this? It feels like an impossible game here for Vitality. Such an open field. No cover, no chance. The only play that they can make is to take the fight straight to their face as they drive back behind the steering wheel and go in swift. Sleepy with a warning shot. The buggy comes by. Close quarters engagement as Vitality looks to hold on. No fear down. More damage done. Sky replies onto one. It's all on a solo of Axel as he looks to cook his way through them. Sleepy up front pulls out the AUG, the AWM doing nothing for him. Axel, last left alive here, an incredible player on 9 elims this game. It's a hard fight though, a 1 versus 2. Molotov goes long, he runs straight into it though, keeps backing off into the nades. It might be lights out for Axel soon. Oh, that's the nade to do it as Horror, with a hefty bombardment on the beach. They lay claim to the second chicken dinner and light up Paris once again. Horror though, it was instantaneous response, the speed at which they came through. Oh my days. Getting pulled out in the second game. Good for him. Beautiful action there. Horror locked in, understanding their rotation, the best opportunity to try and force Wolves out of that solo position that was giving them so much control. To third party into the back, controlled everything blank, and left Vitality effectively in an open island. No cover, no chance. Axel gave it his best, but an upward battle. I mean, Axel, he was spinning like crazy that game. Smoke on the tires because 9 elims almost made it more than that. What a wild performance for him, not only on that game, but last game too, when they were trying to make their way up towards the stadium. It is funny that we had Aura, Vitality in that top 3 on Rondo, now in the top 3 again here over on Erangel. We seem to have a couple of favourites here, Jackie. Yeah, already establishing some of our lobby leaders potentially. And not even one of those statements where we'd say at the end of day 1, at the end of game 1, now going into game 2, like you say, mate, it's just becoming very crystal with a lot of the squads that are looking incredible out here. This is the final moment replay as well. You can see back how rough it was for Axel. It's so unfortunate, because the Molotov went far. I think he could have stayed playing against that vehicle. He makes the right call in the moment because that Molotov's placed correctly. He can't play up front, but it's a very, very hard decision to make in the moment. But again, it did feel like Vitality could have made that work. And I wasn't joking when I said that felt like an impossible game. It really was. They had no cover. They had no pathway. Oh, right. They went for the call and nearly did it. Ridiculous. Let's get down on the stage and find out from themselves. All right, well, yes, thank you very much. I'm Claris down here on the stage. I am with the arena, though, and it's Joker here to talk about that first game, honestly, because that might have been the best game in PUBG Mobile history. I want to get your thoughts about that game, what was going on in the team comms, the feeling after that first game. เราอยากมาพูดเรื่องเกมแรกนะครับตอนนั้นเราเก็บไก่ไปได้เลยนะตั้งแต่เกมแรกเลยเรามองว่ามันเป็นเกมที่แบบว่าดีที่สุดตั้งแต่เราเคยเล่นกันเลยมาเลยนะฮะอยากถามว่าตอนนั้นเรารู้สึกยังไงบ้างครับแล้วก็ทีมคอมแล้วก็บรรยากาศในทีมมันเป็นยังไงบ้างครับจริงๆจังหวะนั้นเราไม่ได้คิดอะไรเลยครับแค่ไล่ตีในเมืองของเราให้หมดแล้วก็ไม่คิดว่าจะไก่คิวเยอะขนาดนั้นครับ Alright, to be honest, we didn't expect that we're gonna get that much kill, and like so what we planned during that time is just like keep getting into the city and like hit everything
hit like one by one into the city at a time. Okay, so very quickly here as well, after that performance, after looking fantastic already here, any words for the fans, everybody kind of watching for E-Arena out at home as well, because I'm sure a lot of people are very excited about that first performance. หลังจากที่ทุกคนได้ดูเกมแรกแล้วนะเชื่อว่าหลายๆคนตอนนี้กำลังจับตามองทีมของเราอยู่นะฮะอยากถามว่าเรามีอะไรฝากถึงพวกเขาบ้างครับ ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ยายหน้าเลยครับหนึ่งเดียวจากไทยครับก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดครับ Alright, to everyone, please supporting us. We are the E-Arena, the only one and the only hope of Thailand. All right, well, thank you very much. Making PMWC history here. E-Arena looking awesome. गाइस क्या कहते हो अरबिक वर्जन लगाए E-Arena hitting us with the only hope for Thailand. Well, that hope is looking pretty damn good. And you know who else is looking good? Hora! 40 टॉप As they were, हाँ 40 तो टॉप है वो तो फाइनल्स में है अभी तो ये ग्रुप स्टेजेस ग्रुप बी है पहले इनने तेनही माका दे आए ओजी कहाँ पर है ओजी फाइनल्स में फाइनल्स Big fan of snipers. Sleepy, the bolt action. Oh my god, Nepal is here to play. Oh, it's so nice to see it. So nice to see it at a global tournament. Finally, it's been years, it feels like. He's still one of the only players that uses a bolty. We need to have that more often, and maybe after this game, other players will go, maybe it's not such a bad idea to have an absolute god at sniping on your team, because oh my. That is exactly what you want to see. You're getting those long-range shots coming on through. Really, really good stuff. But Hora in general really able to circumnavigate a whole lot of traffic coming on through there, Max. You know, over on that beach side, one of the only plays they could have made, and it worked really, really well. Max, remind me which bolt he was using? The Orm! The Arm. All right, Lace. Thank you for joining us. Glad to have you here. I want you to give me the best Arm sound possible. Keep in mind, Sniper is going to sound amazing. The best sound. It's every shot is like pure ASMR. Yeah. Boom. Baby. All right, Max. You next. Okay, on me. On him. Put it on him. On me. Get the camera on this, man. Boom. Mama's back. Nep, you're next. All right, get ready. That sounded Arm sound. AWM. Come on. What? Did you sneeze? That was a sneeze. What? Okay, for everybody that has been making videos of PMWC at EWC 26, there you go. There's the challenge. Go back to that last game, have Sleepy, and replace those sounds and see which one was the best. Make sure you guys share it on social media using the hashtag EWC and hashtag EWC26. But talking about teams that were able to perform so good, we have to talk about Vitality, Lace. Man, guys, I'm back. आज उधर अरबिक का लगाते हैं अरबी क्या बोलते हैं इसके रिलेटेड भाई बड़ी क्योटिक सीन हुआ यार क्योटिकल बिल में भाई अच्छा आपने तो कहा था 40 फाइनल में है फिर ओजी कैसे फाइनल में हो गए अभी 5 टीमें फाइनल में है अरोरा ओजी 40 फ्लैश और नेगमा गैलेक्सी ये 5 फाइनल्स में पहले मेरी एक्सपी नहीं बढ़ रही आपकी एक्सपी नहीं बढ़ रही 75 पेट किए यार गंदी बात है गाइस आजा लगाते हैं अपन लोग अरबिक लेट्स सी लास्ट में क्योटिक हुआ था ना الارقام
إلى مكان آخر يغادر. يتبقى ريتا यहाँ पर नहीं था कियोस ओ ये था ثاني 1 मिनट गाइस मुझे 1 मिनट देना चाहिए 1 मिनट रुको Yes, I'm back. I brought my coffee. Nigesh. पर पीएल भाई एमुलेटर का क्या करूं? एमुलेटर पे तेल लगा के फाड़ दो उसको. आ जाओ गाइस. जरा अरेबिक हो जाए. Let's go. Where is my coffee? Sexy coffee. هذه الثالثة في هذه اللحظات وسيغادر ما بعد ذلك اللاعب الأخير من تشكيلة تيامبو. الله 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 على الفراعنة، على الاستقبال، على الروعة، على سبيد، على المبدع، على السايكل قبل أيام. عاد لكن صعبة تحقيق الأمجاد، ليست بسهلة. فأنت في لوبي عالمي، في مكان عالمي يا إتش. عبقرينو للقائد لفايتا من مكان، والثنائية تتبقى عبقرينو. الحريق والنيران أمام أعينك يا عبقرينو. فايتا يحاول بنيد الآن ما بعد الاستقبال. فايتا يحاول بالفعل، أخذ من خلاله يقصى. وخلي بالك من اليمين وخلي بالك من اليسار، فالضرب والنار من كل مكان، والحصار كل الحصار من اسماعيل. من هنا أبطال النسخة السابقة يضربون وينهون على اتش، وهنا محاولين فايت عربي قبل قليل وفايت عربي الآن. أعطيتهم المساحة ولكن لوست أنا على كل المساحات والمسافات. كاميكازي أمنا من هنالك الهامسي على تشكيلة الجي اس. معتز كان يتحدث الدقيقة 15 وأنا كنت أدري ليش يقول لي تابع. الدقيقة 15 كنا بال50، الدقيقة 17 كم يا معتز؟ 28 لاعب متواجدين على أرضية الميدان. نعم بالفعل هذا ما يحدث، هذا ما يحصل نتيجة لضغط الزون. مو الفرق رادت تشتبك، مو الفرق رادت تتعارك. الزون أجبر الجميع على أن يكون بهذا الشكل وبهذا التحدي. الفا 7 من بعيد على سكاي، والفيتاليتي على جيمسون، والنهاية أيضا تسجل من أكثر من زاوية والذهاب اتجاه المياه. अच्छा यहाँ पर नाम थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, थोड़ा आगे करते हैं क्योटिक सीन लाते हैं. مبدعون 50. Sultana Khatija, you are back with another 50 membership. Bibi Sultana Khatija, you again come back with a 50 membership, Nigesh. Oh my god, man. Oh my god. Another 50 memberships. आज के दिन तो तूने 100 membership कर दिया मेरा प्रा. What the hell, man? Bibi Sultana Khatija, W Sultan, man. क्या बात है सुल्तान साहब. 50 अनदर मेंबरशिप भाई मुझे नहीं मिली.
क्या बात है। हाँ यार ये पता नहीं रैंडमली मिलता है मेरे सब्सक्राइबर्स को। इसने 50 किया तो रैंडमली मिली मेरे सब्सक्राइबर में से। ओ माय गॉड सुल्ताना खतीजा भाई क्या बात है। डब्ल्यू सुल्तान लेट्स गो मैन। مهمة صعبة على ما اعتقد فالمهمة الان यहाँ पर فيتاليتي वो कर रही है डोमिनेट और यहाँ पर सुल्तान سيستغل التكن الوصيف هو فيتاليتي بعد تحصيل 11 اقصاء. यहाँ पर रोटेशन आएगा ابو الليف يحاول खबर ये भी नहीं है। سكيور كان له الفا 7 نتكلم عن 4 لاعبين يقومون بعملية دفاع ولا أروع. وبسكيور على الأول، مورمان من بعيد يتدخل على الاس جي، محاولات من مورمان على الكاميكاز، هنا محاولات كذلك من مكان آخر من الطرف الآخر من الخلف اس جي. هنا خسارة لوس كذلك، ونتكلم عن خسارة ومغادرة الفريق ككل بالكامل، والرصاصات ممن فيتاليتي يتدخل يصل 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 وصل هنا من اي ارينا وكذلك فيتاليتي قبل قليل اخذوها منكم للمباراة. ما خلوكم تدخلوا، ما خلوكم توصلوا الى انحاء الى اطراف الى ما حول الزون. يا فيتاليتي حاول ان تلسع تشكيلة اي ارينا. شوابيكس يسقط ارضا هو للاعبين، محاولات على لوفا سيسقط، سينهى عليه. فالدفاع البرازيلي قوي، الدفاع البرازيلي عالمي في هذه المباراة. 4 اقصاءات. فيتاليتي ينهي على من؟ على جوكر، على الاي ارينا، على من انهى عليه قبل قليل في المباراة الاولى. روندو اي ارينا سجل على فيتاليتي، وبهذه المباراة فيتاليتي ينهي على امال لاعبين اي ارينا على المتصدرين. اما الامال الان لدى ريزاك، لدى التشكيلة هنا لفيتاليتي لهورا والفا 7 ايدا بلاعب وولفي لاعب، لكن 4 لاعبين ل4 لاعبين. هورا والفا 7 برباعيات. هدوء سيكون، هدوء سيحضر في اللحظات هذه في هذه المباراة. هدوء سيكون ويحضر في هذه اللحظات. هورا يتواجد في المنتصف، نسري بمكان جيد جدا في داخل البحر، يبحث عن نقاط من خلال هذه المباراة. المباراة الثانية أعزائي المتابعين في أرنجل الأولى لنا ولكم تقدم الفا 7 ممكن أن يكون مضر. تقدم الفا 7 لفك الضغط ممكن أن يضره، لا ينفعه بشكل كبير. زوايا يمنى ممكن أن تتدخل، محاولات بنيادات الآن في هذه اللحظات. 50 other memberships. ओ ये अबे मेरा फोन हैंग हो गया। ओ माय गॉड मैन। डब्ल्यू सुल्तान क्या बात है। सुल्ताना खतीजा 50 मोर मेंबरशिप। यार मेरा भाई तुसी क्या हो। अबे पागल हो गया ये मेंबरशिप पे मेंबरशिप्स में। दाक्षी डब्ल्यू यार लव यू सुल्तान भाई। هل الالفا 7 خلينا لove you मेरे भाई। بينا عد يكسل باستقبال ريفو. اول الاقصاءات للبرازيلي. دبل اقصاءات على الكناري. الكناري بلا لون بلا طعم بلا رائحة على ارضية ايرانجل. ليتس جو مي. وهذا ما تحدثنا به. صعبة صعبة على البرازيلي، صعبة ليست بسهلة. فك الضغط غير سهل. यार इस अरबी कमेंट्री का अलग ही लेवल का मजा है। इसमें कितना टाइम रह गया? वे ये तो मैच स्टार्ट हो गया। What the fuck? Let's see if they can withstand the full fronting their way as S-Power opens it back up onto Loco. Oh, close quarters engagement with the shotgun. Good pre-fire on the angle. Vinny gets it done. It's not the start they wanted. Hustler crew has been dropping on teams all day today. Do not care one bit. तेरे सारे सब्सक्राइबर्स को मेंबरशिप मिली। क्या बात है यार सुल्ताना खतीजा। ओ एक हसनैन को भी मिल गया। लव यू सुल्तान ब्रो। क्या बात है यार, क्या शब्द है। तेरे हर सब्सक्राइबर को मिलेगी मेंबरशिप। लव यू मेरे भाई सुल्तान भाई। लव यू मैन। Such a great guy. The dropping isn't bad. It's bad because it's bad now because people keep dropping on top of them all the time. It's so tough to work with. So Godlike might need to make a change in that category. Also, I mean, Hustler crew has just been all over the place. It's hard to predict for Godlike. Big Godlike तो फट गई। What the hell man? That change of drop, that change of pace. Almost बस फट गई। लास्ट प्लेयर रह गया Godlike का। ये कैसे खेल रही है? अगर ऐसा चलता रहे तो एलिमिनेट हो जाएगी। ये तो सीधा घर चली जाएगी। You take some damage, but a
जानी ये यूट्यूब पर है, वो किसी को देते हैं, इट्स रैंडम। इट्स रैंडम। भाई इस मैच की आवाज कम करो, आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके। Ninetales Fury Orc skin looks fantastic. 2 versions of it too. Love to see it. Get angry. Feel that rage from the Ninetales in game. Because it looks awesome as well. It's fantastic. Chat में active होने का कोई फायदा We'll नहीं। see what Mania can get done here. For God, like it's just been an unfortunate start for them. I mean, Circle starting off with closing. Aura dropping on them into Hustler Crew, I do feel bad for them. I really do. We'll see if they can pick things back up going in towards our 4th. यार ये होरा के पॉइंट्स चेक करो, विटैलिटी के चेक करो, ई एरिना के चेक करो, कितना डिफरेंस यार टॉप 4 वालों से इनका। A quick replay. I mean, Aspar did hold it down. He's only got micro Uzi to work with. It's hard. It's hard in those situations. A vest as well, level 1 helmet. The fact that he held on as long as he did was pretty insane, to be honest, as well. Yeah, it could have been way worse. Ooh, Axel again. Still putting on those numbers. Goodness What me. a nice guy, Sultan. Love you, man. This for Vitality, there was a lot of talk You around just Razy gifted and Razak, 150 and I've seen memberships these guys today, you know? before. They look great. This is But craziness. The fact that Axel is just like, guys, we gotta get through here. We gotta get into the आज तक में भी किसी बंदे ने एक यूट्यूबर को नहीं किया होगा इतना मेंबरशिप जितना तूने कर दिया। कल 147 और आज 150, 307 मेंबरशिप्स मैन। लव यू मेरे भाई सुल्तान। W. Everyone taking a few casualties here, and there, Wolves only getting away with a duo off the back of things, and S2G falling very early here. For S2G, they stepped a little bit too close to Vitality's home ground down towards his south side. They want to clear out more space. You got Razak as well as Federales holding over towards the bridge, whilst Razy as well as Axel currently holding down C block. They have a lot of area to work with. They are feeling unbelievably confident. Hustler Crew still causing problems for people around the map. Oh, swing out. Close quarters connections onto the Hustler Crew. Oh, why? That's your single knock to play with. Looking for more as they do take the fight back over to Vinny. Nade in the hand for the close quarters shutdown. It's good damage, but can't find a follow through with a shotgun. क्या बात है? Not पीएल भाई शाउट आउट आ जाना चाहिए नेक्स्ट वीडियो में, क्यों नहीं? जरूर मेरा revenge there for their hot drop. Yes, getting away with that one in school. Now they do certainly teach Hustler Crew a lesson. But we'll need to get on the bus right now to get down towards the south side of the map. 10 sub. Curious to see where this next circle goes, because this could be another nasty one where we end up on the bridge. Wouldn't surprise me after the circles we've seen today. Alpha 7 still keeping it pretty chilled out over towards Milta. Moved away from North George over towards this location of the map, considering the plane path itself. E-Arena, though, they took way longer. I mean, they wrapped back up towards South George. Going to loot in this area, get as much as possible. I think they understand it's going to be a late rotate in, either on the bridge or send Primorsk and grab some boats. There's our Alpha 7 cameo as well. All together, getting their move on with the hovercraft, crossing from the mainland back over. Tianba had that similar rotation, of course, as they do glide their way around. A few more style points on that one, Blank. Oh, definitely. Line for the air does feel good. I mean, for Alpha 7, though, this is going to be feeling weird for them. I think a lot of times when they make this approach, they're always expecting teams to be holding a Novo. Yangon Galacticos, on the other hand, though, they've headed over towards Observatory. They've got a split there. They're trying to hold out all teams. Cloud down towards the south side, though, is peeking over towards Alpha 7, but the hovercraft means they can immediately get out of the water and get on the move. You can just see him there. ये क्या हो रहा है यार? This was the S2G fight, where they were taken out by TT Project, the duo that tried to get away after their encounter versus Vitality. TT once again right here, right now, taking pot shots onto Dopeness bit by bit. I mean, for TT Project, they know they've got to get some aggression under the belt right now. They are low down in the rankings, and they can't afford to let this game keep going the way it is. Ephius finishing out Kenji, and I think that might just be Dopeness out now.
We've already lost पैसा 3 देता तो मैं teams. खाना Lost खा the group, लेता। Dopeness, मस्त। S2G, down to Velocity 13, rate 47 घर players वाले this stage खाना of the नहीं game. खिलाते। It's quite carnage, quite a lot of carnage happening on the map at the moment. Oh, okay. A little bit more standard. Yeah, this is probably better for अबे us and गोडल for the के सिर्फ teams. एक Right? प्लेयर जिंदा है यार, ये क्या ही कर लेगा इतना खास। And centering up, we do have those buildings that sit down towards the ridge side on the eastern edge that currently किधर है? Vitality गायब just किधर have है? free reign over. Where is God like? Razak ये रही might try मानिया। and regroup. I think it might be a bit dangerous now, holding over towards C block as long as he does. So this is sensible. This is mature coming through from Vitality. They know that a lot of teams would like to take up position towards here. They don't want to leave it up to chance. 2 players getting run down. And even as I say that, they're caught up in between TT Project. For what it's worth, they're keeping the heat on TT with how Wolves have played this one. A good squad individually. Zerich cleaning out towards the ground floor, makes it look simple as he busts around the door, waving the 4-4. Zerich with a nade. Nice. Ooh, beautiful bounce on it. Might be able to pick up effect here, but Vitality's having none of it. They hear the shots, they hear the fighting, they take down effect and then clear out another building. This is just space gained, space garnered right now for Vitality. You might think Vitality are going to clean up on this one, mate. Watch this from Zerich. I can feel the energy rising. Looks to get the nade into the back line. Decent chip damage as they're bombarding. 4, 5 nades. One after another, keeping them pinned in position. Razy with a wrap round the back, looking for the angle in. Federales advances with Axel. It's a good knock. Zerich down. Just an unbelievable amount of pressure being applied right now by Vitality. Axel behind him, Dios drops out, but Vitality looks clean. Not a single player lost on the knock here. And a reset actually, because of Vitality, they've been watching out for a lot of players where they're coming from. Getting a full amount of utility, a full amount of supplies from that squad, that's really good at resupplying them going forward too. And again, more space gained for them. They don't want anyone coming close to those buildings on the eastern side of that ridge. This is their area to play. Tiamba caught vision as well of Alpha 7 here. Wide play space to work with. Decent amount of cover in between the trees. Just trying to wait for an overextension. Can't really hard commit and hold the angle right now if you leave yourself exposed to the crosshairs, and Alpha 7 don't want to waste too much time amongst this until they feel they've got an edge. Revel. And a wrap down, try and deny some of the sidelines, get over towards the airstrip. Maybe a bit further here. Circle could shift very far over towards the western side on this next circle, potentially. Instead it goes central, over towards Millie Base itself. Magia set up on the southern side of C block here. Trying to keep it as quiet as possible here for Godlike, try and get towards those later placements. Nongshim, honestly, like I said before, a strong team, but we have not seen a massive amount of that. And again, we have had these pretty crazy, quirky circles so far. Maybe they haven't been able to excel on those. Potentially here, we can see something a bit different. Yeah, definitely a known quantity with a ton of talent. But like you say, maybe not just been the right place at the right time with the abstract nature of the first 2 games we've had today as we've kicked off the action. Group B, bringing the heat here. A lot of very explosive teams. Not in the worst position with the hilltop control and cover to work with. They'll have the lay of the land over the Vitality split if they advance towards them. There was a later rotate as well from Hora that's still been developing in the back. That's why we haven't seen them for some time. The Arena, in the meantime, did make the cross, by the way. Over towards the western side. They are rocking up over towards that ridge. There was a 2-2 here from Vitality. The Arena rocking up on it right now. It's a little bit scary here, but immediately Vitality's backing off the angle. But they have information now. That's the big thing. Will Arena catch any of them in the process? Magia now up against Yangon Galacticos as a solo. Could have had the drop on him.
Mania versus Mania was hoping to at Young least get that one Galacticos. clothesline play. Oh my god. Introduce him to the shotgun, but he's exposed to Smile through the window. And Yangon. सुल्तान भी एक बात बताओ, इतना पैसा कहाँ से आता है? आई डू फ्रीलांसिंग बडी, काम पे लगा लो मुझे यार। क्या काम करते हो? जो तुम कहो भाई, बस मुझसे कोई प्रोफेशनल काम नहीं आता। सुल्तान भाई मेरे को भी काम पे लगा लो, मैं हैकिंग बहुत अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। अगर किसके ईमेल और पासवर्ड पता चल जाए ना, तो मैं उसके अकाउंट हैक कर सकता हूँ, यू नो। भाई पैसे कमाने के लिए कोई प्रोफेशनल ही काम करना पड़ता है। सुल्तान भाई मैं हैकिंग कर सकता हूँ, आप मुझे अपना ईमेल बताएं या बैंक का कोई वो बता दे, मैं आपका बैंक ही हैक कर दूंगा, यू नो। पहले आप तो नेक्स्ट लेवल चीज हो, क्या बात है। वैसे अगर ईमेल और पासवर्ड भी पता चल जाए फिर भी ना कर पाऊँ, 2 स्टेप वेरिफिकेशन कौन हल करके देगा? Ida blockade that is set up watching the bridge. I also doing crystal clear line of sight. Initially We're going to fire some shots onto them. The zone shifting in favor of Vitality's current position as well, with E-Arena in close proximity, and that battle does break out. Knockback over onto Emerel, it seems like, though, for Ida. It's not gone anywhere near as cleanly as they were hoping for. It's pretty messy both sides, but Ida has the opportunity to get all the players back up again. और मुझे तो बहुत एक्सपेक्टेशंस से यार, इन लोगों ने इंडिया की वो टूर्नामेंट को डोमिनेट कर रखा था, फुल फाड़ के रखा था। With the P90, looks to take some shots over towards him. But again, horror. This is horrifying, honestly, for Ida. They're just poking their heads slowly over the top, making it uncomfortable right now for them. You think with that very delayed rotate, they went all the way around the east side over the other bridge. Haven't had too many opportunities to get elims on this game. 32 points coming into it in 3rd place in the overall standings after our previous 2 games. They're going to want a chance to fight, add a little bit more to that. But that wasn't the hard commit onto Ida. Like you say, get a bit of a read off and try and stay safe. Rest of our teams now focusing on forging a path ahead back into the zone. Well, the thing is that for Aura, they have to be very careful here. They know there's a ridgeline that sits down over towards Nongshan Red Force. They can play that, but they also understood they didn't want to get too involved with Ida, considering that the main rotational path here for most teams is over the northern side, over the rolling hills, and then swinging by E-Arena and then trying to play off that ridge there. So for Horror, I think they just take their chances. They move down towards the high ground. They're going to isolate a lot this northeast side of the map whilst keeping their back cleared from Nongshan Red Force as well as Vitality. Alpha 7 in a pretty good position as well to possibly rearm themselves with some higher tier loot off the back of the drop. One of the times we've seen them not really taking early casualties as well, so we get the full force of Alpha 7 where they play their best PUBG Mobile. E-Arena seeing the wrap round from Ida. And that seems to have caught their attention, perked their eyes up a little bit, but they're going straight down towards Tiamba territory. I mean, right now for Ida, they were just shepherded by E-Arena in the hovercraft. Oh, Ida does make their way up towards the building, but this is an uncomfortable position to be playing. Offset from the distance, also trying to get involved there. In the midst of the chaos, Darko in the P90 goes extremely low, but for Tiamba, they don't want to really leave these buildings too much. Everyone understanding that there are so many positions to play here, there are so many sightlines at play as well, that it's difficult to be making those rotations. I mean, Ida just felt the full force of 5 different teams all taking shots towards them. Terrified of E-Arena, forced into Tiamba, and then skewered by the backstab of Vitality. Alpha 7 even assessing the situation to see when they want to make a move. Zone still crunching in. Last few squads making their rotate in. Yeah. I mean, this is playable though, right? That's the problem for Alpha 7 right now. This is very playable in terms of the ridgeline. They've got ahead of them that slight slope that looks upwards. Until they're forced to move, I don't think they're pulling off this position anytime soon. Over towards Smile. Behind the missiles. Want to see if they can find Romeo underneath. Sleepy looking to do his best anti-aircraft.
over towards these guys, clip their wings at distance, but this time he's got the DBS in hand, no Balti in play. Nade after nade to keep the pressure on downhill. A bit of extra distance on that one. Non-Shin Red Force still sitting रुकेगी मेरी stream. pretty inside of the pouncing on a team. 72-1 GS taking casualties. Tianba also find an opportunity to get involved. And Alpha 7 collapse onto it now, Blank. Clean up through action. That's really good. They spotted an opportunity, opened up over towards GS, and got the find a fair few eliminations on the back of it. Yangon Galacticos also do move down this way, tails between their legs after that initial engagement with Aura earlier on. Not the spot they want to be in, and suddenly they find themselves with neighbors here in Alpha 7. Two champions up against one another now. But the issue is, Blank, heavy are the heads that wear the crown. And it's Yangon Galacticus that need to stand their ground and defend versus a reinvigorated Alpha 7 with a point to prove. It's a real big opportunity there for Revo. Guys flexing Six their Names though, with membership. a rough idea of where they're playing. That might just be enough. Good arc on the first two. Initial chip damage to aid them in the fight, but no overcommitment. Seeing more of that dynamic tempo they were talking about in some of the early interviews this event, saying they know when to be aggressive now, but they know when to rein it in and try and reset. Yeah. Again, I think that was the big thing for Alpha 7 though. I think they got so in their heads that there was not a single team that could fight them clearly, that potentially that's their downfall. But again, this team has incredible gun power, but they just need to realize when to apply it and when to accelerate, when to pull it back. I think they've looked a lot better today. Honestly, it's looked a lot cleaner. It's a lot more like the Alpha 7 of the past, consistently getting towards those late games. But they're realizing there's some big dogs in this lobby. More respect, but it goes both ways. They do assess the situation as well, getting a bit of info up top side towards the arena with the split they've gone for. Can't force the issue too heartedly. If they leave themselves exposed, it could be punishing, but that might be an opportunity presented off the shot up from Hora. Revive मिल जाएगा. अबे Hora ने Sky ने उधर से knock किया. That's a long distance shot as well. Certainly put Tony K down. Helmet's got to be suffering off the back of that. Rough for Tony K as well, as he's usually the front man for the squad here. मजबूरी का मजाक बनाना. Joker's wrapping back. They get done. Alpha 7 also has taken a knock in the process. These are bad times to be taking knocks. Circle goes central. Non-Shin Red Force. Real chance right now for South Korea. Aura down towards the southeast. Tiamba's got to move out from the buildings. Very clear where they've been playing for such a long time. Potentially move up towards the loot crate. I don't know how far in this is, but you could play off the back of it if you've still got vehicles to work with. Well, you touch on there, could this be a game where Non-Shin Red Force finally come alive? They've had a pretty safe pathway throughout the zones we've seen so far here on Game 3. We know they're talented. We've been amping them up, we just need to see it, but let's see if Alpha 7 can bring the thunder on the close quarters engagement. Goodbye, Milu, as Tiamba get hit by the front of the vehicle. Quick flicks coming out from A7. A single knock back onto him, and they're starting to take a bit of damage. Non-Shin Red Force taking pot shots down. And although they've cleaned out the ditch, they've got a lot more to worry about. This is just the difference between EWC and when we come to any other tournaments around the world. PMGC very similar in that approach as well, where you cannot make any play without another team dipping their heads in, right? It's really, really difficult. Every squad knows when to pick up the heat, honestly. E-Arena also suffering massively on their entry. They just could not find a good time to make their way in. Yangon still living on with a four-man squad. Hillside position in play currently for them that they will have to abandon eventually. On the wrap further down, the duo of Ida.
अबे नहीं पंसना. Was rattled down to only Darkin off the back of this central angle that was taken from Alpha 7. Arcing nades in towards the Tianba compound. Tianba, despite suffering so much earlier on versus Alpha 7, still alive here, but playing a building that everyone knows is occupied. Darkin and Tianba live in the same nightmare. Right now, Alpha 7 need to make a move. Watchtower is open. Potential at moving over towards that. Vitality takes some heavy hits. Nongshin Red Force continuing to put on the pressure on this map. Again, Yangon Galacticos suffering to the same thing that E-Arena did. They were looking for any kind of entry point. But Guys, क्या कहते हो? आवाज आ रही है? हाँ. Guys, क्या कहते हो? ऐसी सिचुएशन में? ठीक है? ओके सही. ओके फिटनेस भाई. Guys, क्या कहते हो? कौन चकनाटेदार निकाल पाएगा? For 7. Biding their time, know that they can strike now with a peek out. Ravo single-handedly has been the explosive force on Alpha 7. 5 elims tied to just this one beastly player. He's on his last legs for now. They need to play medic to get him back up. And non-shit Red Force have had sightlines to make them feel uncomfortable. I mean, honestly, for Alpha 7, they've had the roughest game. This is a really, really hard approach for them. I think they've played phenomenally this match so far. I'm just it's never been easy, but they are running out of supplies, right? They're running out of meds overall. I think the gas is low in the tank. Let's see how much more Alpha 7 get done in this game. I think this is where they really will need to take the task to the next level. I think it's going to be hard. The game's going to come down to Nongshin Red Force and Vitality, unless Aura has something to say about it. Nongshin Red Force just uncontested by any other squads. They've just got 3 angles to hold onto A7. And like you say, it's made it so brutal to move up. Meanwhile, we get the POV of Axel that's taking shots down onto him, but running low on supplies again. The ammunition economy could be a problem. They turn their attention straight onto Horror though, Blank, and want to see if they can charge. The nades just aren't pitched right though. N7 वालों का free का चिकन नडे मारे. Coming through from Alpha 7 too. There's a couple more nades still left. M79's in play as well. You need those smokes to make your way across. But I think it might be lights out soon. Great shot from Axel once again. This man's name's been in my mouth far too often today. It's crazy. Just as Nonshin turn their attention over onto Yangon and Alpha 7 were given a chance to take, they go in here. Horror is still holding. And Alpha 7 cut short on the crossing. They can't arrive, and Horror hold on. The jiggle there comes on through. Looks really, really good in that moment. I mean, Aura didn't give them a chance to move on that one. Joker still up. E-Arena managed to make themselves into a top 5 despite everything. Yangon Galacticos massively suffering to the sightlines of pretty much just Axel, who has their number. But Yangon, I feel like their time is up now. And that could be a statement that you could attribute to every other squad in the lobby with how Vitality is starting to play. A beautiful day from them so far. 10 elims in the space of this single battleground up to this point. A full 4 squad. The only other that's comparable is Nonshin Red Force. No, Joker! Almost got the second, dude. I actually felt it in that moment. But he might have single-handedly just ruined the chances of Aura. It goes down to this. Nongshin Red Force versus Vitality. किसी को भी चिकन नहीं दिया. बोल रहा हूँ kill. Does get the res though, which denies the point. That's why he goes through with it. An economic play, thinking about the future of what's yet to come for Horror. But right now in the flesh, live in Paris, we're talking about the present that is this game. A gift we've been given with Vitality playing flawlessly and Nonshin Red Force bringing the strategy down to our final 2 squads. Vitality. दो पूरे squad है. Side by side now. Vehicles still in play here for Vitality. For Nongshin Red Force, they moved up early. They've got 1 vehicle that I can see in play. But Vitality having these cars still up and available is a really big deal for them, which is maybe why actually earlier on Razak was making such a big deal of scaring off E-Arena's angle so they couldn't take shots down towards the tires because they knew they'd need those wheels later on. Just little plays like this can make the difference. Moving up towards that loot crate could be the big thing though.
Vitality looking to make the first move. You can hear the engines revving. जानबूझकर जोन में मरे हाँ ना. Observers, love you guys. ये फाइट मजे की होने वाली है. I bet. In the scene. On NF. Giving us the cinematics of the story on this one. देखते हैं क्योंकि दोनों टीमें जोन में अभी जोन डिसाइड करेगा. That's the devil in the details that's really raised our opinion of Vitality just in the space of the previous two games, with the fact that strategically it's been on the money time and time again. Playing off the rooftops, both teams begging that each other makes a peek. Right now this is more about information gain than everything. Not having any sight denied by the windows inside. And it comes down to this, zone 9. Circle starts to close. Both teams will have to make a move. M79's dropping out the smokes. Clearing out space between the center of the buildings. In come the vehicles. Razak goes first, gets it up towards the next. Had to make the crossing without taking too much damage here. Again, everything is folding into this. Cerebral plays. The smoke wall providing the cover that they need to take space off of this. Second by second, edging further closer into a better angle to play off of. They want to cross. Smoke wall goes up. That's a nade being primed from the top of the roof, though. If this is on point from Nongshin, it could be absolutely brutal. Goes into the back line. Just splash damage. Oh, what? What an insane nade. Axel's moving up, though. He's getting towards the back lines of them. He's already in. He's going to take a little bit of damage from that. Razak very much hurting now in the back lines. Razy's going to send a Molotov over the top side. Axel hurting. He gets it done with a shot. 1-for-1 trades on the Elim so far. There's the spam in from the Bizzard as we see another player fall. Nongshin, Red Force seeing red as they're bringing the heat straight to Vitality. Only a single player remains. He might have the heavy artillery, but he can't do it. Nongshin, Red Force with a strategic, comfortable game. Take game 3 and get that chicken dinner. Just hold strong inside the building, they say. Au revoir to Vitality. C'est la vie. But honestly, for Nongshin Red Force, I half expected that just to be the ending of them. But it was stalwart in their defense. Losing Razak on the approach was the big deal. I half expect them just to all follow Axel's approach and just move to the side. But Nongshin Red Force, they've been storing those nades up until that moment. That's the crazy thing, right? They were just given so much space to sit comfortably. And they get it done, they get a chicken dinner. But you can see, Blank, it's not just what they've done for themselves, it's the reverberations they're sending throughout the other teams in this lobby, in this group. Alpha 7, trapped in such a... HR मदारा को देखो बोल रहे AG will win. AG will win. आज इसका जरा अरबिक देखते हैं. अरबी बड़े हरामी होते हैं. हम हरामी को मेंटल. والآن يحاولون ويؤمنوا على نهاية على الجميع. 10 गलती से मिस्टेक हो गया. Dope win by NS. ومين الاقصاد والان يحاولون الزيادات. هنا امامنا جوكر من اجل النقطه من بعيد ياتي سكاي ويؤمن على النقطه ايضا. محاولات والبحث يزداد هنا على هورا. سكاي اخرج سكاي اخرج ولا تعطي الاقصاء للزون. اعطي الاقصاء للزون. اتوقع انه يبحث عن ان يعطي الاقصاء للزون في هذه اللحظات. نعم يعطي الاقصاء للزون ولا يفضل ان يعطيه لمصلحه فيتاليتي لانه المنافس المباشر في هذه اللحظات. 4 ضد 4 فيتاليتي من هناك و4 لاعبين متواجدين من تشكيلة نونغشم اللي قبل هذه المباراة لم يكن متواجد. مباراتين لم يكن حاضر اصلا. نقطة بنقطة مباراتين. تشعر كان الفريق غير متواجد بالمباراة. غير متواجد صحيح. غير موجود في المباراة حتى. لذلك نونغشم الآن هذه المباراة إذا عاد في ميرامار ستكون محط أنظار لهذا الفريق. محط أنظار لهذا الفريق ستكون هي الهدف لفريق النونغشم. هيون بين سويزي تيزي كذلك وأيضا إكس زد واي اللي يتواجد معنا هنا. إكسل هدوء كبير سيكون ما بين الطرفين. 9 ستنهي. 9 بتوقيت ببجي موبايل في الستيج 9 ستنهي. ستكون أنا بس واحد. أباوع على شوية أرقام معتز. لو انتصر فيتاليتي سيصل إلى كم؟ إلى 59 نقطة. يعني ما يقارب ال60. اسمعوا يا المركز السادس 15 نقطة. يعني الفرق ما بينه وما بين المركز السادس 45 نقطة.
صعبة اليوم الثاني انه يلتحق وصعبة باليوم هذا فهذا يعني ان الفيتاليتي अरे एक दूसरे को बोल रहे भाई तू उबला हुआ अंडा खाएगा दूसरा बोल रहे नहीं मुझे एलर्जी होती है बोल रहे क्यों बोल रहे मैं ठक लूं इसलिए चस मारिए मजा आ गया امس ठंडी हो गई भाई في بطولة في يعني الى نهائي العالم اذا ما انتصر فيتاليتي وقد يكون فرصة للنونغشام اللي لو انتصر بالمباراة سيقفز الى المركز الخامس. نعم. من المركز الاخير الى الخامس. كيف شلون؟ هي فقط من اجل يعني نتكلم فقط يعني فرق قدمت الاولى قدمت الثانيه ما قدمت في الوسط لم يقدم واضح فرق الامكانيات. نعم يعني صحيح. هذا واضح هذا اللي يوضح فرق الامكانيات وكذلك يوضح مسار البطولة كيف ستذهب في المجموعة الثانية. واضح ان الفرق اللي قدمت في المباراة هي الفرق اللي لديها الامكانية انه تقدم والبقية سيكون عليهم تحدي الا اذا ما اختلفت الاوضاع وشفنا هذا الساعة رنت الساعة التاسعة يا معتز ودق ناقص الخطر ما بين الطرفين. الزون سيتحرك محاولات فيتاليتي للتغطية اكس زي واي من بعيد راح يكون هو الضغط الأكبر. تغطية بكل السموكات كل ما يمتلكونه من السموكات سيرموها وراح يصنعون حاجز من الدخان. التقدم الرئيسي من زاوية إلى زاوية أخرى ومن هنالك سيكون الهجوم من الزاوية اليمين لأن أعتقد الزاوية اليمين هي الأريح لتشكيلة لاعبي فريق الفيتاليتي. تصل يعرفون الأماكن يحاولون الاندونوس يهاجمون اندونيسيا والنونغشام كوري لكن وصوله يكسل والأروع من الجهة اليمنى. شوف التوتر الذي سيصنع فقط من أجل الوصول. اهدى أكثر سيكون هناك الدعم حاضر من ريزي. الله على الأول على الإسقاط الأول فيتاليتي المبدع. سويزي كان سهلا ميراث. الله على الأول الله على الإسقاط الثاني الله على الثالث سيكتب النونغشام سيعود مباراة العودة مباراة ريمونتادا مباراة من خلالها أول خطوة حطت على الطريق. هذه الخطوة سياهو oh my god bro she Arabi feels difference. MW का क्या मतलब है? MW का मतलब है मिथिक वॉरियर्स। क्या बात है सुल्तान साहब। ये सीजन 6 में रखा था। ओल्ड प्लेयर गॉड लाइक से बहुत उम्मीदें थी मेरी बट वो तो स्टार्टिंग में फट गई। आई हैड मिथिक फैशन एट दिस डेट टाइम। सीजन 6 में मिथिक फैशन। सुल्तान भी पागल हो। सीजन 6 में मिथिक फैशन। सीजन 6 में जहां तक मुझे याद है पहला मिथिक आउटफिट आया था। पागल। यो पीएल भाई व्हाट्सअप। यो मैं एमडी एमदारिक्स एक्सडी आई एम गुड। मुबारक हो तेरे को मेंबरशिप मिला है। पीएल भाई यहाँ 40 तो नहीं है। नहीं मुगल साहब 40 फाइनल्स में मिलेगी। ओवरऑल रैंकिंग अच्छा मैच की रैंकिंग है। नॉन गश ये कैसा नाम है? नॉन गशिम रेड फोर्स डॉग। लास्ट एंगल रह गया गाइस। इसके बाद फिर मिरामार लगेगा और मिरामार में जो तबाही होगी ना दीज टीम्स आर वेरी फेमिलियर विद मिरामार। कुछ समझे? मिरामार में एनी टाइम तबाही होती रहती है। ये एरिना होगी ये लोग मिरामार में अच्छा खेल लेते हैं परफॉर्म कर लेते हैं। पिछली बार भी किया था इन लोगों ने। मिल जाएगा ब्रो। आज 150 की तुम्हारा लक खराब है। पीएल भाई मुझे टॉप 1 की मुबारक दे दो क्योंकि मैं मेंबरशिप तो मुझे नहीं मिल रही। भाई मिल जाएगी। डोंट वरी ब्रो डोंट वरी मैन।
क्या कहते हो गाइज, गोल्ड लाइक डायरेक्ट फाइनल्स में पहुंच पाएगी कि नहीं? अगर फाइनल में चली गई तो फिर इंडिया की 2 टीम्स होगी जो फाइनल्स में लड़ेगी, 2 टीम फाइनल्स में। What the hell, ये क्या हो रहा है? Decided to join you guys for a little bit of a CC update because I've got some interesting stuff to talk about, okay? We've got a lot going on at the Lenovo Legion Gauntlet. We already had a 3rd, 4th place decider match happen, and Geek Esports was able to claim 3rd place, making Rock Esports be that 4th place squad. Once that was done, we now have a grand finals match occurring. We will have another EWC champion in just a couple hours. That's between AGAL and KSG. It's going to be massive, and of course, I'll keep you guys all updated at home for how that ends up playing out. But, I mean, now that I'm here, let's get back into the discussion. These matches are great. Max, I kind of want to ask, Lace, do you have any thoughts about any of these squads? Vitality. Get out of here. Get out of here. Don't be trying to take my job. Go find some more updates for the club championship. Yeah, she was going to ask you about, I don't even know what. Max, after these 3 matches, what has surprised you so far? That was it's a normal-ish game. Actually, it was kind of weird still. The circle was very far to the west. There was a lot of water on phase 1 zone. But overall, the execution was fun, but it was very gifted. We know, looking at... Bro, PL भाई के सब्सक्राइबर्स ज़्यादा हैं, चांसेस कम हो जाते हैं फिर इंडिविजुअल के। वेल भाई केले में हैंडसम लग रहे हो, क्या बात है मेरे भाई। Fourth position, Liptroy, is mental. 41 points up against 25. I saw that in the beginning and at the end of 51, 51, 41 भाई साहब। points, huh? And it keeps going. 41 to 25 is insane. 25, 20, 16, 15, 12. That's sort of more normal for a game 3. 51 is not. And I don't know how we've got here. E-Arena, Vitality, even Hora doing fantastic in what have been back to back to back insanely difficult zones. We do have to say, though, for E-Arena, they have slowed down Lays. They ended up getting 39 points in that first game, but after that, yeah, you've been able to get some points here and there. Obviously, just for everybody, I'm not expecting for you to get 30 points again, but if it does happen, that'll be amazing. But the squad just hasn't been able to pull off the gap that I thought was going to happen. वेल भाई एंड तक टॉप 1 पर था, आज भी रहूंगा, क्या बात है। वेल भाई 40 किधर है? 40 फाइनल्स में मेरे भाई। Be the crux of the whole entire thing. You can clearly take everyone's weakness, go in strong, but of course, 2nd, 3rd game, people are going to start reading your plays, understand where that you are going to push and how you're going to make this through, and that's what's happening to E-Arena now. They had such a strong start, but everyone's reading them like a book. Everybody is reading them like a book. When we saw the overall there, at the bottom 3, we did ended up seeing Godlike. And with Godlike, we saw this past match that they ended up getting into a hot drop. For this squad, but you know what? Before we even talk about Godlike, let's talk about this, because I know you wanted to talk about this, Max. I really wanted to have a bird's eye view of this push on Vitality that really can see the center of the circle, forcing Vitality out of their compound before Nongshim Red Force. So Vitality don't have the advantage anymore. They have to be on the offensive. Massive smoke road. I'm not going to lie, looking at some of these smokes, not great synergy and communication. It kind of all spread all over the place, not denying lines of... ये नहीं लगता ना, उस बंदे को इसने 50 HP कर दिया था, वरना फिर इजी था इनके लिए। उस बंदे को इसने 50 HP कर दिया था, देखना बहुत क्लोज जाके लगा था। उसके HP देखो 40 HP रह गई है। अगर ये नेट लगता ना तो ये फाइट पलट जाती, ये वाइटैलिटी जीत सकती थी। Here in this final zone, sending it forward. But this, I would say, is the biggest mistake from Vitality, and the main reason why they didn't end up getting this chicken dinner. They're sending it 1 by 1. One player sends it, then an extra player send it, but 2 players are still on the back end of that fight. This is the moment to send everything onto Nongshim Red Force to hopefully make it work out. But here, 1 player on the left side of the wall, he gets overwhelmed. That's the end for Axel. Another player inside the building gets 1v3 at that moment pretty much. No way, Jose, is that working out. The 2 other players still on the roadside. Unfortunately, पूरी फाइट की बाजी बदल सकती है। पहले मैं आपको डिस्कॉर्ड पर वीडियो सेंड कर रहा हूँ, वो चैट को दिखाओ हाउ टू ओपन ओपीटी इन ओपनेटिव फॉर गिफ्ट ऑन यूट्यूब। अच्छा ओके, समझ गया। चैट को दिखाने के कैसे मेंबरशिप हासिल करना है। गॉट यू ब्रो। ओ आ गई वीडियो।
How to receive YouTube membership gifts. Oh yeah. यार ये 8 कब तक चलेगा यार? Welcome everyone to the Bald and Bearded channel. Today I'll be teaching you how to opt in for receiving gift memberships within your favorite YouTube communities. It's important to know that this setting is not universal and you must opt in on each channel. There are a few ways to do this, and we'll start with instructions from the chat of a live stream or video premiere. Guys, ये देखो, ये ट्यूटोरियल है कि तुम लोगों को वो कैसे मिल सकता है, उसे क्या बोलते हैं, membership, सही है? You'll notice an alert in the chat if someone has purchased a gift membership. Then you can click on the Allow Gifts prompts, which will open another window where you'll be able to toggle the opt-in button for that. ओह, अच्छा कोई मेंबरशिप गिफ्ट करते हैं ना तो उसके नीचे एक ऑप्शन आएगा, नेक्स्ट टाइम यू कुड बी अ लकी रेसिपिएंट रिसेप्शन ऑफ अ बेल्ड। अच्छा, इफ अगर सुल्तान ने वापस मेंबरशिप भेजा तो तुम लोगों को ऐसा ऑप्शन आएगा, उसके ऊपर क्लिक करना है अलाउ गिफ्ट के ऊपर और ये एनेबल कर देना है। Be able to toggle the opt-in button for that channel. Yeah. Again, this is only for that specific channel. The same process can be done by clicking on the gift alert in the chat header, but both of these methods are only available. दूसरा ऑप्शन ये कि तुम इस गिफ्ट के ऊपर इस तरह क्लिक करो और यहाँ पर वो आ जाएगा अलाउ गिफ्ट, बट यही VPN करके करना पड़ता है ना सुल्तान? For as long as those alerts remain visible. That being said, there is a more reliable option that I suggest you take. The channel must still be live streaming or doing a video premiere, but you can opt in without needing to wait for someone to gift a membership. I encourage you to go ahead and take care of that ASAP on any channel you'd like to be a member of. For this method, you'll view the chat section and click on the currency symbol, then select the membership option. Afterwards, you'll see a new window populate and you'll want to click the 3 vertical dots next to the X in the upper right corner. Upon doing so, you'll want to select the gift settings option and then toggle to opt in for that channel. If there's a gift membership currently available in the queue, it'll award it to you at this point. If not, you'll be in consideration. Okay, I got you guys, I got you. समझ गया. Wait, let me open the another window. इसमें ना अपन लोग VPN कनेक्ट करते हैं. Just give me a couple seconds, dogs. I will maybe explain you better. Maybe. Guys, ये देखो. This is my channel. मैंने VPN कनेक्ट कर रखा है, ठीक है? VPN कनेक्ट कर रखा है. ये ओपन करते हैं. 8 पे कॉपीराइट ना है यार. अच्छा, यहाँ पर ना जाके तुम लोग बाय गिफ्ट बाय मेंबरशिप व्हाट द हेल मैन और माइनस ना हो जाए. ओ मेंबरशिप के ऊपर क्लिक करके 3 डॉट गिफ्ट मेंबरशिप सेटिंग्स इधर ये एनेबल कर देना. मेरा ऑलरेडी एनेबल है शायद. देखो VPN कनेक्ट कर देना है, ठीक है. फिर आप लोगों ने यहाँ पर मेरे उस पेज को रिलोड कर देना है, स्ट्रीम को. देन आपने यहाँ पर ये देख रहे हो शो योर सपोर्ट फॉर PL भाई, इसके ऊपर क्लिक करके मेंबरशिप के ऊपर क्लिक कर देना है. मेंबरशिप के ऊपर क्लिक करने के बाद फिर ये 3 डॉट्स यहाँ पर गिफ्ट मेंबरशिप सेटिंग्स, इसके ऊपर क्लिक करके इसे एनेबल कर देना है. एनेबल करने के बाद अगर नेक्स्ट टाइम बीबी सुल्ताना खतीजा मेंबरशिप गिफ्ट करते तो तुम्हें ऑटोमेटिकली मिल जाएगी. अगर तुम मेरे चैट में हो, स्ट्रीम खोली हुई या नहीं खोली हुई. इंडिया के VPN कनेक्ट कर ले, दैट्स वर्क. हाँ, इंडिया का मैंने कनेक्ट किया हुआ है. अगर आप USA का करना चाहते हो तो दैट्स आल्सो वर्क. बाकी सुपर चैट में कर सकते हो, सुपर स्टिकर्स. ये क्या बकलूली है. नहीं भाई, ये पैसे मांगेगा, मेरे साथ कार्ड शार्ड नहीं है.
Are you guys understand? Each time going Are you guys understand? forward that someone does gift a membership. If you receive a gifted membership and decide to join on your own, you'll still receive the full benefit of the gift until it expires. That's all for this video, but if you'd like to learn more about purchasing gifted memberships, I've created a tutorial for that as well. शुक्रिया भाई, love you. बहुत मेहनत की आपने, मेहनत बोल रहा हूँ. पहले एक अच्छे मोबाइल प्लेयर से रूम कह लो. आहे नाम है. ओ मैच लग गया. Oh let's go. Oh let's go. Couple of matches. Oh my god. I'll do it to him again, you know. Let's send the circle down south and see Godel what they किधर got, गई है? 'cause, Where is Godel? Yeah, we didn't get enough military. What is going on today? These circles have been absolutely insane. And Godel ये represent की तरफ जा रही है. Godel, let's go. Lipovsky की तरफ जा रही है, I think. It's wild to think that we saw a 39 point. हमें Hora versus Godel मिल सकता है. And Maybe. actually have a team title. नहीं मिल सकता. Like this is ridiculous. Yeah, I mean, since then, what is that? 12 points they've earned in the next 2 games, which is still pretty good, right? That's pretty good. That's like a middle table performance right now. 8th and 9th, both on 12. जोन तो ऑलमोस्ट सेम बने पिछले मैच की तरह. पिछले मैच की तरह सेम बने. Really interesting. And given this circle, Vitality are in such a good spot. If it does go south. Well, by how is Godel playing PUBG? Is not it been in India? नहीं, ये सब लोग नहीं, जितने प्लेयर्स हैं ये जो खेल रहे हैं, ये सारे एक ही जगह पर है. पेरिस में एक ही जगह पर है. एक डिवाइस है, सेम इंटरनेट है, सेम वो है. Godel लाइक पेरिस गई है, अपनी कंट्री में से नहीं खेल गई. तो समझे? Quick. Absolutely. Second, maybe over the bridge. I think it's safe to say you do have some players. Oh! ये इंडिया आएगी, मोदी बोलेगा तुम लोगों ने PUBG खेलेंगे ना, BHAI खेलना था. That is. PUBG China का है. That's going to slow them down. The good news is that they are across. The bad news is we saw them do that. Yeah. So, you know, out of all the things, that's the most negative aura that I think I've ever seen of any team is from the NA team, of course. Out of all the things that could have got put on stream. Oh, but still which country they represent? ये इंडिया को represent कर रही है. You know? That was trying it. Oh, they get caught by Vitality. No! Oh, if only you had a V. But बहुत गंदा खेल रही है. 14 नंबर पे. पेन से मारा. पेन के मारा. This just goes to show here. पेन से मारा. What the hell, man? At this level. Headshot. वो भी गाड़ी में से उतारे से. बगी में से. If only you had a vehicle. This just goes to show here, folks. At this बगी में level. से उतारे. What the freak? With a pan. You got a pan knock. I think that was a thrown pan knock. Coming on. भाई ये तो निहत्ते मर रहे हैं सारे. Just yet, but they are starting to bleed. The Wolves will struggle here, and I imagine that Razy's going to get back up. Yeah, now you got Necessary all by his lonesome. Razak trying to pull off some plays there. Oh my gosh, switching in that buggy. Necessary is done. And the Wolves Vitality 2 kill ले गए. Wolf वाले बस खत्म हो गए. एक प्लेयर रह गया. This is what I'm talking about. One found the flip turn vehicle, the beetled vehicle. Dude. And if they've pitched it back, that would be brilliant. This is what I mean, and the good thing is that Vitality. और एक क्या हो रहा है? पंस गया. It is पंस गया. This is their drop spot. They're already so high on the leaderboards, they can do whatever they want. They can chase this all the way if they feel like it. Let's take a look at the replay. Okay. Oh, what's this? No way! Oh my, on a moving buggy. Oh my god, man! Are you kidding me? That was insane! Buggy से उतारे उसे. His team would have survived. I mean, still, that's going on the highlight reel. Nice, sure. Oh yeah. I mean, yeah. That's that. Okay, they get some aura points back for that. Yeah. So we can forgive the flip vehicle. You know, if you're getting a ranged pan headshot, that was cool. You're breaking brains and Aura scrambling. plus. You know, that's fair enough. You're gonna bring the pan to play like that. You can. Since ही नहीं बनता, PUBG is banned in India, yet they are still representing India globally. It just shows how desperate they are to play this game and stay relevant. Their government is dumb as shit. Point की बात की है. PUBG बैन और फिर भी ये लोग
to send Khair jaane do. recall as well. Ooh, is having the hovercraft rolling up to the fight juice. Yeah, and you can see Axel getting those. वैसे पॉइंट की बात की यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था सुल्ताना खतीजा. Surviving for the time being, but now it's on fire. Kenji has to back up. He's got the UMP in hand. It has to make a crazy play, but that nade hurt way too much. It's all up to Mati. इन्होंने इतना गोबर का है कि बस दिमाग चल ही नहीं रहा अभी इनका. This one down. The question is, how much time is this going to take, right? Because all the while, teams are starting to migrate south. They're moving in towards those bridge locations. Vitality losing time in terms of their ability to set up across these hills and may lose the ability to stop players getting across. Noxian Red Force have taken advantage of this. They are now on the north side of that military base. And in comes Ida as well across the bridge. You're correct. One thing about Vitality, though, is they do have the ability to get straight to the finals in like 4 matches. That is one thing that is definitely happening, though, with how crazy they're playing here. I don't even know if this is PMWC or if this is a classic at this point, because Vitality are just running over everybody. Batika's trying to make something happen, though. Oh, it's actually Vitality versus 1. Ida chiming in with a third party. This is the bridge crossing team. They move forward to Vitality. Starting to drop now. There's a flush sent their way. A second. Vitality मर गई, उनके बस एक बंदा जिंदा है. This bridge crossing is going to come back. Oh my God. It's going to punish them. And Axel उनके एक बंदा जिंदा और Vitality का. He remains. He's gonna go for the res here. Excel को revive मिल जाएगा. But yeah, they took a long But one के लिए भी बड़ा मुसीबत है. And the longer they waited, ये pitch हो चुका है one. third parties are coming, and now you got Spike Ida in the mix. So this is bad news for both of these teams. Dopeness is in big trouble. Vitality, I mean, they got 6 eliminations, and the fact that they're so high on the leaderboards, I mean, that's still not a bad game, but you're right. If they would have just made a few different plays, we could have seen a crazy, crazy match from them again. They had a big opportunity here to take वो control इस पावर of ने the स्लीपी को hills. नॉक कर दिया. They decided to go for the fight with Dopeness. I think that it lasted a lot longer than they expected. वो इस which is पावर why नॉक हो गया, we're no seeing fear this क्या sort तो. of thing unfold. They got stuck in. And they couldn't ओह figure स्काई out को a नॉक way कर दिया out. एडमिनो ने. It is unfortunate for Vitality, but ओह going for the मानिया fight नॉक in हो the गया, first no place, fear क्या तो. not a terrible idea. अबे As you said there though, Juke, Trade knock चल रहे हैं यहाँ पे तो. has really come back to bite them because the bridge is just so open. हो रहा कि last player जिंदा है. Teams are going to be hauling it to the middle now. You're going to see Aura सुन गया. having one heck of a tournament. क्या ये 1v4 मार पाएगा? No fear. Gonna have to make a play here. 1v4 मार. Tries to hit that shot. अबे nice एडमिनो. Shuts down Aura, and they are out of this one. चलो कम से कम अच्छा तो खेल रही है अभी. Stage 1 on the blue zone, about to hit stage 2, and this res will come through. They'll be able to get on the road. They can out heal it. That's a really annoying circle for a lot of teams. It pushes you up to the north coast, and I mean, it technically still has the ability to go back to the mainland. This is so yeah. I mean, you guys can see it there on the top right. This circle, just so much water in between them, and that zone could still go north. But Axel trying to put some more eliminations for his team. Can he win this 1v1? He's got PUBG the जनता पार्टी Speaker's gonna have to reload. बनने He's got the पड़ेगी. pump shotgun. See what he can do. It's Og. He's gonna do the jump out. 1 versus Axel. Trying to make some moves. Can Find X those 1 angles. do 1v2. Reload उसका first steady नहीं on लगा. UG now, got 10 rounds behind. It should be enough. He goes for it. He's got the HP advantage. Doesn't even need to sweat it. Razy will get back to his feet, but down on 2. The circle pushing out to the east. They do need to start to get a move on now. Severely diminished as they are, but they are on 58 points already. 7 points earned this match. As you said, it's already a good result. All the way up by Rozhok Bridge as we hop on over to Etch as they try and hold it underneath. Looks like they're doing pretty well. Gold like के सारे बंदे जिंदा हो गए. Yeah, you can see Fajita's got that nade. And just pulling the pin, scaring them off. Okay, and this is a tough fight here. This is way too long in the blue zone. But the fact that the zone did go up north, it does buy them a little time. They don't have to really panic all the way down to military base. But regardless, you know, you're trying to get a big game here. I mean, especially for 721 GS. Down a player, only 7 points. This is just rough for them. Absolutely. Very, very difficult stuff. Them and Hustler Crew, well, everyone towards the bottom of these tables is going to look for that Nongshim Red Force injection of points.
Nongshim Red Force getting across to the military island early on the northern side of it, I think is going to play fairly well for them in this sort of a circle. Given how the lay of the land sits, they're going to be buffered around by teams trying to cross either side of them, rather than coming across, and they can farm up players trying to go for a swim. Let's hop back on board with the fight on our screens, though. A 7-2-1 GS nice lost quota. a player. We saw that on the crossing, and Etch trying to keep them there, but there is a knockback over to Fajita. Yeah, you can see Speed holding that angle on the backside. Needs to get with this team at this point. There ain't nobody in that direction. But oh, we see the MG3s in play. Masco's got that S12K. That's the gun you want, though, in that CQC close quarters combat. And right now, this fight is still ringing out. This is all the way over by Rosshawk, folks. This is going to take a long time. Now we're starting to see some util get thrown back and forth, and everybody's just trying to wait for that first critical knock. अंदर चला गया. Alico should completely see NASA there. गया. Oh, nice gun there, मारे. They felt like they should have known there was a player here. And that's going to be a big opener for them, but in the close quarters, that SK-12 is going to dominate. And S721 GS will be able to clean out partially some of the team from Etch, and both Last teams player now bleeding heavily. No one having a good sign. They're losing players left and right, and they still have to get south. I don't think these two are going to get very far. Yeah, I mean, this was a kind of a sacrificial play. I wouldn't have minded this fight personally if that zone was deep milli, because it's like, yeah, our chances of getting down there are pretty tough now. Let's just try to get these points. But considering where that circle is, I think they could have just avoided this fight and fought late game. But regardless, you know, that's the decision they made, and that's the one they went with. Let's take a look at Alpha 7. Alpha 7 are going to be going on the other side of the bridge, wrapping around. The next zone did head a little bit heavier into military. And for the time being, it does look like they're going to have a clear path to that circle. Alpha 7 looking to scout the bridge on the western side right now, moving Carrillo up onto the high ground near the lookout post there, the lighthouse. We'll be able to see if anyone's holding that bridge, which is definitely very possible. Maybe stop off for a little picnic while you're there. Why not? Have a little bit of downtime, but you can't be sleeping too long because you do still need to get on towards this उधर जा रहे military base की तरफ, I think. That's for sure. Let's take a look at their utility. Carrillo's got a UMP level 3 vest. दूसरे मर्तबे उधर जा रहे हैं. Couple first aids. That's going to help them out. But इस बार थोड़ा सा change बना है zone. थोड़ा no reply की तरफ बना है, I think. Considering where the circle went, this is not a bad play from them at all. So far, Alpha 7. पिछली बार उस squad house की तरफ बना था. Fourth place right now at 25 points. This is really good to see for them, considering that they haven't hit a final. हाँ, अभी no reply की तरफ बन रहा है. Yet. So let's see what they can do. Yeah, the one final there's been. They haven't hit it, but they hit it. They didn't hit it in a very dramatic fashion. I think that's kind of more the point, right? They went down in group stages in bottom 2 of their lobby, which was on nobody's bingo card, right? Yeah. So to be able to regain a little bit of confidence moving here would be brilliant. Obviously, a top 5 is what they're shooting for. What's what they should be aiming for, right? But even getting through to survival stage, I think for them would be a little bit of reassurance. Depends how heavy the ego sits, right? Yeah. If they're like top 5 or nothing, then fine, sure. It's a competitive spirit. I'll give them that, but you know. Even survival is better than what they did before, and improvement is the name of the game. That's what it's all about. And when it comes to Alpha 7, you know, there's an old saying in the boxing world, you know, as you get older, the speed slowly goes away, but that power always stays there. And I think that's Alpha 7, you know, like, no matter what, they are so experienced. They're such a dominating team that these guys can get off the couch and I think can eliminate still some of the best players in the world, right? But getting to those end games, getting those placement points on top of those eliminations, that can be difficult because of the 2 recent global tournaments they played in, at the 18 games, they had 46 eliminations, only 12 placement points, which is insane for them. So they're already looking to beat that here, which is great. It's a good sign for them, and they got a good position in this next circle as it hard shifts on over to them. Very, very lucky. Let's see if they can capitalize on it. I'll tell you who else has a pretty good position here is the Vitality duo, right? Up towards the north side, they've got Tianba as well as Nongshim Red Force up to their north, so a nice little buffer. The difficulty, of course, for Vitality is they're playing as 2, so they do need to figure out how they're going to try and work this ground. You've got TT Project as well on that east side of them. Maybe look at a push on through. That is 721. Estrogeno वाले ने पूरा 72 को मार दिया. 72 फाड़ दी. Engagement, as did Etch, but neither is going to be happy about it. तीन प्लेयर थे, तीनों को फाड़ दिया. Yeah, and on the western bridge, it looks like we're gonna have Godlike coming in a little bit late.
There is still quite a few spots in this circle, so it is going to work for them. And yeah, but let's take a look here at this bridge. S2G versus HC there. Again, second fight. Gatekeeping for the time being. And they're going to hold that bridge, I think, all the way to the end here. Soulcake, oh, he spots him. They have no idea he's there. When is he going to take that shot, though? He's going to wait till the last second. Yeah, I mean, you're waiting to have multiple angles on the shot, right? Especially when you're so close to hard cover. You know that you can attack 1 or 2. You lose that element of surprise, but Lost will not lose on that face. Looks for more as well. The spray straight not quite there. And is going to find some bullets sent back his way. And Hamzy has to step up to keep his teammates safe. But now S2G are down to 1. All of a sudden, the Hustler crew seem to have found no real third parties on this one. And Hamzy, I think he just has to get gone here. Yeah, his whole team's going to be taken out. I mean, this is stage 4. The blue zone's hurting. Loco is looking crazy as he's on the move last player. They should definitely get these confirmations before they push, because it's going to be difficult to get across that zone. Instead, they just said, hey, you know what? Let it ride. We are sending it down this bridge. But for how long are they going to make it across? MCG is up there up top. When is he going to take these shots? Let's see. I don't think he's going to have the angle to do it. If they break right here, they're going to crash straight into the angle. Oh, young Galacticos. But Smile starts to unload the clip, finds Loco, pulls him out. Switching into Let's go. It's not quite enough. Abhi S2G के लिए problem है. Send Hustler crew. Is this the same S2G which is famous for creating wow modes? हाँ ये वही S2G clan है. But वो players कोई और है जो wow mode बनाते हैं. और कंटेंट क्रिएशन करते हैं और ये प्लेयर्स दूसरे हैं बट क्लेम सेम है भाई फाइनल में कितने टीम्स होंगी फाइनल्स में 16 टीम्स होंगी Quite a few little dips and valleys that teams can hide under Sultana, some plays in. this is the same team. We still have 11 teams remaining here. Oh, everybody just waiting for that next same clan, deciding just where that but players अलग हैं. During the middle of all that, Vitality getting eliminated, allowing TT Project to take a central position here, puts TT Project in the driving seat Godlike versus Ida. In terms of stopping control. There are high grounds around them that technically have more oversight and things, but they are a linchpin of it. Going to force everyone to fight around the sides, and one of those fights is Godlike. Ida oh, nice. Will be next on the chopping block, and Alpha 7 maybe after that. इनका किल चोरी हो गया TT1 ने किल चोरी कर लिया out and now it's Alpha 7 still looking to try and handle it. Revo will he connect? No, oh nice dishing out oh my god इस पावर ने दोनों को मार दिया 1v2 standing with no force against Godlike. Ole is obscure is now on the other angle here. Alpha 7 का last player रह गया ये भी गया nice little spray back वो क्या डैमेज दिया गया nice यार GG's taking out Alpha 7. What a roll up from Godlike. फाइनल्स कब होगा सर्वाइवल स्टेजेस के बाद कोई 5 दिन 5th डे पे आई थिंक फाइनल होगा 5th या 6th डे पे आज से मतलब आज एक दिन कर लो कल दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां दिन पे They're now regrouping out to the west and they know where the major danger is coming from now. It's on the west side. It's Godlike. Yeah, Godlike four line and part going crazy on that fight. They like to see that. Alpha 7 fans not too happy on that. 7 eliminations के साथ. Place for now. We'll Where's see the drums? Yeah, where are the drums? Where's the vuvuzela? What's going on? I can't hear him. Vitality के points check करो. ये arena के points check करो 52. To the desert coming up, but we got this match to look at. We got Tianba in the mix, and Tianba, man, in 12th place so far, haven't had that crazy pop-off game, but in my opinion, it is only a matter of time. QZZ is an absolute animal. In my opinion, one of the best players on the planet. Bro, Godlike और OG दोनों इंडियन टीम है हाँ दोनों इंडिया की तरफ से खेल रही है in my opinion, only a matter of time. दोनों इंडियन टीम है इंडिया की टीम है I'm still waiting. ये तो प्रॉब्लम होगा अगर ये दोनों फाइनल्स में वो आ गए तो big boots to fill when it comes to Chinese superstars, right? Paraboy obviously is the forefront, the paramount of the Chinese superstar we got style. To see him. We got to see him recently at PUBG. Yeah, that's true. That was ये तो मैं पहले प्लेयर देख रहा हूँ जो कि लॉन्ग रेंज में चला रहा है I didn't say it, but he's not here. You know, we got to see him in a little bit of a show match for those guys that missed ये तो cheating है it was good to be able to see kind of like the cheating old तो नहीं है squad वैसे compete once again. Now they did end up having to go against the likes of like Revo and Aurora, and that was pretty dang tough considering that these guys are the modern monsters of these days. But still, it's good to see the OGs of old still going at it here.
But you know what? Speaking of OGs, we got Young Uncle Joker Galacticos, की our 1 previous HP है, 10 champs, HP. right? When are they going to get that chicken dinner? They're in 9th place so far. 2 eliminations in 40 this कहाँ game. है? They have the 40 bottom right of the circle 40 all to finals में. themselves so far. अभी Let's see टाइटल where नहीं this देख रहे. next 40 one फाइनल्स goes. If मैंने it does लिखा go है. and head on over to that, 40 they could be in a are good in position final. to win this one. Big opportunity. I mean, it is TT Project really who can decide a lot of the pace depending on where they put pressure in this circle. They are playing now with great positioning, a great position rather in this zone. They have flexibility to try and third party basically any engagement that comes through, which makes it so dangerous for all of these teams to fight. For Yangon Galacticos, I feel like stay put for a little bit longer. Allow Arena and Godlike Problem to clash for on TT. Red Force and Tiamba to clash on the north. Maybe you try and be the opposing force on Godel versus ये है ना? क्या हमको देखने के लिए मिल सकती है? Hell no. Fight to pop off, then get in the mix of it. TT Godel versus TT. Battling it out with Godlike Albino, driving right into the mix of this as well. But it looks like we're getting shut down here from side to side as Effect. Last player standing. गया. GG's यार. 10 eliminations. Running over TT Project. Yo, it's Godlike like that. Oh, third party. ये Arena की third party. They put too much Godlike into गई. taking down TT Project in the center and Arena pounce. Yangon Galacticos, this is what I wanted from them. To move in to try and third party. But now teams are going to diverge. Godlike not going down fully there, I think is a big achievement. Playing on with 2, they could still extract value. This is what I like to see though. If you're going to make a crazy push like that, you got to do it full send, full attack, and do not waste time. They were able to take out TT Project pretty quick. That's why we still see at least 2 players up for them. And they got a good amount of eliminations in this game with 10. Oh my god. Mania ने बंदा नॉक किया. Magia taking out Schweppes. Godlike is on a run right now. 2v2 11 now eliminations. between the Arena Dominate कर रही है बे Godlike. Godlike. Galacticos now moving Smile in to try and have the numbers advantage. Nongshin Red Force are taking shots from across the way, from across that road on the northeast side. Tiamba just hunkered down. They're happy to be out of it at the moment because it looks pretty chaotic on that south edge. This is getting wild right now. And you can see, Young Galacticos are starting to push into this circle. The fight has calmed down, though, so they don't have that easy opportunity to go for a third party. But hey, little by little, just try to get some more information. And you can see St. Cloud, he's got his eyes on Mormon right there. Got that nade in hand. That's going to be a long toss here, but he's going to, once you saw him in that buggy, he's like, I think I need to save this nade for now. I mean, Mormon, with the timing on the reverse there, looking pretty good. He saw the player duck back behind the headland. Knew that a nade was probably being pulled, then was the time to go. Rotating around, opening a lot of angles over towards the northeast. Potential for Nongshin Red Force to crack a couple shots, break a tire, could be bad, but safe for now. Godlike could be going do-si-do with Mormon. Spinning around. And Magia has a little bit of trouble. Joker spots him, and it's a flush, leaving just 1 player now for Godlike. But they've got deep into this game, Duke. 6 teams remaining. They've got 11 eliminations. This is a big, big match. They're up in 7th already. Huge match from the side of Godlike. That's going to put them in a great spot to try to reach that top 5. That Joker knock. As Young Galacticos are now like, hey, you know what? It's time for us to get some eliminations. They are controlling that south side. They're still outside the circle, though. They need to find their spot on the way in. Let's see if they can get there. And now Nongshin Red Force are starting to move around. Yangon Galacticos have fully committed to this angle, and if they can get rid of the stragglers, maybe it's going to work out for them here. But Nongshin Red Force, in the meantime, have established a chokehold on the rest of the circle. Yeah, Smile forced to jump out of his vehicle. That's Mormon gone. That is now the top point sponges in this lobby are out. This is a huge opportunity for teams in that mid pack to try and catch up to them. You still got Tiamba there, right? We've been waiting for them to pop off. एडमिनो गया. ओ बच गया एडमिनो. बहुत हल्का बचा है. Let's see what they could do, but like you mentioned, look at that. एडमिनो के ऊपर पूरे वाईजी का वो नजर है, पूरी टीम का नजर है Godlike के ऊपर. खुश आएगा एडमिनो के ऊपर और गया एडमिनो. ये 5 नेड इस पे. गया. ये नेड इसके किल खत्म कर लेता. Take down the last player for Godlike, but they should be so proud of what they've done this game. They are being brutally efficient on those fights. They're on 19 eliminations. Wow. Dukes, that's all but 4 of their points right now. Monster game for them and a huge bounce back. Let's see what Young Galacticos can do though, because now with taking out that player, they can have some real estate to control.
We still got a few big teams here. We got 3 full 4-man squads and a solo on the side of Ida in this match. And let's just see where this is going to go. One last circle shift to go. And then we're going to find out where this end game is going to happen. गाइस प्रेडिक्ट करो कौन जीतेगी Yangon Galacticos Yangon Galacticos के साथ बहुत सही हुए YG के साथ हाइट है बट वो लोग जोन में नहीं है और जोन से आने के लिए उन लोगों को एज थोड़ा थोड़ा छोड़ना पड़ेगा बट फिर भी ये लोग सरवाइव कर सकते हैं अगर आगे आगे What an absolute monster. This guy is only 18 years old and he is one of the best PUBG Mobile players in the world. One of Maxman's favorites, that's for sure. 18 साल And let's see what तो मेरे he can जितना do है here with that P90 in hand. That's the squad wiper. He's going to need it though because there are some monsters in this lobby still here. You got our previous champs, Young Galacticos. You got Tianba, who by all means should have won PMMI, but it was Yangshim Red Force at the last second to smash and take that tournament away from them. So let's see who's just gonna win this one. Rita, oh yeah, and there's Rita all by himself in a shack saying, please guys, leave me alone. All by myself. Don't want to be Rita all by himself. Don't want to right be in now. that shack, I'll tell you that. Yeah, right it's pretty nasty, especially with Nongshim Red Force going down upon you. You're right. I mean, you're right. Hyunbin, one of the most successful breakout performers, one of the most brilliant rookie performances we saw from him. He's looking to try and build that that resume, that CV to become that veteran standard player, and he's well on his way. Rita? Moving up towards Rita. He's got a nade to bobble out. Looks good, but only takes half the HP. In the meantime, Tiamba getting descended upon by Yangon Galacticos off in the distance. XZY will look to try and challenge and doesn't quite get the full gut shot there as Rita getting chipped away, and they will find him down. It's the P90 to do it, of course. That's the gun, I'm telling you. That's the weapon you want here in the end game. How about some nades, though, as that is going to be the big bell to ring to get this fight started. Smile getting knocked there is going to be brutal. Yeah, and Tiamba are going to probably throw all the utility they have to try and take him out. This is so well orchestrated by Nongshim Red Force throughout all of this. They have taken so much ground. They've stopped movements. Tianba being reserved in their compound, now looking to try and break out. Yangon Galacticos, they are now trapped in the middle of Nongshim Red Force, out of the blue zone. They are going to get pushed by it, and I don't think it's going to go well for them, Jukes. I think it's a back-to-back chicken dinner from Nongshim Red Force. They have so much control, and these two teams are fighting each other, like you mentioned, outside of the circle. Yep, here it goes, so easy, and it's feeling like that for them because the blue zone's on their side. It's how many eliminations can Nongshim Red Force get? Yangon Galacticos trying their best to stay alive, but they're 2 players now. Tiamba do still have a chance here, but Eagle is going to step straight to the firing line of the backstop Nongshim Red Force position. Say Cloud trying to stay alive, but TZ's just making it so hard, and they are really, really going to find it difficult to get out of this divot. Has the hovercraft as well. The fade away with the nade, finds another knock, and now Yangon Galacticos only playing as one. Say Cloud spotted out, but has to back off the volley of fire. He'll leave the hovercraft on about a quarter of its HP and is draining quite quickly, but now he's got a huge amount of ridgeline cover. Romeo gets flushed away. Yeah, it's like such a crucial wall. Oh, and those nades are disgusting. Dizzy putting that cover right where it needed to be, and having this hovercraft right towards the end is even better for the side of Nongshim. This is the final circle here, folks. This zone's going to go down to nothing. Nongshim Red Force had the dead center spot, and Hyunbin gets a Molotov onto the side of Tianba. These guys are completely trapped. Yeah, Yangon Galacticos finally going down. Tianba starting to bleed on the low ground too. They are having a real... यार नहीं, end situation में ये net नहीं. Please. Please, मेरा net. Tough time of it. And this high ground angle, TZ has been so operative, so commanding in these off angles over the course of these last circles, and is looking to open another can of war pass. Woo, and that's exactly what's happening, because you got another can of Hyunbin down south with that P90, and that is it. It's a back-to-back chicken dinner. As soon as Yangon Galacticos stepped out of that middle position. Back-to-back 2 chicken dinner. ये गलत इंडिया के 2 टीम्स, पता नहीं यार. पाकिस्तान की एक टीम है सिर्फ 4Thrive. Oh my god, सिचुएशन यार.
6 points, Nongshan Red Force. That's one of the best teams in this lobby. And they were like, why do they only have 6 points? I was like, you just wait and see, right? And I think if you're listening to this, you have seen now, because Nongshan Red Force, 2 chicken dinners back to back. These guys have rocket launched themselves all the way up. Military Island, man, what can you say? It's going well for them. That rotating to get there nice and early on the north coast, that saw them so nice. And it's a lot to do with how Vitality felt in that early game as well. Yeah. Getting stuck into a fight instead of maybe even allowing other teams in the area to hold that bridge for them so that they could establish more of that ground, maybe go deeper into the game. Not that it was a bad match in terms of point scoring for Vitality, but still, maybe a lost opportunity. I think I would be way more critical on Vitality if they just have such an insane amount of points, right? But considering that they are like all the way at the top of the leaderboards, I'll give them a little bit of slack, right? I mean, you're allowed to flex a little bit, right? You pretty much almost secured a top 5 in just a few matches. And yeah, 7, still great game, but you're right. I mean, if they would have made a couple adjustments, considering that it was military, it could have been 20 points for all we know. I feel like when you're at the top of the tables and you're doing so well, I want to be more critical of you in a lot of ways, right? I want to hold you to a higher standard because that's the bar you set for yourself. And if you're not up to it, what are you doing? मैंने कहा था एनएस जीतेगी ये सुल्तान ने भी कहा था पिछले मैच में उस टाइम एनएस जीती अभी वापस जीती. True. Right? Because that one little mistake could be the difference between becoming our champions and 2nd place or even 3rd place, right? Especially the fact that we've seen the smash rule come into effect so critically, you know? So, yeah, you know what? You're right. I mean, I think that you definitely got to take every opportunity you can, no matter how high you're up on the leaderboards, just be relentless no matter what. Yeah, you got to keep that train going. You got to keep that momentum. It is the most important thing, especially when you're talking about shorter game sets, right? Where you're playing 12 matches in your group. The single match is so much more important. When you start to expand, as we will over in the finals too, well, technically at least 14 matches with a smash rule. It is going to get a little bit harder to stay towards the top. But Vitality will hold that accolade. Let's send it down to the stage with Kalaris. Yes, thank you very much. Down on the stage here to get a word from Axel after looking fantastic throughout the day so far. No chicken dinner just yet, but a 3rd, second already here. Very much on the way to being able to qualify. So first question, based on this, PMGO and PMMI, it didn't look as great for you guys, but here so far today, it looks amazing. What has the preparation been like coming to PMWC? Jadi tentunya buat turnamen PMGO atau PMMI itu bukan turnamen yang kurang baik untuk tim Vitality. Tetapi apa sih persiapan kalian dan perbedaannya dari turnamen yang terakhir dengan turnamen kalian di saat ini? Yang pertama, yang pasti dari PMGO dan PMMI kita kayak belajar banyak banget. Kayak banyak hal-hal yang baru kita dapetin bareng. Jadi kita datang ke PMWC dengan 2 मैचेस रह गए गाइस 2 मैचेस और वो भी मेरा मार्क की which will be go very gettable. ये कमेंटेटर 2 in 1 है क्या मतलब 2 in 1 2 कमेंटेटर्स हैं यस वैसे यार एडमिन ने वहां पर क्या 1v2 किया था यार क्या 1v2 किया था उसका समझ ही नहीं है मेरे को किधर गई वो एडमिनों की क्या हुआ भाई स्क्रीन पर रुकी है इन्होंने कहां पर किया था पुश
इनके ऊपर कहाँ है? Where the major danger's coming from now is on the west side. They like to see that. Alpha 7 fans not too happy on that one, but they're still sitting in fourth. You know, pretty dang tough. See where this next zone goes. To try and third party bait. And honestly, wait for that with godlike fight to pop off, then get in the mix of it. TT Project though, they're battling it out with godlike Admino driving right into the mix of this. ये फाइट थे जहाँ पर एडमिनो ने It looks like we're getting shut down here from side to side as Effect shimmying over all of it. An arena pounce. They got teams going with 2. Gotta do it full out. TT Project put amount of quick. That's why we start this game with 10. God, 10. Oh my goodness! In to try and have the numbers of Northeast moment. Galacticos are strong. Chaotic push into this circle. Hey, little by little, just for what's what they should be aiming for. Reassurance. Depends how heavy the circle as it. They're such a dominating team that these guys can get off. It's better than what they did before, and you know, as you get older, the 7 get off the. Well, as here, they can bounce back. One of those fights has got like Ida. Will यहाँ पर जो शॉटगन से मारेगा ना वही chopping block and Alpha 7 maybe after that. Getting eliminated, allowing TT Project to take a central position here, puts TT Project in the driving seat of these hills in terms of stopping control. There are high grounds around यहाँ them. पर जो शॉटगन के साथ जंप करेगा ना Technically have more oversight and things, but they are a linchpin of it. Got to force everyone to fight around the sides, and one of those fights is godlike. Ida will be next on the chopping block, and Alpha 7 maybe, after that. TT Project though steal a point away. Darkin does get flushed out, and now it's Alpha 7 still looking to try and handle it. Revo, will he connect? No, they're not quite finding it, and that's damn it! पीछे से जो एस्पावर ने पारा dishing out death and good luck. क्या ही नसीब था यार. Down, Alpha 7 वालों के ऊपर 1v4 with no force against godlike. 1v4 के 1v3 के है. Obscure is now on the return. Alpha 7. And enough blood was drawn against charitable situation. Nice. No, भाई जल्दी स्टार्ट करो यार मेरा हमारा दिमाग खराब. ये देखते हैं ये क्या बोलते हैं. इस बार अल्फा 7 के 3 प्लेयर्स गिराएंगे, 2 प्लेयर्स. जी हाँ बिल्कुल ठीक है आपने. क्लू अनफॉर्चुनेटली साइड से गुजर तो नहीं पाती. इन 8C पर दिखाई दे रही है. अनफॉर्चुनेटली वो जिनके पास ही हैं. मैंने आपको ये चीज़ ऑफ स्ट्रीम बोली थी आदि के नंबर ऑफ टीम्स जो कि बहुत ज़्यादा एवरेज हैं वो इस ग्रुप में बहुत ज़्यादा है. 6 से 7 टीमें ऐसी हैं जो कि बिल्कुल एवरेज खेलती हैं, बट दे समहाउ मेड देयर वेज इनटू ई-स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप. सो ऑल द टीम्स, लेकिन आप देख लें यहाँ पर टीम H2G है, आपके सामने यहाँ पर टीम हो रहा ई-स्पोर्ट्स है, देन यू हैव यंग एनालिटिकॉस. लेकिन बात करेंगे फाइट्स की. कॉडल की फाइट बनती हुई दिखाई देती है. एक बहुत इंटेंस फाइट इससे पहले हमने देखी हो रहा है स्पोर्ट्स के साथ इनकी हुई, लेकिन इस बार इनके सामने ईडा मौजूद है. ईडा वर्सेस गॉडल में गॉडल डोमिनेट करती हुई दिखाई देती है. जी हाँ, लेकिन एडमिन हो जाएंगे. सामने उनके 2 प्लेयर्स मौजूद थे. क्या हुआ, ये कैसे हुआ? इस बार अल्फा 7 के 3 प्लेयर्स गिराएंगे, 2 प्लेयर्स गिराएंगे. इनफैक्ट दोनों को फिनिश कर दिया जाएगा. कारियो इज आल्सो नॉकड आउट. ये चल क्या रहा है? टीम गॉडल बहुत ही शानदार अंदाज से खेलती हुई दिखाई देती है, और अब ऑब्सक्योर फंस जाएंगे 2 साइड से. एक साइड पे उनके 100 में है, एक साथ ही गॉडल के हाथों बहुत ही शानदार गेम देखने को काफी कंसिस्टेंट होते हुए दिखाई दी. सिर्फ पिछला जो मैच हो रहा है yo I'm big fan. yo thank you man मोहम्मद साहब. फर्स्ट 3 मैचेस उन्होंने बहुत अच्छा खेले. तो ये खैर हमारे पास कुछ 4 ही आई थिंक नाम है जो ज्यादा कंसिस्टेंट हैं, और यहाँ फिर आप समझ लेंगे टॉप ऑफ द टेबल हमें दिखाई दे जाते हैं. बट अभी भी आई थिंक काफ़ी है ऐसा गैप. काफ़ी सारी टीम्स हैं जो कि इस ग्रुप की मेजॉरिटी है, जिनको अपने आप को प्रूव करना है, जिनको पॉइंट्स में खुद को लाना है, ताकि थोड़ा और सस्पेंस, थोड़ा और मज़ा इस ग्रुप में कंपटीशन का वो हमें देखने को मिले. बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा. पोर्टल अभी
नॉन्गशिम रेड फोर्स बैक टू बैक 2 अदद चिकन डिनर्स निकालना इस बात का बहुत बड़ा सबूत है। इसके अलावा हाँ, कोड लाइट ने 11 एलिमिनेशंस शॉर्ट ऑफ आप कह लें कि पिछले 3 गेम्स के बनिस्बत ये वाला गेम थोड़ा ज़्यादा बेहतर रहा है। गॉड लाइक की स्पोर्ट्स उनको दाद देना बनती ज़रूर है। 14 पॉइंट्स उन्होंने कुल मिलाकर निकाले, सेकंड हाईएस्ट, इनफैक्ट हाईएस्ट एलिमिनेशन पॉइंट्स इस पूरे लॉबी के अंदर इस मैच के अंदर निकाले उन्होंने। त्यांबा का भी मैच अच्छा रहा, विटालिटी कंसिस्टेंट रह पा रहे हैं। 8 पॉइंट्स इस मैच के एलिमिनेशंस की मद में सिर्फ और सिर्फ उन्होंने इकट्ठे किए हैं। S2G स्पोर्ट्स उतना बेहतर नहीं है, इससे कदरे बेहतर परफॉर्मेंस उनको दिखाना होगी। बट खैर गॉड लाइक की स्पोर्ट्स उनकी डोमिनेशन जो इस मैच में रही है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर वापस से दोहराई जा रही है। और बहुत अच्छा किलिंग स्प्री था इस मैच के अंदर। बड़े बड़े टीमों को चैलेंज किया गया गॉड लाइक स्पोर्ट्स की तरफ से, जहां पर अल्फा 7 के प्लेयर्स को बेशतर खिलाड़ियों को एलिमिनेट किया, बहुत अच्छे तरीके से एलिमिनेट किया। फिर उसके बाद यांगोन गैलेक्टिकोस से लेकिन जब उनकी फाइट बनती है उसमें यांगोन गैलेक्टिकोस थोड़ा ज्यादा हावी आ जाती है। हाँ बिल्कुल। और खैर जब आई थिंक आखिरी जब फाइट में भी देखने को मिल रही थी तो इनफैक्ट यहाँ पर प्रोबेबली नॉन्गशिम रेड फोर्स आपको ज़्यादा एक जो है वो स्ट्रॉन्ग कंटेंडर दिखाई दे रहा था, जो कि एंड पे ऐसा हुआ भी। और जिस तरह से टीम यांगोन गैलेक्टिकोस थी एक जगह पर, लेकिन वो जगह अनफॉर्चुनेटली वो हमें सैंडविच होते हुए दिखाई दी। ऑन वन साइड वॉज टीम त्यांबा, ऑन द अदर साइड वॉज टीम नॉन्गशिम, और फिर दोनों ने सैंडविच करके टीम यांगोन गैलेक्टिकोस को इस मैच से एलिमिनेट किया। सो यांगोन गैलेक्टिकोस क्वाइट अनफॉर्चुनेट कि वो इस मैच में टॉप 3 तक आपको आते हुए दिखाई ज़रूर दिए, लेकिन स्टिल वो जो आई थिंक अच्छे आदाद हैं, वो जो ज़्यादा एक पॉइंट्स का नंबर है अभी भी टीम को हासिल करना है, और उसका हमें इंतजार रहेगा कि टीम यांगोन गैलेक्टिकोस आर डिफेंडिंग चैंपियंस। बिकॉज बार बार आप जब बात करेंगे इस टीम की, एक ही चीज़ आपके जहन में आएगी कि ये डिफेंडिंग चैंपियंस हैं। सो कोई और टीम अच्छा खेलती है नहीं खेलती वो बात की बात है, बट इस ग्रुप से खास तौर पे यांगोन गैलेक्टिकोस उनसे आपकी ज़्यादा उम्मीदें हैं। टीम अल्फा 7 उनसे आपकी ज़्यादा उम्मीदें हैं। दोनों ही वर्ल्ड कप चैंपियंस हैं अगर आप बाकी एस टीयर को निकाल भी यहाँ पर दें। उसके अलावा टीम S2D ऑब्वियसली थी, नाम है वो जो PMGC चैंपियन से रोस्टर में चेंजेस हैं, ज़ाहिर ये फ़र्क है जो कि आपको दिखाई दे जाता है वहाँ पर। लेकिन बैक टू द पॉइंट आई थिंक कि हमारे पास क्योंकि यांगोन गैलेक्टिकोस उन्होंने भी 4 मैचेस खेल लिए हैं, स्टिल उस तरह से आपको चिकन डिनर आता हुआ नहीं दिखाई दिया। एक एग्रेसिव आई थिंक जो यांगोन गैलेक्टिकोस है वो आपको आते हुए नहीं दिखाई दी। यहाँ पर इस तरह से स्टार्ट में दिन बात कर रहे थे कि लास्ट टाइम अराउंड इनके चिकन डिनर्स बहुत ज़्यादा थे जब इन्होंने विन किया था, तो अभी तक वो चीज़ आपको नहीं दिखाई दी। लेकिन फिलहाल हमारे सामने टीम स्टैट्स आए हैं गॉडल के, जिनके आई थिंक पिछले मैच के आदाद हैं। 11 एलिमिनेशन उन्होंने निकाले थे। डैमेज अच्छा है प्लेयर्स का, 280 एडमिनो का है, 357 सोमे का है। उसके अलावा मानिया का 718 का डैमेज है। एस पावर का भी 569 का डैमेज रहा पिछले मैच में 4 एलिमिनेशन के साथ। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। और गॉडल पिछले मैच के अंदर काफ़ी एग्रेसिव रहे हैं, जिस तरह से आपने स्टैट्स बताए हैं। और स्टैट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं ख़वातीन हज़रात। लेकिन अगले मैचेस 2 बिल्कुल मुख्तलिफ आप कह लें टेरेन है, बिल्कुल मुख्तलिफ ही स्ट्रैटजीज़ हैं रोंडो और एंगल की बनस्बत। एंड लेट्स सी कि क्या कोई डाइवर्सिफाई इवेंट हमें मजीद होता दिखाई देगा या वही रेपुटेशन के अंदर हमें टीमें परफॉर्म करती देखने को मिलेंगी। अभी भी आप देखें कि अल्फा 7 उस तरह से अल्फा 7 नहीं बन पाई है। हो रहा स्पोर्ट्स आई वुड से कि हाँ उन्होंने थोड़ा फिर बेहतर खेला है, आज के पूरे दिन में टॉप 3 के अंदर मौजूद हैं। लेकिन अल्फा 7 भी टॉप 5 में हैं, बट वो बड़े नंबर्स के अंदर अल्फा 7 अभी भी कुछ बड़ा नहीं कर पाई है। दूसरा नाम जो मेरे जहन में आ रहा है वो टीम S2G स्पोर्ट्स का है। इसके अलावा आई थिंक सो बाकी टीमें थोड़ी बहुत जान मारने की ज़रूरत है उनको भी, लेकिन S2G उनका कमबैक अभी के लिए बाकी रहेगा। त्यांबा को एक बड़ा मैच खेलना है, उनके लिए बाकी रहेगा। त्यांबा पिछले मैच के अंदर एंड सर्कल्स का हिस्सा बने ज़रूर, लेकिन कंफर्मेशन नहीं कर पाए, नॉन्गशिम रेड फोर्स का सामना नहीं कर पाते हैं। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द नेक्स्ट फ्यू गेम्स। मेरा मार है काफ़ी कुछ चीज़ें तब्दील हो सकती हैं। आज का दिन जब मुकम्मल होगा, पाया तकमील तक जाएगा, तो 50% कंपटीशन आप कह सकते हैं कि ग्रुप बी का ग्रुप स्टेज का ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद सर्वाइवल स्टेज के लिए 6 से लेकर 13वें तक ओवरऑल स्टैंडिंग्स की बुनियाद पर टीमें आपको क्वालिफाई करती देखने को मिलेंगी। 5 टीमें टॉप की ऐसी होंगी #1 #5 जो ग्रैंड फाइनल्स में जाएंगी, और 4Thrive जहां पर ऑलरेडी ग्रुप ए की 5 टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं, उनके साथ आपको लड़ती देखने को मिलेंगी। बट खैर द ईजियर राउट इज़ कि आप यहीं से टॉप 5 आकर ग्रैंड फाइनल्स में अपनी क्वालिफिकेशन पक्की बनाएं, ताकि आप मीनवाइल जो आपके फ्री डेज मिल रहे हैं आप उसमें थोड़ा सा रिलैक्स भी करें। ऑब्वियसली रिलैक्सेशन भी बहुत ज़रूरी होती है। हर टाइम आप अगर उसी मोमेंटम में रहेंगे खेलने के तो आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं मेंटली, लेकिन आपके पास प्रिपरेशन का टाइम होगा, बाकी टीम्स को समझने का टाइम होगा, बाकी स्ट्रैटेजीज को समझने का टाइम होगा। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द नेक्स्ट फ्यू गेम्स।
पहला दिन है अभी ग्रुप बी हो का। गया पीएल, कल इतना के दिन खामोश में क्यों हो काफी गया कुछ चीजें, अचानक काफी तू? कुछ कमबैक्स आएंगे, यार लेकिन थक अभी गया अगर आप बातें देखें कर तो टोटल टॉप 5 भैंस की टंग मैंने कहा शायद नेट गया तेरे। पांचवें पर नहीं, अल्फा 7 नहीं। है, 25 पॉइंट्स के ऊपर तो अभी तू भी फिलहाल भैंस की Alpha टंग 7 अरबियों की मौजूद तरह है। चिल्ला रहा था। नीचे रहती 3 टीमें, अबे यांगन मुझसे ज्यादा गैलेक्टिकोस, बातें त्याम्बा, होती नहीं और गॉडलाइक, मैंने छठा, इतनी ज्यादा सातवां, बातें कर ली ना, आठवां मेरा पायदान सर पे दर्द 22 हो गया। पॉइंट्स के ऊपर है, फिर 21 पॉइंट्स के यार, ऊपर गेम 2 क्रैश नाम में आया है। है। तो आई वुड से कि कंपटीशन #5 के लिए अगर आप देखें तो काफी हद तक अभी भी बहुत ज्यादा है, कुछ भी हो सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि कल के दिन भी आखिरी मैच तक कितनी दे कुछ देगा टीमें PL? होंगी जो शायद किसमें? क्वालिफिकेशन अपनी पक्की कर लें इसमें ग्रैंड तुम्हारे फाइनल्स में। भाई मेरे वाले में तो अभी यकीनन, बहुत टाइम और है, बिल्कुल 2 आपने घंटे रहते चार ही हैं। नाम है आई थिंक जो ज्यादा अबे कंसिस्टेंट है। भैंस इसके अलावा की शायद टंग। तो चाहे पूरा कोई करेगा भी 2 टीम घंटे हो, क्या? चाहे वो टीम अल्फा 7 हाँ, है, क्यों चाहे नहीं वो मेरे भाई? इसके अलावा आप यंगन गैलेक्टिकोस मैंने की बात खेलना है, करें, सच में देखना पहली है, बार मजा आ रहा है। कि उन्होंने जो पिछले मैचेस खेले हैं, सो वो उसके बाद ऐसे गेम का कुछ मूड है? ज्यादा बड़ा नंबर निकाल ये फ्रेश होने जाएगा? नहीं, फ्रेश क्या होने नाम है? जाऊंगा मैं, पहले बाहर भी बात घूमने की गई जाऊंगा थी, मेरे भाई वाइटैलिटी हमें बस। देखने को मिली कंसिस्टेंट होते हुए, हमने देखा टीम ई फिर आऊंगा कोई डोमिनेशन 11 बजे। पूरा को देखा, और उसके बाद अब जाके टीम नॉन्गशिम रेड फोर्स जिन्होंने थर्ड मैच से अपनी जो पेस है वो काफी ज्यादा कर लिया। हालांकि उनका भी स्टार्ट जो अच्छा नहीं था, आई रिमेंबर कर लिया, आई थिंक फर्स्ट मैच में शायद कोई भी पॉइंट नहीं था, 0 पॉइंट्स उन्होंने स्टार्ट किया था। लेकिन उसके बाद जब वो स्टार्ट आया है, इरेंगल की जो डोमिनेशन आई है, 2 बैक टू बैक चिकन डिनर्स आए हैं, तो अब आपको टीम नॉन्गशिम रेड फोर्स उन टॉप 5 टीम्स में जो है शुमार होते हुए दिखाई देती है। तो ये जहाँ पे खैर इन टीम्स के लिए अच्छा है, नो डाउट। बाकी जो टीम्स है उनके लिए एक अलार्मिंग साइन भी है कि आपने फिर अपने लिए क्या किया है। यार मैंने जल्दी से इस गेम के साथ करना सिर्फ है यार, इंतजार करने के लिए यहाँ पर आज के 2 मैचेस मुझसे भी अभी इंतजार नहीं होती है 2 ना। मैचेस में कल के दिन के लिए इतने पॉइंट्स एडअप करेंगे कि आप भी हमें टॉप 5 के अंदर जो है कंफर्टेबली रिलाय यहाँ पे स्टे करते हुए, आगे क्वालिफाई करते हुए यहाँ से 297 करवाते हुए memberships दिखाई हो दी गए जाए। सो आई थिंक अभी भी हमारे पास, क्योंकि एक स्लॉट की आपने बात की, वुड लाइक टू सी कि हमारे पास थोड़ा और ज़रा पॉइंट्स बढ़े, ताकि हमने जिस तरह से ग्रुप ए का कंपटीशन देखा था कि वहाँ पे तो खैर एक मैच के बाद नंबर 5 टॉप 5 में जब वो टीम्स ऊपर नीचे हो रही होती थी, सो यहाँ पर भी हमें वही चीज़ है वो देखने को मिले। कम से कम 2 से 3 जो यहाँ पर हैं 5 में से जो स्लॉट्स हैं, हमारे स्पॉट्स हैं, वो एटलीस्ट यहाँ पर शफल होते रहे। अल्फा 7 कभी ऊपर जाए, कहीं पर हमें टीम यंगन गैलेक्टिकोस ऊपर जाते हुए दिखाई दे, कहीं पर बाकी जो टीम्स हैं वो भी एक बड़ा मैच खेल कर, लेट से मिरामार के 2 मैच अच्छे खेल कर अपना जो दिन का इख्तिताम है वो टॉप 5 में करे, ताकि फिर जो है जब ये टीम्स नीचे आएंगी टॉप 5 से, तो इनको हम कल के दिन पे थोड़ा स्ट्रगल करता हुआ देखें, थोड़ा जान मारते हुए देखें, थोड़ा चेंज ऑफ प्लान देखें, थोड़ा सा यहाँ पे परेशानी इनके चेहरों पे देखें। अभी तो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ आई थिंक वो जिस तरह से टीम ई अरीना ने स्टार्ट किया था, ऐसा लग रहा था जस्ट इट विल बी एक्चुअली अ वन साइडेड डोमिनेशन। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा पोर्टल, एंड आई एम क्वाइट हैप्पी कि विटालिटी ने काफ़ी स्टेप अप किया है, क्योंकि ई अरीना वाकई ऐसा लगा था कि शायद ये वन साइडेड एक कंपटीशन होने वाला है आज के दिन। एंड ई अरीना अभी अगर आप देखें उनकी पोजीशन ओवरऑल स्टैंडिंग्स के ऊपर, तो वो 56 पॉइंट सेकंड स्पॉट पर आ चुके हैं। विटालिटी पहले नंबर पर खेलती आपको देखने को मिल रही है, पॉइंट्स में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, लेकिन आई रियली वांट होराई स्पोर्ट्स टू स्टेप अप। लेट्स गो मैन, स्टार्ट हो गया। टीम है वो आपस में लड़ती है, आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। 59 पॉइंट्स फर्स्ट स्पॉट, सेकंड स्पॉट 56 पॉइंट्स, फिर तीसरा नंबर होराई स्पोर्ट्स तीसरे पायदान पर है 41 पॉइंट्स के ऊपर। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है, एंड आई रियली वांट कि होराई स्पोर्ट्स इस सारे डिफरेंस को मजीद नैरो डाउन करती है, आपको इन मिरामार के मैचेस के बाद देखने को मिले। लेकिन मिरामार कहा जाता था एक टाइम के ऊपर कि ब्राजीलियन टीम्स बहुत शानदार खेलती हैं। अब देखना यह है कि क्या ये बात सच साबित होगी, अल्फा 7 क्या परफॉर्म कर पाएगी। वहीं पर यांगन गैलेक्टिकोस मिरामार बहुत अच्छा खेलती है, होराई स्पोर्ट्स दे हैव द कैपेबिलिटी एज वेल। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन दिस गेम। कोई प्रेडिक्शंस अगर आप लोग चैट में करना चाहें तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, चैट हम लोग देख रहे होते हैं, आप लोग जो मस्तियाँ करते हैं चैट में वो हम देखकर मुस्कुरा भी रहे होते हैं अक्सर औकात बीच में। बट खैर मैच शुरू हो चुका है। सर्कल्स की अगर बात करें आज के दिन, आई वुड से कि रैंगल के 2 मैचेस वो मिलिट्री बेस पर हुए हैं। मिरामार के सर्कल अगर आप ग्रुप ए से कंपेयर करें, ग्रुप ए के सर्कल्स की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा रहे हैं, टफ रहे हैं। लेट्स सी कि ग्रुप बी के लिए सर्कल्स कौन सा तोहफा लेकर आते हैं। बट खैर अभी के लिए प्लेन पाथ थोड़ा सा कॉर्नर्ड है टुवर्ड्स दी डाउन साउदर्न एंड। अगर आपको वाटर ट्रीटमेंट एल्पोजो चलें आप जा सकते हैं, लेकिन एल्पोजो से पार क्रेटर फील्ड्स, ला कोब्रेरिया, तोरे अहमूदा टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्टर्न साइड जो फार नॉर्थ ईस्टर्न एंड्स हैं, आपके वहाँ तक जाना थोड़ा मुश्किल है यकीनन। और काफ़ी टीम्स हैं जिनको अभी के लिए अपने आप को जो है वो अपने ड्रॉप स्पॉट्स तक लेकर जाने के लिए जो मुशक्कत है वो करना पड़ेगी। और इनफैक्ट इस मिरामार के मैच के लिए ख़ास तौर पे एक फाइट थी, एक ड्रॉप क्लैश था जो कि शायद हमें देखने को मिल पाता अगर प्लेन लाइन जो है वो ला कोब्रेरिया से आगे की तरफ जाती या समहाउ मिनास देल सुर से ला कोब्रेरिया की तरफ जाती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो क्लैश आपको नहीं देखने को मिल पाएगा। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ऑब्वियसली टीम गॉडल वर्सेस टीम होरा ई स्पोर्ट्स, क्योंकि ये जो क्लैश है
ये एक्सपेक्टेड था प्लेयर्स का, हमने जो है वो कुछ देखा भी एक कि जिस तरह से आपने वीडियो एक छोटी सी अगर रील देखी हो इंस्टाग्राम पे, तो इनसे पूछा गया था एक्चुअली कि आप लोगों का जो ड्रॉप स्पॉट है वो क्या है, तो गॉर्डल ने भी कहा लाक ऑफ एरिया, और टीम होरा ने भी बोला कि हम लोग भी यहीं पर जाएंगे। सो दोनों को जब बताया गया कि दूसरी टीम यहाँ पर आ रही है, तो तब भी उन्होंने कहा हम फिर भी फाइट करने के लिए जाएंगे। सो आई थिंक ये काफ़ी एक्सपेक्टेड था कि चले हमें फाइट देखने को मिलती, लेकिन समहाउ अभी के लिए टीम होरा जो कि #3 पर है वो इस मैच में अपने जो ड्रॉप स्पॉट है उस तक जाएंगे। गॉर्डल उनको हमने देखा है कि वो थोड़ा दिखाई दिए बिल्कुल लॉस्ट यून्स के बैक साइड पे, और लॉस्ट यून्स जाना यकीनन एक अच्छा डिसीजन अभी के लिए दिखाई देता है टीम गॉर्डल का, बिकॉज लाक ऑफ एरिया फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत दूर था, सेकेंडली लॉस्ट यून्स वहाँ पर कोई टीम ऐसा आपको दिखाई नहीं दे रही है, टीम के पास एक बड़ी सिटी है प्ले करने के लिए। पिछला मैच टीम का डिसेंट गया, तो आई थिंक अगर कोई टीम आ भी जाती तो तब भी वो अपने पिछले मैच के मोमेंटम पर रिलाई करते हुए ये रिस्क ले सकते थे कि फाइट में जाया जाता। तो समहाउ आई थिंक दूसरी ये दोनों चीज़ें जब आप ऐड ऑन करते हो तो तब टीम गॉर्डल का डिसीजन थोड़ा आपको जो है वो सही यहाँ पर दिखाई दे जाता है। लेकिन फिलहाल टीम अल्फा 7 ऑन आवर स्क्रीन्स, ऑब्वियसली PMWC 2024 चैम्पियंस, PMGC 2025 चैम्पियंस, काफ़ी बड़े बड़े टाइटल्स इस टीम के पास हैं, लेकिन अभी के लिए टॉप 5 में बिल्कुल एज पर हैं, और पॉइंट्स इनको भी थोड़े ज़्यादा चाहिए। इनको भी मिरामार के किसी एक मैच में एटलीस्ट एक बड़ा जो मैच है, एक कुछ ज़्यादा जो पॉइंट्स हैं, या मोस्ट इंपॉर्टेंटली लेट्स से आपको जो वेरे सेकंड डिनर है वो चाहिए होगा, ताकि आप थोड़ा कंफर्टेबल हो पाएँ, ताकि आप भी नॉन्गचिम रेड फोर्स को कैच कर पाएँ, ताकि आप भी यहाँ कल के दिन का जब आगाज़ करें तो सब हम बात कर रहे हो कि ये सब टीम अल्फा 7 जो है इस #1 की रेस में जब आपको दिखाई दे रही है। लेकिन अभी के लिए जो एक रेस मैं देख पा रहा हूँ वो शायद चलेगी टीम ई अरीना और टीम ईडा के प्लेयर्स के दरमियान, क्योंकि ई अरीना के खिलाड़ी गाड़ी घुमा कर ला रहे ऊपर के जाने को, नीचे ईडा मौजूद है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं पोर्टल, एंड ई अरीना मार खाएगी यहाँ पर के एक ही प्लेयर, इनफैक्ट नहीं बाकी भी खिलाड़ी यहीं पर ही आसपास मौजूद हैं, एंड एक अर्ली ऑन फाइट को तरजीह देते ई अरीना के प्लेयर। स्पॉट हो गया राठा। ईडा ई स्पोर्ट्स वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है इस फाइट के अंदर, लेकिन हाँ जब फाइट मुसल्लत आपके ऊपर कर दी जाए तो फिर मजबूरी बन जाता है फाइट लेना, चाहे आप अपनी मर्जी से लें या आप ना चाहें वो फाइट के अंदर जाना। लेकिन ईडा ई स्पोर्ट्स जिस तरह से वो थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, 21 पॉइंट्स में है ये मैच। वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट कि ये मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है। आखिरी 2 गेम्स इस ग्रुप के लिए आज के दिन के बड़े मायने खेज बन सकते हैं। अगर आप देखें #6 ऑनवर्ड्स, #5 ऑनवर्ड्स जितनी भी टीमें हैं अंटिल #10 #11, इनके लिए बड़ा ज़रूरी है इन 2 मैचेस को यूटिलाइज़ करना, ताकि आप कल के दिन जो प्रेशर होगा, एक अनसर्टेनिटी होगी, उसके चलते साथ आप टॉप 5 के करीब ही रहें और चंद एक पॉइंट्स के डिफरेंस पर रहें टॉप 5 से, ताकि एक आधा अच्छा मैच खेलकर आप कुछ ना कुछ हासिल ज़रूर करें कल के दिन। लेकिन खैर होरा ई स्पोर्ट्स ऑन योर स्क्रीन ख़वातीनो हज़रात, एंड होरा ई स्पोर्ट्स वो लाको ब्रेरिया तक अपने कुछ व्हीकल्स लेकर आ पहुँचे हैं। गॉड लाइक उन्होंने अपना ड्रॉप लोकेशन चेंज किया। प्लेन पाथ भी कुछ इस तरह का था कि लाको ब्रेरिया तक आप व्हीकल लेकर ही जा सकते थे, और व्हीकल्स लेकर ड्रॉप क्लैश के अंदर जाना ये चीज़ आई वुड से कि नहीं होनी चाहिए। गॉड लाइक ने अच्छा किया डिसीजन। एरंगल के अंदर आज 2 मैचेस के अंदर शायद हमने उनका ड्रॉप क्लैश देखा था, जिसकी जद में आकर काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा गॉड लाइक को, लेकिन उसके बाद आई थिंक उन्होंने कुछ सीख हासिल की है उस चीज़ से। मिरामार के अंदर अबैंडन किया, जिस तरह से आपने पहले भी मेंशन किया कि लॉस ल्यूनिस वो उतरे हैं, वहाँ पर कोई भी टीम मौजूद नहीं है, तो ये एक अच्छा डिसीजन है ऑल इन ऑल। वहीं पर नॉन्गचिम रेड फोर्स कंसिस्टेंट फ्रॉम द प्रीवियस 2 गेम्स, 2 द चिकन डिनर्स बैक टू बैक हासिल किए हैं, एंड नॉन्गचिम रेड फोर्स अभी के लिए आपको 4थे नंबर पर देखने को मिल रहे हैं। आज के दिन का जब आगाज़ किया तो पहले 2 मैचेस नॉन्गचिम रेड फोर्स के बहुत ही ज़्यादा बुरे गए, बहुत ज़्यादा बुरे गए, इतने बुरे गए कि नीचे #16 #15 #14 पर कहीं ना कहीं मौजूद थे। वहाँ से उठकर छलांग लगाई, 2 चिकन डिनर्स हासिल किए, और अब टॉप 3 को कम्पीट करने जा रहे हैं इस मैच में। ओ तो आड़ी खैर हो, लेकिन खैर त्यांबा के प्लेयर्स काफ़ी बड़ी छलांग मारी है घोड़े ने, आई वुड से कि, और ई स्पोर्ट्स के अंदर आपको घोड़ों का शुमार भी होता देखने को मिल रहा है। अच्छी चीज़ है कि डिफरेंट चीज़ें ऐड ऑन की जाती हैं ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स के लिए, वही आपको एक ही चीज़ नहीं देखने को मिलती। जब स्टार्टिंग में ओवरक्राफ्ट नहीं होता था, काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें, काफ़ी व्हीकल्स नहीं होती थी, सैनहॉक के अंदर व्हीकल्स आपको नहीं मिलती होती थी बैक इन द अर्ली डेज, तो अब तो खैर सैनहॉक की स्पोर्ट्स से निकाल दिया जा चुका है। लेकिन खैर पोर्टल, कोई प्रेडिक्शन आपकी तरफ से? आई थिंक इस मैच के लिए थोड़ा मुश्किल है अभी के लिए कि मैं नीचे वाली जो कुछ टीम है उनमें से किसी एक नाम को पिक करूं, लेकिन स्टिल क्योंकि ऊपर वाली आई थिंक जो टीम्स हैं उनके पास काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, तो मैं एक नाम को चले जवाब के लिए पिक कर लेता हूं, और आई विल से मे बी टीम वुल्व्स। हालांकि मुझे पता है कि बिल्कुल नंबर 15 पर वो स्टैंड कर रहे हैं, लेकिन मिरामार है, चेंज ऑफ मैप है,
चेंज ऑफ टैक्टिक्स हो सकता है। सो प्रोबेबली टीम वुल्व्स, मुझे लगता है कि एक टीम जो कि नीचे से कुछ अच्छे पॉइंट्स इस मैच में या विनर से कंटेंडर शायद कर पाए। पूर्ण एक बार रिपीट करिएगा किस टीम को आपने पिक किया? टीटी प्रोजेक्ट #15 वुल्व्स, नाइस, एक अच्छी पिक है वुल्व्स की। एंड वुल्व्स का आई थिंक सो ये पहला ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप है, राइट? इससे पहले हमें ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप के अंदर वुल्व्स नहीं दिखाई दी। एम आई राइट और रॉन्ग? आई थिंक सो, कंफर्मेशन मुझे भी अभी नहीं है, लेकिन आई थिंक इनका फर्स्ट ही है वर्ल्ड कप। हाँ, वुल्व्स का पहला है, हसलर्स क्रू आई थिंक सो उनका पहला ही स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप है। वैसे ही और बहुत सारे नाम है, डोपनेस का ये पहला ही स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप है, लेकिन वुल्व्स का आपने नाम लिया, वुल्व्स की ही फाइट आपको शुरू होती देखने को मिलती है। एंड सामने टीटी प्रोजेक्ट के प्लेयर्स आ चुके हैं। एंड वुल्व्स अभी फिलहाल के लिए तो कोई खिलाड़ी अपना गवाया नहीं है, लेकिन टीटी प्रोजेक्ट की साइड के ऊपर भी कोई भी एलिमिनेशन पॉइंट भी हासिल नहीं कर पाए वुल्व्स के प्लेयर। अभी भी आपस में एक 1v1 चलता देखने को मिलेगा, जिसकी जद में आकर नियोज को पकड़ लिया जाए। नियोज इनफैक्ट पकड़ते हैं, वुल्व्स के प्लेयर नॉकआउट कर दिए जा चुके हैं और बैकयार्ड से वुल्व्स के प्लेयर्स आएंगे। बाकी के मजीद रिडेम्पशन या रिटालिएशन आप कह लें कि वो हासिल कर ली जा चुकी है वुल्व्स की साइड से और एलिमिनेट कर दिया जा चुका है। पहला प्लेयर जो एलिमिनेट किया गया है वो स्लॉनिक के खाते में, ये इनफैक्ट एलिमिनेशन पॉइंट दर्ज, इनफैक्ट स्लॉनिक होंगे जो पहले प्लेयर एलिमिनेट होते हैं। टीटी प्रोजेक्ट ऑल इन ऑल यहाँ पर आए, स्लैमिंग दिया सॉर्ट ऑफ, अनफॉर्चुनेटली अब उनके आखिरी ही प्लेयर सिर्फ और सिर्फ बाकी रह जाएंगे। एंड वुल्व्स लीजिए खवातीन और हज़रात, एक अच्छी प्रेडिक्शन आई वुड से पोर्टल ने की जरूर, जो कि इस फाइट के लिए तो काम जरूर कर जाती है, बट लेट्स सी कि क्या वुल्व्स इस मैच में, इस फाइट के बाद जो मोमेंटम उनको हासिल हुआ है पोर्टल की बात पर पूरा उतर आ पाएंगे चिकन डिनर हासिल करके। जी हाँ, इंतजार रहेगा मुझे भी, बिकॉज ऑब्वियसली टीम वुल्व्स आगाज अच्छा किया उन्होंने राइट आफ्टर द प्रेडिक्शन के, फाइट अच्छी निकाल ली है। बिकॉज एक टाइम पे आई थिंक थोड़ा डगमगाए जरूर टीम वुल्व्स के प्लेयर्स, और जिस तरह से टीम टीटी प्रोजेक्ट ने फाइट बैक किया जब उन्होंने पहला वो नॉकआउट निकाला। स्लॉनिक वो प्लेयर शायद बने जिनको एलिमिनेट किया गया, तो एक लम्हे के लिए आपको जो फाइट है वो टीटी प्रोजेक्ट के पास जाते हुए दिखाई दी, लेकिन खैर वहां से निकलकर इस फाइट की तरफ भी आएंगे। और टीम ETSH जो कि अभी तक के लिए कुछ ज़्यादा बेहतर खेली नहीं है, टीम ने 4 मैच में सिर्फ 14 ही पॉइंट्स निकाले हैं, तकरीबन आपको 3.25 साढ़े 3 की एवरेज है वो दिखाई दी जाती है, तो ये कुछ ज़्यादा अच्छे पॉइंट्स नहीं है। लेकिन वाइटैलिटी जो कि एक बड़ा अच्छा स्क्वाड है, जो कि टेबल डोमिनेटर्स हैं, टेबल टॉपर्स हैं, उनको यहाँ पर चैलेंज किया जा रहा है, उनके 2 खिलाड़ी नॉकआउट करना आई थिंक अभी के लिए एक अच्छी चीज़ हो सकती थी टीम ETSH के प्लेयर्स के लिए कि उसको कंफर्मेशन में भी तब्दील करते, लेकिन समहाउ उसको डिनाई किया गया, बट फिर से वो ग्रेनेड गया, नॉकआउट कंफर्मेशन में तब्दील किया गया टीम वाइटैलिटी की तरफ से, और एक जानिब नॉकआउट से एक जानिब कंफर्मेशन। द डिफरेंस ऑब्वियसली इज क्वाइट क्लियर कि टीम वाइटैलिटी जो है वो अपने नॉकआउट्स को जाने नहीं दे रही है, और टीम ETSH ना सिर्फ कि अपने नॉकआउट्स को यहाँ पर कंफर्म नहीं कर पा रही, बल्कि जो उनका प्लेयर नॉकआउट है वो एक्चुअली बिल्कुल ओपोनेंट्स ही की साइड पर मौजूद है। तो ये जो कि यहाँ पर अभी के लिए हाई ग्राउंड लो ग्राउंड ओवरऑल नॉकआउट्स का डिफरेंस क्लियरली टीम वाइटैलिटी फाइट जीतेगी, और ऐसा ही हो जाता है, वाइटैलिटी विन करेगी। एक और इजी फाइट इस टीम के लिए, और ऐसे 4 पॉइंट्स जो कि मजीद इनकी लीड को ऊपर लेकर जाएंगे, मजीद बाकी टीम्स को फ्रस्ट्रेट करेंगे कि अब हमने आखिर करना क्या है इस लॉबी के अंदर। बिकॉज पहले स्टार्ट में टीम अरीना थी, उसके बाद टीम होरा स्पोर्ट्स हमें दिखाई दे रही थी, और उसके बाद जब टीम वाइटैलिटी ऑब्वियसली पहले ही मैच के अंदर आपको टॉप 3 में आते हुए दिखाई दी, और ऑनवर्ड्स अब उनके कंसिस्टेंसी की रीत जब बनती चली जा रही है, तो फिर बाकी यकीनन जो है वो सर पकड़ कर बैठ चुके हैं कि आखिर हमें जो है वो टॉप 5 में आना कैसे होगा। सो टीम वाइटैलिटी द डोमिनेटर सो फार, आई थिंक द फर्स्ट टीम, इनफैक्ट सेकंड टीम जिन्होंने अभी तक के लिए 4 एलिमिनेशन पॉइंट्स निकाले। थोड़ी देर पहले टीम वुल्व्स ने भी 4 एलिमिनेशन पॉइंट्स कंफर्म किए थे। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा पोर्टल। एंड वाइटैलिटी ETSH लग ऐसे रहा था कि जैसे टीटी प्रोजेक्ट की फाइट में लगा कि शायद टीटी प्रोजेक्ट जीत कर चली जाएगी, ETSH लगा कि शायद जब उन्होंने 2 अदद खिलाड़ी कुछ गिराए हैं वाइटैलिटी की साइड के ऊपर तो शायद फाइट उनके खाते में दर्ज हो सकती है, बट ऐसा ना हो पाया। ETSH इस मैच से बाहर कर दी गई है। वाइटैलिटी बीइंग वंस अगेन वेरी कंसिस्टेंट विद देयर फाइट्स एंड एलिमिनेशन पॉइंट्स। आगाज़ में 4 अच्छे एलिमिनेशन पॉइंट्स उठाए हैं, लेकिन पिछले मैच वाली गलती दोबारा दोहरानी नहीं है बिल्कुल वाइटैलिटी को। वाइटैलिटी ने पिछले मैच में 8 पॉइंट्स निकाले एलिमिनेशंस के, लेकिन आगाज़ में ही जल्दी एलिमिनेट हो गए थे। बेशक अच्छे एलिमिनेशन पॉइंट्स निकाल कर एलिमिनेट हुए, लेकिन गलती कर दी ओवर एग्रेसिव होकर पिछले गेम में। अब यहाँ पर जो 4 पॉइंट्स उनके पास आए हैं उनको इस्तेमाल कर इस मैच के अंदर बैलेंस पॉइंट्स प्लेसमेंट के भी उनको निकाल कर लेकर जाने हैं। लेकिन सर्कल बड़ा अच्छा बना है, एल्पोजो का सर्कल हमेशा
से ही पसंद किया जाता है टीमों की जानिब से। काफ़ी एंकर पॉइंट्स हैं, मेनलैंड जो सिटी है वहाँ पर आपको काफ़ी तगड़ी फाइट्स होती देखने को मिलती हैं। लेकिन टीम गॉडल, उनके प्लेयर को एलिमिनेट किया जा रहा है। एक अदद खिलाड़ी आई थिंक शायद एलिमिनेट कर दिए गए हैं। जी हाँ बिल्कुल, लेट्स सी कौन से खिलाड़ी हैं जो हमें छोड़ कर गए हैं इस मैच में। लेकिन ये देखिए नॉन्गशिम रेड फोर्स के खिलाड़ी ग्लाइडर का इस्तेमाल करते बिल्कुल क्लिफ पर रोकने ही वाले थे, लेकिन कुछ शॉट्स आते हैं, बच जाते हैं। पैराशूट जान बचा तो लेता है, लेकिन XY मैं देखना चाहता हूं क्या अभी भी उसी पोजीशन के ऊपर मौजूद हैं। वहां पर चढ़ तो गए हैं, नीचे कैसे उतरेंगे ये देखना अभी के लिए बाकी है। वहीं पर टीम S2G आ चुके हैं, बिल्कुल आप कह लें एल्पोजो के सिटी में, जहां पर ऑलरेडी टीम डोपनेस और टीम अल्फा 7 के खिलाड़ी मौजूद हैं। जी हाँ, और अब एक क्लस्टर आपको यहाँ पर फॉर्म अप होता हुआ दिखाई देता है। टीम S2G, टीम अल्फा 7, टीम डोपनेस और साथ ही साथ एक और नाम भी आई थिंक जिनकी आपने बात की सुन के होते हुए। ये जो एक फाइट है वो यकीनी तौर पर आपको अब जो है वो हैरान कुन भी और परेशान कुन बनते हुए दिखाई देगी कुछ नामों के लिए। लेकिन टीम S2G उनको पॉइंट्स दरकार हैं। टीम S2G उनको खुद को टॉप 5 की तरफ अगर बढ़ाना है तो शायद ये जो फाइट है जो आगे आ रही है, इस फाइट को मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने नाम करना होगा। लेकिन टॉपनेस विद द फर्स्ट एलिमिनेशन, वो एक एलिमिनेशन पॉइंट निकाल जाते हैं। टीम अल्फा 7 उनका आई थिंक ये प्लेयर था जो कि आपको कंफर्म होता हुआ दिखाई दिया। और अगर आप मैपमैन की पोजीशनिंग की बात करें तो बिल्कुल आपके सामने राइट साइड पे टीम अल्फा 7 के 2 हैं, टीम डॉपनेस के 3 खिलाड़ी हैं जो कि उनके थोड़ा सा ऊपर की जाने मौजूद है। S2G थोड़ा हट चुकी है, बिल्कुल इस फाइट में आपको ऐसे ज़्यादा क्लोज नहीं दिखाई दे रही है। सो दैट मीन्स कि टीम डॉपनेस ही की टीम अल्फा 7 के साथ पहले फाइट होगी, और जो यहाँ पे इस फाइट को विन करेगा उसके बाद फिर फैसला होगा कि टीम S2G किसके साथ लड़ती है। और टीम S2G के पास कुछ पॉइंट्स जाते हैं यहाँ पर नहीं। लेकिन बैक एंड साइड पर टीम गॉडल, जिनको थोड़ी देर पहले ही हमने उनका किल फीड में एक नाम पढ़ा था कि प्लेयर ऑलरेडी इस मैच से एलिमिनेट हो चुके हैं। जो टीम गॉडल को भी एहतियात करना होगी, अपने जो आसपास की यहाँ पर नेबरहुड है उसको देखना होगा, ठीक ठाक अच्छे तरीके से चेक करना होगा कि ऐसा ना हो कि जिस बिल्डिंग में वो जाते हैं वहाँ पर कोई ऑलरेडी टीम मौजूद हो। बिकॉज आगे आने वाला जो टाइम है मिरामार में वो कुछ ऐसा ही आपको बनता हुआ दिखाई देगा। बिकॉज जो सर्कल है, सर्कल में बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, सर्कल में बहुत सारा कवर है सो फार, जो कि आपको मिरामार में मोस्ट ऑफ द टाइम खासा रेयर दिखाई देता है। लेकिन हमारा ये सर्कल क्योंकि अल्पोजो के राउंड अबाउट है, अल्पोजो को थोड़ा हमें इंक्लूड करता हुआ दिखाई दिया है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी कि हमें जो है मजीद भी इसी तरह की जो कुछ फाइट्स हैं, इस तरह से कुछ जो थ्रोएबल्स वाली फाइट है जो हमने रोंडो में देखी थी इन बिल्डिंग्स के होते हुए, वो हमें बनते हुए दिखाई दे। बट सर्कल वंस अगेन शिफ्ट लेकर जाएगा, कहां पर जाएगा सर्कल, सर्कल करेगा शिफ्ट और फाइनली एक वंस अगेन एल्पोजो को शिफ्ट यहां पर बना गया हमें फेवर करता हुआ दिखाई देगा। गोडल जोन में ये एरिना के लिए भी मसला बनेगा। जी हां बिल्कुल, ये सर्कल शिफ्ट थोड़ा सा अबैंडन करता है। एल्पोजो का जो वेस्टर्न एंड है, ई एरिना आपको सर्कल से बाहर जाती देखने को मिली। इसके अलावा नॉन्गशिम रेड को सर्कल से बाहर जा चुके हैं। लेकिन ऑल इन ऑल एक अच्छा डिसेंट शिफ्ट है, ज़्यादा दिक्कतों में नहीं लेकर आएगा किसी भी टीम को। लेकिन अब वो फाइट्स का सिलसिला आपको शुरू होता दिखाई देगा जिसका इंतज़ार हम सभी कर रहे हैं। अभी भी 16 में से सिर्फ और सिर्फ 2 ही टीम एलिमिनेट हुई हैं, तकरीबन आधा मैच गुजर चुका है। लेकिन अब आप देखेंगे कि अगले 5 मिनट के अंदर या 3 मिनट के अंदर अंदर आपको बेशुमार नाम इस मैच से बाहर जाते देखने को मिल सकते हैं। लेकिन S2G उनके प्लेयर्स कुछ एलिमिनेशन पॉइंट्स अपने लिए इकट्ठे करते देखने को मिल ही रहे हैं। वहीं पर त्यांबा आखिरी 2 खिलाड़ियों पर बात आ चुकी है और वो 2 खिलाड़ी उनकी ज़िंदगी का सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है कि जाते जाते कुछ प्लेसमेंट पॉइंट्स अगर मिल जाए 2-4 और 2-4 ही प्लेसमेंट 2-4 ही एलिमिनेशन पॉइंट्स मिल जाएं तो शायद इतना ही काफ़ी होगा उनके लिए। लेकिन नॉन्गशिम रेड फोर्स और ई एरिना दोनों अच्छी टीमें, एग्रेसिव टीमें एक दूसरे के आमने सामने आती हैं, टॉप कंटेंडर्स बनने वाले हैं दोनों ही। इनफैक्ट ई एरिना आपको सेकंड स्पॉट पर दिखाई दे रही है, नॉन्गशिम रेड फोर्स वो दूसरा पायदान हासिल करना चाहते हैं इस मैच में, बैक टू बैक तीसरा चिकन डिनर हासिल कर। लेकिन क्या हो पाएगा आइए जानते हैं। उसके लिए उनको इस फाइट में ई एरिना को तो एलिमिनेट करना ही होगा। नॉन्गशिम रेड फोर्स उनका स्प्लिट थोड़ा एक्सटेंसिव है, आई वुड से 2 हैं, बाकी के 2 खिलाड़ी उनके पिछले 2 प्लेयर्स हैं, 2 प्रोडक्शन के अब देखते हैं कि जीत पाएंगे। लेकिन लुक एट दिस ई एरिना, जैसे ही उनको भनक पहुंचती है कि नॉन्गशिम रेड फोर्स के 2 अदद खिलाड़ी दूर हैं, स्लैम इन दिया जाता है। लेकिन नॉन्गशिम रेड फोर्स बहुत ही शानदार तरीके से इस्तकबाल करते हैं उन 2 खिलाड़ियों का। 2 एलिमिनेशन पॉइंट्स कंफर्म कर लिए जाएंगे ई एरिना के प्लेयर्स के ऊपर। लेकिन ई एरिना अनफॉर्चुनेटली ये बहुत बड़ी गलती उन्होंने कर दी है, अंडर एस्टिमेट उनको करना इस तरह से नहीं चाहिए था नॉन्गशिम रेड फोर्स के खिलाड़ियों को। लेकिन अब ये फाइट आसान हो चुकी है, यहां से बिल्कुल भी इस
फाइट को ओ, throw नहीं इधर वाले करना। के ऊपर push हो रहा था। दूसरे खिलाड़ियों को वहीं पर हो रहा है। स्पोर्ट्स की भी एक फाइट आपको चलती दिखाई दे रही है एलिमिनेशन फीड में, लेकिन ये अरीना एक भी एलिमिनेशन पॉइंट अभी तक के लिए वो कंफर्म इस पूरे मैच के अंदर ना ही कर पाए हैं। यूटिलिटीज शानदार तरीके से फेंक जरूर रहे हैं नॉन्गशिम रेड फोर्स के प्लेयर्स, लेकिन नॉन्गशिम रेड फोर्स अब जा करके उनका पोजीशन कॉम्प्रोमाइज होता है। कहीं बैकयार्ड से भी कुछ शॉट्स आ रहे हैं जो कि तंग करते दिखाई देंगे। विटालिटी है बिल्कुल पीछे, और विटालिटी बिल्कुल करेगी थर्ड पार्टी सारे फाइट में। फेडरालिस अपना व्हीकल लेकर के आगे बढ़ते दिखाई आपको दे ही रहे हैं, लेकिन ई अरीना के श्वेपिक्स वो जाते जाते कुछ बड़ा कारनामा कर कर जाना चाहते हैं। यूटिलिटी जाएगा, हुईबिन को लो ऑन एचपी किया जाता जरूर है, लेकिन फॉल बैक अगर किया तो नॉन्गशिम रेड फोर्स पीछे एक और टीम आ रही है जो कि बैकस्टैप करने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही है। यही होता है जब एक फाइट बहुत डिले हो जाए, यही होता है, और जो होगा वो नॉन्गशिम रेड फोर्स को अब बिल्कुल भी पसंद ना आएगा। बेचारे थर्ड पार्टी की वजह से मर रहे हैं। प्लेयर्स की कुछ टीम्स की जो कि आपको फाइट करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और साथ ही साथ कुछ थर्ड पार्टीज का शिकार हैं। ये टीम्स हो चुकी है। टीम ई अरीना वर्सेस टीम नॉन्गशिम रेड फोर्स, पहले आपको ये फाइट देखने को मिलना थी, उसके बाद अब एक थर्ड पार्टी हमें होते हुए दिखाई दी, और क्योंकि ब्लू जोन भी आ चुका है डेफिनेटली यू कैन एक्सपेक्ट कि शायद फिर ब्लू जोन की नजर भी हमें होते हुए दिखाई दे, लेकिन वो फायर करेंगे और टीम ई अरीना के श्वेपिक्स मैच से एलिमिनेट किया गया, लेकिन थोड़ी ही दूरी पर टीम नॉन्गशिम भी इस मैच से आपको एलिमिनेट होते हुए दिखाई दे जाएगी। वो दोनों नाम जो लड़कर एक दूसरे को एलिमिनेट करने के लिए आए थे, वो दोनों ही एलिमिनेट हो जाते हैं और एलिमिनेशंस किसी और के पास चले जाते हैं। वाइटैलिटी उनको 8 एलिमिनेशन पॉइंट्स टोटल मिल चुके हैं इस मैच में, हो रहा उनके पास अब 2 एलिमिनेशन पॉइंट्स हो चुके हैं। टोटल हमारे पास 12 टीमें इस मैच में मौजूद हैं, 41 खिलाड़ी हैं, काफी सारे ऐसे अभी भी कंपाउंड जो कि सर्कल का हिस्सा है, लेकिन थोड़ा सर्कल ने लास्ट टाइम अराउंड एक्सक्लूड मजीद किया एल्पोजो के इन कंपाउंड्स को, इन कवर एरियाज को, और अब आपको मजबूर किया जाता है कि आपको रिजस पर जाना पड़ेगा। इस ओपन एरिया में निकल कर अपने लिए जो जगह है, अपना जो कवर है वो तलाश करना पड़ेगा, चाहे फिर वो आपके लिए व्हीकल्स हो, चाहे फिर आपके लिए कुछ यहाँ पर रिजस का वो कवर हो जहाँ पे आप थोड़ा डाउनवर्ड साइड पर छुप जाएं और आपके ओपोनेंट अपर साइड पर अगर हैं या थोड़ा कवर से बाहर है तो आप उनको स्पॉट करते साथ ही नॉकआउट कर पाएं। लेकिन वाइटैलिटी फिलहाल अभी के लिए आपको रोटेशंस करते हुए दिखाई दे जाएगी और खासा कॉन्फिडेंट ये स्क्वाड के पास कोई अभी के लिए ऐसा वो मोमेंट नहीं आज के दिन का जिसको लेकर इनको अफसुर्दा होना चाहिए, परेशान होना चाहिए कि हमारा कोई भी मैच जो है वो ज़ाया गया है, बुरा गया है, या उस मैच में हम अपनी तवक्कुआत के मुताबिक जो है परफॉर्मेंस हासिल नहीं कर पाए। लेकिन फिलहाल जहाँ पर ये जा रहे हैं वहाँ पर टीम ईडा उनको पॉइंट्स दरकार है, लेकिन इस तरह से पॉइंट्स मिलेंगे नहीं मुझे लगता है, और टीम ईडा भी शायद यहाँ से हमें जो है टेढ़ा बेटा होकर लॉबी जाते हुए दिखाई दे। लेकिन फिलहाल ईडा उनके रीता उनको इस मैच से एलिमिनेट कर दिया जा सकता है। रेजी द प्लेयर जो कि यहाँ पर एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म करेंगे। टीम 721 के प्लेयर मास्को इन फाइट उनको भी नॉकआउट कर दिया जाएगा। त्यांबा फाइटिंग बैक, और समहाउ जहाँ पे त्यांबा लग रहा था कि शायद ये मुश्किल में है, उन्होंने कहा एक्चुअली कि आपको एम्बुलेंस बुलाना तो पड़ेगी लेकिन दूसरों के लिए बुलाना पड़ेगी और हम यकीनी तौर पर यहाँ पर ही रहेंगे। सो टीम त्यांबा सरवाइव कर जाते हैं मिराकुलसली, और वो टीम वो स्क्वाड 721 का जो आया था अब यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। जी हाँ बिल्कुल, त्यांबा ने कहा एम्बुलेंस बुला लो, हमारे लिए नहीं लेकिन अपने लिए बुला लो। लेकिन और वहीं पर त्यांबा आई वुड से कि एक एलिमिनेशन पॉइंट अपना पहला कंफर्म करते हैं। बड़ा अच्छा कवर बनाया हुआ है त्यांबा की, क्योंकि 2 ही खिलाड़ी अब सिर्फ और सिर्फ बाकी रह चुके हैं। उन्होंने वहां पर उस रिज को इस्तेमाल करते हुए, उस क्लिफ को इस्तेमाल करते हुए नीचे आप कह लें उस सारे डिप के अंदर बहुत अच्छे तरीके से गाड़ियां लगाई हुई हैं। लेकिन खैर त्यांबा थोड़ी देर के लिए तो वहाँ पर सर्वाइव कर सकती है। कुछ 1-2 प्लेयर्स का अगर स्लैम इन आता है तो शायद एलिमिनेशन पॉइंट्स भी उठा पाए, लेकिन अगर पूरी की पूरी टीम कहीं पर उस रिच के टॉप पर आ गई या कहीं पर भी आ गई अतराफ में तो फिर शायद त्यांबा भी आपको थोड़ी देर में एलिमिनेट होती दिखाई देगी। लेकिन रेजी शानदार AWM का शॉट देते दिखाई देते हैं और काफी अरसे बाद आपको स्नाइपर का एक सक्सेसफुल नॉकआउट निकलता देखने को मिल रहा है। हाँ DMRs, वो जो DMRs हैं उनका तो इस्तेमाल किया ही जाता है, लेकिन बोल्ट एक्शन स्नाइपर्स वो अब बहुत ज़्यादा रेयर साइट हो चुके हैं सारे कंपटीशन में। स्टार्टिंग के अंदर जब PUBG मोबाइल स्पोर्ट्स नया आया था या PUBG मोबाइल जब नई आई थी तब आपको स्नाइपर्स का ही जलवा प्लेयर्स दिखाई देते थे। लेकिन फिलहाल के लिए टीम यांग ऑन गैलेक्टिकोस उनकी एक फाइट शुरू होगी। सामने रहते हसलर्स क्रू और अल्फा 7 की सारी फाइट में यांग ऑन गैलेक्टिकोस अपना भंग फिलहाल के लिए डालना चाहती है, लेकिन यांग ऑन गैलेक्टिकोस आउट इन दी ओपन है। यहाँ से अगर अपने प्लेयर्स का पोजीशन कॉम्प्रोमाइज करवाया तो
नुकसान उठाना पड़ सकता है। मे बी शायद कुछ 2-3 एलिमिनेशन पॉइंट स्टील ऑफ कर लेकर जा सकते हैं थर्ड पार्टी की बनिस्बत, लेकिन खैर यांगोन गैलेक्टिकोस उनको भी यहाँ से फॉल बैक करना है सर्कल के जानिब, और सर्कल के अंदर अभी भी काफी वेकेंट एरिया है, लेकिन उतना ही सर्कल ओपन है जितनी खाली जगह सर्कल के अंदर मौजूद है। एंड यांगोन गैलेक्टिकोस वो फॉल बैक करना नहीं चाहते हैं, बल्कि अल्फा 7 को एलिमिनेट करना चाहते हैं। यांगोन गैलेक्टिकोस आगे बढ़ करके कारेहो को भी नुकसान पहुंचाया जाएगा। अल्फा 7 के आखिरी 2 अदद खिलाड़ी भी इस मैच से बाहर कर दिए जा चुके हैं। यांगोन गैलेक्टिकोस अपने लिए चौथा एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म कर अब अगला शिकार अपना ढूंढते देखने को मिलेंगे, लेकिन अगले शिकार इनफैक्ट सर्कल के अंदर है और यांगोन गैलेक्टिकोस उनको वापस से अब फाइट लेकर के सर्कल के अंदर अपनी जगह बनानी पड़ेगी। लेकिन त्यांबा और होरा आपस में लड़ते देखने को मिल रहे हैं, जिसकी जद में आकर स्लीपी शानदार तरीके से आखिरी त्यांबा के प्लेयर को एलिमिनेट कर त्यांबा को बाहर करने में कामयाबी हासिल कर चुके हैं। जी हाँ, और हमारे पास अब सिर्फ 8 टीमें, कुल 27 खिलाड़ी जिनको फाइट करना है इस मैच के विनर सेकंड डिनर के लिए। और टीम वुल्व्स जिनके प्लेयर थोड़ा अलग थे आई थिंक टीम से, 2 प्लस टीम के थोड़ा सर्कल की एज की जानिब गए, उस जगह पर गए जहाँ पर आपको टीम S2G दिखाई दी, जहाँ पर टीम डॉपनेस थी, जहाँ पर इससे पहले टीम यांगोन गैलेक्टिकोस, और साथ ही साथ शायद हमने टीम अल्फा 7 को भी फाइट करने के लिए जो है मौजूद देखा, लेकिन वहाँ से दूरी अख्तियार करना टीम वुल्व्स के एक प्लेयर की यहाँ पर उनका एक डिसीजन बनाया जाना कि शायद वो अगर बैक साइड पर रहते हैं तो आने वाले टाइम में अपने प्लेयर्स को हेल्प आउट कर पाएंगे। अनफॉर्चुनेटली उनके ही हमें यहाँ पर खिलाफ जाता हुआ दिखाई दिया। लेकिन अब टीम यांगोन गैलेक्टिकोस वर्सेस टीम वुल्व्स, ये फाइट जरूर होगी जहां पर एक 2v2 की फाइट है बजाहिर, क्योंकि यांगोन गैलेक्टिकोस के 2 खिलाड़ी अभी तक यहां पर पहुंचे हैं और टीम यांगोन गैलेक्टिकोस के मुखालिफिन टीम वुल्व्स उनके पास तो है ही 2 प्लेयर्स, लेकिन वाइटैलिटी वो थर्ड पार्टी करेगी और यांगोन गैलेक्टिकोस के तीसरे जो कि पहले यहां पर आए थे रोमियो, जो कि बिल्कुल हमें यहां पर आगे की जानिब दिखाई दे रहे थे फाइट करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली वो नॉकआउट कर दिए जाएंगे, लेकिन पहले एक खिलाड़ी नॉकआउट हुए, अब जाके स्माइल भी नॉकआउट हो चुके हैं और टीम यांगोन गैलेक्टिकोस जिनको टीम वुल्व्स के साथ फाइट करना थी उनको टीम वाइटैलिटी ने थर्ड पार्टी कर दी है। और अब आपको नेट्स भी जाते हुए दिखाई दिए हैं, नेट के साथ नॉकआउट भी होता हुआ दिखाई दिया, मजीद नेट चल रहे हैं, नेट्स की भरमार है, एक के बाद एक ग्रेनेड है और टीम S2G जिनके पास एक प्रॉपर स्क्वाड है, क्या ये नेट जाएगा इनफैक्ट कनेक्ट करने के लिए? अनफॉर्चुनेटली जो जवाब है वो फिलहाल इनको नफी में आता हुआ दिखाई दिया और टीम डॉपनेस ये नेट जा सकता है, नेट गया लेकिन वंस अगेन ये नेट भी आपको कनेक्ट नहीं होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इस मौके पर जहां थर्ड पार्टी टीम का रात मौजूद थे, टीम गॉडल थर्ड पार्टी कर जाती है और गॉडल के पास एक फाइनली एलिमिनेशन इस मैच का अब आ चुका है। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन उसके एवज गॉडल अपना एक खिलाड़ी नॉकआउट भी करवाते हैं एंड गॉडल पैदर पे कोशिश कर रही है कि अंडर द रडार रहकर छुपके से अपने एलिमिनेशन पॉइंट्स में किया जाए इजाफा, लेकिन गॉडल इससे कई ज़्यादा बढ़कर उनको इस मैच के अंदर खेलना होगा। लेकिन अभी के लिए सौमे यहाँ पर मौजूद हैं एंड सौमे कोशिश करना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने पोजीशन को ढांपा जाए, बट खैर यहाँ पर S2G उन्होंने तहैया कर लिया है कि जल्द से जल्द इस फाइट को उनको पहुँचाना है पाए तकमील को। वहीं पर डोपनेस के प्लेयर अनफॉर्चुनेटली आखिरी बाकी रह चुके हैं। हम CG आगे बढ़ करके कहानी खत्म करेंगे एंड डोपनेस के भी बेशतर खिलाड़ी इस मैच से बाहर कर दिए जा चुके हैं एंड जी हाँ बिल्कुल पूरी की पूरी टीम बाहर हो चुकी है। S2G इसी के चलते साथ अपने लिए 5वां एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म करती है, लेकिन यांगोन गैलेक्टिकोस वुल्व्स के प्लेयर के ऊपर हाथ साफ करने के बाद अब क्या आगे बढ़ते टीम S2G का सामना करना चाहेंगे, लेकिन यांगोन गैलेक्टिकोस वापस से जहां से चलते बनना चाहते थे वहीं पर आकर लेट चुके हैं। लेकिन बैक आज पर विटालिटी इनफैक्ट बिल्कुल सामने आ चुकी है यांगोन गैलेक्टिकोस की। यांगोन है जो 4Thrive के साथ होता है कि सर्कल बार बार उनसे दूर चलता जा रहा है और यांगोन गैलेक्टिकोस अब शायद उनको मौका ना मिल पाएगा सर्कल के अंदर अगले सर्कल के अंदर अपनी जगह बनाने का। लेकिन वुल्व्स स्पोर्ट्स अभी फिलहाल के लिए वही दोनों खिलाड़ी सर्वाइव कर रहे हैं, ऐसा लगा कि शायद एलिमिनेट हो चुके हैं, लेकिन होरा वर्सेस गॉडल का स्लैम आता है। होरा स्पोर्ट्स के एक प्लेयर गिरते जरूर हैं, लेकिन स्काई आगे बढ़ करके दोनों प्लेयर्स का एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म कर लेकर जाएंगे। यूटिलिटी आएगा, बच क्या पाएंगे? जी हाँ बचते जरूर हैं, लेकिन गॉडल के प्लेयर उस ग्रेनेड से अपने ही प्लेयर को उन्होंने उड़ा दिया है। वहीं पर होरा स्पोर्ट्स वो अपने खिलाड़ियों को रिवाइवल तो देना चाहते हैं, लेकिन टीम S2G ने वहां पर दे दिया है और S2G चाहती थी कि शायद जो ब्रीदिंग स्पेस उसकी बदौलत वो कुछ एलिमिनेशन पॉइंट्स निकाल कर लेकर जाए, लेकिन S2G अनफॉर्चुनेटली नुकसान उठाना उनको भी पड़ा। एक अदद मजीद खिलाड़ी अपना गंवाया जरूर है, लेकिन होरा स्पोर्ट्स अपने आखिरी प्लेयर के ऊपर आ चुकी है। 10 एलिमिनेशन इनफैक्ट करीब होरा स्पोर्ट्स हासिल कर चुकी है, 8 एलिमिनेशन पॉइंट्स उनके पास हैं, लेकिन इस सारी लॉबी में
द मोस्ट कंसिस्टेंट टीम, जिस तरह से 4Thrive ने आपको ग्रुप ए के अंदर खेलकर दिखाया, यहाँ पर वही काम विटालिटी करती देखने को मिल रही है। 16वां एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म कर दिया है विटालिटी ने अपना इस गेम में। well yes and टीम वाइटैलिटी जिस तरह से वो डोमिनेशन करते चले जा रहे हैं, यकीनन 20 एलिमिनेशंस के खासा करीब है, सिर्फ 5 और एलिमिनेशन पॉइंट्स चाहिए बिकॉज 15 पर अभी टीम पहुंच चुकी है। टीम हो रहा फिलहाल वो भी आपको कुछ नॉकआउट शायद कंफर्मेशन जो है वो करते हुए दिखाई दे जाए बिकॉज बिल्कुल उनके सामने टीम वोल्व्स के प्लेयर्स मौजूद हैं। वोल्व्स के LCS उनको पहले नॉकआउट किया जाएगा। वोल्व्स के एलिमेंट्रिक्स वो भी साथ ही मौजूद हैं। सिर्फ एक और ग्रेनेड यहाँ पे प्रिसाइज करना था हिट टीम को और टीम वोल्व्स इस मैच से एलिमिनेट हो सकती थी, लेकिन ऐसा होगा नहीं पलबग क्योंकि टीम हो रहा है स्पोर्ट्स दूसरे एंड पे बिजी हो जाती है बिकॉज वो उनका यहाँ पर जब निशाना बनते हुए दिखाई दी और फाइनली टीम यंगुन कनेक्टिकोस वो इस मैच से पाए हो चुके हैं। हम लोग आ चुके हैं हमारी टॉप 3 टीम्स पर। टीम वोल्व्स मेकिंग देयर वे इनटू द टॉप 3, लेकिन अभी भी नॉक रेव वो यहाँ पर चल रहा है। टीम हो रहा है स्पोर्ट्स वो नॉकआउट्स यहाँ पर निकालते हैं। टीम वोल्व्स के दूसरे प्लेयर अपने प्लेयर को रिवाइवल देते हैं और तभी टीम वाइटैलिटी वो फाइट करने के लिए पहुंच जाती है। सो टीम वोल्व्स आई मस्ट से इस मैच में अभी तक के लिए बहुत ही लकी रहे हैं कि उनको सर्वाइवल मिला। टीम ने 6 एलिमिनेशन पॉइंट्स निकाले और जिस तरह से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये मैच टीम का अच्छा जा सकता है, टीम वोल्व्स ने अपने लिए मैच को वाकई डिसेंट मैच में कन्वर्ट करके दिखाया, लेकिन वाइटैलिटी उनके रेजी अभी के लिए जहां पर वो गए थे वहां से डैमेज यकीनी तौर पर देने के भी इम्कानात हमें दिखाई दे रहे थे। एट द सेम टाइम आपको यहाँ से डैमेज आना भी था जो कि यहाँ से डील जरूर किया जाएगा, लेकिन एक्सेल विद द आंसर। टीम हो रहा है स्पोर्ट्स अभी के लिए अपना जो पहला खिलाड़ी है बदकिस्मती से वो मजीद गवा देगी और अगर एक और खिलाड़ी गया अगर स्काई भी इस मैच से एलिमिनेट हुए अनफॉर्चुनेटली तो टीम वोल्व्स टॉप 2 में आ जाएगी, लेकिन स्काई वंस अगेन वो फाइट बैक करेंगे, वो नॉकआउट को कंफर्मेशन में भी तब्दील करेंगे एंड विद 13 पॉइंट्स सो फार 13 एलिमिनेशन नंबर्स वाइटैलिटी विद 17 और स्काई जाएंगे आगे 1v1 लिया जाएगा। एक्सेल को यहाँ पर जब उन्होंने नॉकआउट निकाला लेकिन तभी जोन उनके ऊपर हावी हो जाएगा। वोल्व्स थर्ड पार्टी करेगी और इनफैक्ट अब टीम वोल्व्स को फाइट करना पड़ेगा वाइटैलिटी के साथ जो कि वो विन तो नहीं कर सकते थे, लेकिन वोल्व्स हैज टू हो रहा 3 और वाइटैलिटी एक और बेहतरीन मैच एक और सेकंडरी टीम वाइटैलिटी के पास। वाइटैलिटी बहुत डोमिनेट कर रही है यार, बहुत ही डोमिनेट कर रही है गाइस। वी गोटा स्टॉप दिस टीम। लीड आपको बनती दिखाई देगी। 88 पॉइंट्स के ऊपर विटालिटी जा चुकी है। पूरा स्पोर्ट्स सेकंड स्पॉट के ऊपर 59 पॉइंट्स पर मौजूद है एंड विटालिटी कहीं ना कहीं ग्रुप स्टेजेस के कंपटीशन को वन साइडेड करती आपको देखने को मिली है। अभी भी आखिरी मैच रहता है 5-7 पॉइंट्स पे अगर विटालिटी आखिरी मैच से निकाल कर लेकर चलेगी तो अच्छी खासी एक लीड वो बनाकर चले जाएंगे। हो रहा स्पोर्ट्स को अब स्टेप अप करना पड़ेगा क्योंकि हो रहा स्पोर्ट्स अपने मुताबिक बहुत अच्छा खेल रही है, लेकिन विटालिटी को अगर वो चेज करना चाहते हैं फिर विटालिटी के लेवल पर आकर हो रहा स्पोर्ट्स को अग्रेसिव एक बहुत बड़ा गेम खेलना है आने वाला। लेकिन खैर अभी ख़वातीन हज़रात मकसद सिर्फ ज़िंदगी का यही है कि आपको जैसे तैसे कर कर अपने आप को टॉप 5 में रखना है और टॉप 5 में अगर आप टॉप 2 में टॉप 3 में है दैट शुड बी ओके। पहला पायदान हासिल करना उतना ज़रूरी नहीं है जितना ग्रैंड फाइनल्स में ट्रॉफी हासिल करने के लिए है। हाँ, लेकिन आप जितने पायदान मजीद ऊपर जाएंगे उतना मैसिव प्राइज मनी आपको मिलेगा एंड ये ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप है। $3 मिलियन दाव पर लगे हुए हैं और आप जरूर चाहेंगे कि यहाँ पर अगर आप आए हैं आप ज्यादा से ज्यादा हासिल कर जाएं, चाहे वो प्राइस पूल हो चाहे वो पायदान हो, जो मर्जी हो। आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि अच्छे से अच्छा आप खेलें। लेकिन खैर विटालिटी ने तो हदें पार कर दी हैं। 88 पॉइंट्स इन 5 मैचेस। जी हाँ, एंड टीम वाइटैलिटी ऑलमोस्ट क्लोज के वो आपको 100 का जो मार्कर है वो आज ही हिट करते हुए दिखाई दें और इवेंचुअली फर्स्ट टीम बन जाएं हमारे अभी के लिए इस PMWC के जो कि एक ही दिन में 100 पॉइंट हिट करें। लेकिन फिलहाल विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक। यार ये तो बड़ा यूनिक जा रहा है, मतलब मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। बहुत सस्पेंसिव टूर्नामेंट है ये तो। कभी क्या हो ही जा रहा है, कभी क्या हो ही जा रहा है। Now imagine an entire city being built to supercharge it. Kadir City, powered by Play. Powered by Play. It is Yangon Galacticos! Chasing the sunrise, boots hit the ground, hear the battle call, loot up, lock in. वालेकुम अस्सलाम बंटर साहब, आई एम ग्याट, आप कैसे हो? Every door
Oh my god. The tournament continues soon. Be right back. Welcome back once again after a break. The PUBG Mobile World Cup 2026 ग्रुप स्टेज ग्रुप बी, जिसको आप अभी के लिए मुलाहिजा कर अपने स्क्रीन पर आज के इस दिन पर। और हमारे पास ऑलरेडी 5 मैचेस हो चुके हैं, सिर्फ एक और मैच बाकी, और उसके बाद ग्रुप स्टेज हमारा जो यहाँ पर ग्रुप बी का भी रहने वाला है, उसके आधे मैचेस हो जाएंगे। 50% ऑफ द मैचेस डन एंड डस्टेड हो गए। और फाइनली कल का वो दिन होगा जब यहाँ से हमें फाइनली जो हमारी बॉटम 3 टीम्स हैं वो अलविदा कहेंगी, और हमारी टॉप 5 टीम्स जो कि इस ग्रुप में भी टॉप पर होंगी वो डायरेक्ट फाइनल्स के लिए क्वालिफाई करते हुए दिखाई देंगी। लेकिन फॉर नाउ हमारे पिछले मैच की विनर्स, उनकी हम बात कर लेते हैं। टीम वाइटैलिटी अहमद वो हमारे सामने आ चुके हैं, और अगर आप एलिमिनेशंस की बात करें सो फार 4.2 एवरेज एलिमिनेशंस हैं। आई थिंक ये ओवरऑल प्लेयर्स का बताया जा रहा है जो कि अभी तक के लिए इन्होंने पिछले 5 मैचेस में खेल कर दिखाया। बिल्कुल पोर्टल, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। एंड विटालिटी दे आर ऑन फायर। ओराई स्पोर्ट्स उन्होंने भी बड़ी जान मारी एंड पर आकर के, शायद वो फाइट को केटर कर सके। एंड वुल्व्स ई स्पोर्ट्स उनको भी हमने देखा कुछ कोशिशें उन्होंने भी करने की कोशिश की हैं, लेकिन विटालिटी उनको तो कोई चैलेंज कर ही नहीं पा रहा है। पता नहीं कितने मैचेस, आप आज के हर एक मैच के अंदर तकरीबन विटालिटी कंसिस्टेंट रही है। शायद एक कोई बुरा मैच बीच में एक आधा आया हो, लेकिन विटालिटी उसके अलावा दे हैव बीन वेरी ऑन पॉइंट। अगर आप उनकी स्ट्रैटेजीज फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग देखें तो विटालिटी इट सीम्स लाइक कि उनके पास हर चीज़ का तोड़ है, हर चीज़ का उनके पास जवाब है। सो लेट्स सी कि अभी फ़िलहाल के लिए आने वाला जो आखिरी मैच है आज के दिन का, ये क्या लेकर आता है। क्या विटालिटी की इस सारी डोमिनेशन को, ये जो एक प्रेशर उन्होंने मैसिव बना दिया है लॉबी के ऊपर, इसको कोई तोड़ पाएगा या नहीं। जी हाँ बिल्कुल, पोर्टल से हम बात करेंगे अभी फ़िलहाल के लिए। जी हाँ बिल्कुल, एंड वहीं पर आई एम रियली सॉरी पोर्टल, शायद आप मुझे सुन नहीं थे पा रहे, उसके लिए मैं माजरत चाहूँगा। आई थिंक सो अब आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। बिल्कुल मैं सुन पा रहा हूँ जी। तो इसी के साथ साथ मैच रैंकिंग्स आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगी। विटालिटी 29 पॉइंट्स पर आपको दिखाई दे रही है। ओराई स्पोर्ट्स 18 पॉइंट्स पर देखने को मिल रही है। वुल्व्स ई स्पोर्ट्स 13 पॉइंट्स के ऊपर है। दीज आर मैच रैंकिंग्स। 29 पॉइंट्स निकाले गए विटालिटी की तरफ से, 19 एलिमिनेशन पॉइंट्स। जी हाँ, और हमारे पास ये थी पिछले मैच की रैंकिंग्स जो कि आप लोगों ने देखी। और अब सिर्फ एक और मैच, एक आखिरी मिरामार का मैच, जिसके बाद फाइनली हमारे पास टॉप 5 टीम्स आज के इस दिन के लिए एटलीस्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएंगी। एंड बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई थिंक अब इस आखिरी मैच के लिए अगर एक सवाल है तो वो यकीनी तौर पर इस टॉप 5 से हटकर हमारी अभी तक के लिए जो टीम की परफॉर्मेंसेज आई उन सबसे हटकर रहेगा। एंड दैट इज़ के 100 पॉइंट्स टीम वाइटैलिटी क्या वाकई करने जा रही है, बिकॉज सिर्फ 12 पॉइंट्स इस टीम को चाहिए। और एक दिन के अंदर, एक दिन के सिर्फ 6 मैचेस के अंदर हम ये बात कर रहे हैं कि एक टीम 100 पॉइंट्स को टच करते हुए आपको दिखाई देने वाली है। सो 12 मोर पॉइंट्स और टीम वाइटैलिटी लेट्स सी हिटिंग द 100 मार्कर, जो कि हालांकि हमने पिछले ग्रुप में देखा था कितना टफ कंपटीशन था कि बिल्कुल आई थिंक आखिरी मैच में जाके टीम 4Thrive को मौका मिला था आके वो टीम बने, द ओनली टीम जिन्होंने 100 का मार्कर जब क्रॉस किया इस ग्रुप में टॉप करने के बावजूद भी। लेकिन हो रहा है स्पोर्ट्स नंबर 2 पे अभी के लिए 59 पॉइंट्स हैं, ई अरीना 57 पॉइंट्स हैं, नॉन्गशिम के 41 पॉइंट्स है। बड़ा फर्क आ चुका है यहाँ पर भी, और 16 पॉइंट्स का सिर्फ फर्क है नंबर 3 और नंबर 4 ही के दरमियान। फिर उसके बाद जाकर भी 11 पॉइंट्स का फर्क है नंबर 4 और नंबर 5 के दरमियान। सो ज़्यादा अभी के लिए जो कंपटीशन है वैसे आपको दिखाई दे नहीं रहा है। लेकिन नंबर 5, 6, 7, 8 ये सब एक ही रेस में लगे हुए हैं। कोई भी उठकर अगले मैच के अंदर अगर अच्छे पॉइंट्स निकालता है तो वो टॉप 5 में आएगा। टॉप 5 वाली जो टीम है #5 वाली प्रिसाइजली वो नीचे जाएगी। यहाँ से भी कुछ ऐसा ही आपको दिखाई दे जाएगा कि 23, 22, 22, 16 ये जो भी टीम्स आपको दिखाई दे रही। इनफैक्ट नंबर 8 वाली भी अगर कोई टीम है हसरत रियू, तो उनका भी 20+ पॉइंट्स वाला मैच उनको एटलीस्ट आराम से जो है अगर टॉप 3 में नहीं भी लेके जा रहा तो टॉप हमारे पास टॉप 5 का सॉरी अगर नहीं भी लेके जा रहा तो जो फर्स्ट पेज है वहाँ तक वो भी जा सकते हैं। सो नंबर 5 जो है अभी तक के लिए वो काफ़ी कॉम्प्रोमाइज है नंबर
6, 7, 8 उनकी कोशिश होगी कि अगले ही मैच में अपने आप को टॉप 5 तक लाया जाए, लेकिन टॉप 5 यकीनी तौर पर सिर्फ आज के दिन से डिसाइड नहीं होने वाला है। आपको कल का जो दिन है वो लगेगा, कल के दिन के जो 6 मैचेस उन तक इंतजार करना ही पड़ेगा और वो 6 मैचेस ही बिल आखिर हमारे के दरमियान जाके फैसला करवाएंगे कि 5 मोस्ट डिजर्विंग कौन कौन से नाम है जो कि ग्रैंड फाइनल्स में हमारी ग्रुप ए की जो टीम्स हैं उनको ज्वाइन करेंगे। यार पार्टी क्यों नहीं कर रही, इतनी गुफ्तगू किस बात का कर रहे हो? जी हाँ बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा। पोर्टल एंड ग्रुप बी बज़ाहिरी तौर के ऊपर आई थिंक सो कि थोड़ी और एफर्ट की जरूरत है, क्योंकि बेशक टॉप 5 तो आना मकसद है इस स्टेज का, लेकिन आपको एक अच्छे मोमेंटम के साथ ग्रैंड फाइनल्स के अंदर भी जाना है, सर्वाइवल स्टेज के अंदर भी इनफैक्ट अगर आप क्वालीफाई कर रहे हैं तो आपको एक अच्छा मोमेंटम लेकर जाना है। सो दैट इज व्हाई यू हैव टू स्टेप अप। 50% आई वुड से कि आज के दिन के बाद कंपटीशन खत्म हो जाएगा। S2G स्पोर्ट्स अभी तक के लिए उस तरह से वो अच्छा नहीं खेल पाए। 30 पॉइंट्स उन्होंने पिछले 5 मैचेस के अंदर निकाले हैं, जो कि एवरेज से नीचे हैं काफ़ी हद तक। यांगोन गैलेक्टिकोस इनफैक्ट एक बहुत बड़ा नाम, डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, 30 पॉइंट्स निकाले हैं उन्होंने 5 मैचेस में, अब छठा मैच आने को है। अल्फा 7 भी उस तरह से अल्फा नहीं बन पा रही है, 26 पॉइंट्स निकाले उन्होंने 5 मैचेस के अंदर। त्याम्बा को आप देख लें, इतना एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, पेल रीजन से आई हुई टीम है। इसके अलावा चलें बाकी टीमों को आप कह सकते हैं कि थोड़ा स्ट्रगल अगर कर रहे हैं तो बनता भी है। कुछ टीमों का पहला ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप है, कुछ टीमों के पास उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन ये जो 2-4 नाम मैंने आपको गिनवाए हैं ये वो नाम है जिनके अंदर काबिलियत है इस सारे लॉबी को चैलेंज करने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अपने अच्छे पॉइंट्स पर नहीं खेल पा रहे। बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द लास्ट गेम। कभी भी देर नहीं होती है कम बैक करने को, कभी भी देरी नहीं होती है वापस से अच्छा खेलने के लिए। सो लेट्स सी कि इस आखिरी मिरामार के मैच के अंदर क्या सेकंड पेज से कोई टीम हमें उठकर चिकन डिनर निकालती दिखाई देगी। जी हाँ, ये एक सवाल है हमारा यकीनन हमारी उन बॉटम टीम से जो कि समहाउ हमें काफ़ी जो है वो यहाँ पर पीछे दिखाई दे रही है। बिकॉज हम इसको इसी तरह से बात करेंगे कि आप ना सिर्फ अभी के लिए टॉप 5 की बात की करें यहाँ पर, बल्कि आप इस तरह से इसको देखें कि तो नंबर 1 टीम है वो जो #1 है, 88 पॉइंट्स अगर वो लेकर जा रहे हैं तो आखिर बाकी ने किया क्या है, आखिर आज ये चल क्या रहा था इस ग्रुप के अंदर और इतना वन साइडेड डोमिनेशन करने क्यों दी गई एक टीम को। सो टीम वाइटैलिटी, हालांकि उससे पहले हम टीम ई अरीना की बात कर रहे थे। फर्स्ट मैच में जितने उनके भी एलिमिनेशंस हैं उतने उन्होंने फर्स्ट मैच में पॉइंट्स निकाले थे और मैंने इवन तब भी आपको बोला था जब फर्स्ट मैच ही गुजरा था आज के दिन का कि जितने इस टीम के टोटल पॉइंट्स इस मैच में हुए हैं, जब दिन का इख्तिताम होगा तो आप देखेंगे कि मेजॉरिटी ऑफ द टीम्स जो कि इस लॉबी की हैं, मेजॉरिटी से मैंने आपको एग्जैक्ट बताया भी था कि क्या मेरा मतलब है कि 8 से ज़्यादा जो टीमें हैं, 8 से जो ज़्यादा टीमें हैं उनके टोटल भी इस लॉबी में 39 पॉइंट्स नहीं होंगे। लुक एट दिस दो अभी भी लेट्स गो, गेम स्टार्ट हो गया। 5 से लेकर नंबर 16 तक मतलब 12 टीमें ऐसी है जिनके 30 से कम पॉइंट्स हैं या 30 पॉइंट्स हैं। आई थिंक ये जो है वो बड़ा इजी था ऑब्वियसली फर्स्ट मैच के बाद ही अंडरस्टैंड करना कि ये तो कंपटीशन इस लॉबी का वन साइडेड होने जा रहा है। ऑल्दो इसको ई अरीना ने नहीं बनाया, लेकिन उसके बाद टीम वाइटैलिटी ने इसको कैरी किया। लेकिन प्लेयर्स में अगर आप बात करें तो पहले वाइटैलिटी से ई अरीना में दिखाई दी फर्स्ट मैच में, अब टीम वाइटैलिटी के प्लेयर्स हैं, फेडरल्स हैं, एक्सेल हैं और रेजी हैं। इसके अलावा शायद एक और टीम के प्लेयर थे जो कि आपको एलिमिनेशंस में दिखाई दिए, लेकिन ज़्यादा फर्क आपको पड़ना नहीं चाहिए और ऑब्वियसली टीम वाइटैलिटी ज़्यादा उनको भी फ़र्क पड़ेगा नहीं अगर वो इस मैच में जल्दी भी इनफैक्ट चले जाते हैं तो। लेकिन हमारा प्लेन पाथ अभी के लिए जिस तरह का बना है, वंस अगेन टीम गॉडल वो डिसाइड करते हैं कि लॉस लियोन्स ही जाया जाए। टीम होराई स्पोर्ट्स मोस्ट लाइकली ग्लाइड करेंगे वंस अगेन आहिस्ता आहिस्ता हैस्टेड डेल पेट्रॉन की बैक एंड साइड से वाटर ट्रीटमेंट के आसपास से जो व्हीकल्स हैं उनको यूटिलाइज करके टीम आपको ला कॉब्रेरिया को जो है वो टच करते हुए दिखाई देगी। तो अगर ऐसा किया जाता है तो दोबारा से टीम होराई स्पोर्ट्स जिस तरह से हमने पिछले मैच में देखा, हो सकता है कि ये भी एक बेहतर मैच आपको बनता हुआ दिखाई दे जाए। बिकॉज लास्ट टाइम अराउंड टीम ने बड़े अच्छे पॉइंट्स निकाले और पिछले मैच के 18 पॉइंट्स थे एग्जैक्टली जो टीम होराई स्पोर्ट्स ने कंफर्म किए। और होराई स्पोर्ट्स का आज के दिन का ये दूसरा मैच रहा जहां पर उन्होंने 18 या आप समझ लें कि इनफैक्ट 18 ही पॉइंट्स 18 से ज़्यादा पॉइंट्स निकाले। बिकॉज इससे पहले भी 18 पॉइंट्स निकाले उन्होंने एक मैच में, दूसरा वो मैच था इरेंगल का वो पहला मैच था, का पहला मैच और उसमें 18 ही पॉइंट्स निकाले। लेकिन टीम यंग बड़ा डिफिकल्ट अभी तक के लिए जो सफर है वो रहा है। आखिरी मैच है आज का गाइस, आपको नंबर 5 में दिखाई देते हैं, लेकिन इसमें कौन सी टीम ऊपर आएगी और कौन सी टीम नीचे जाएगी, पीछे 18 टीम फाइनल्स में जाएगी, कौन सर्वाइवल में और कौन अपने घर का डिफेंडिंग चैंपियंस का कि ये लास्ट मैच था, इसके बाद भी निकल चुकी है। 6 मैचेस रहते हैं, आपको ये जो चीज़ है उसको जहन में जरूर रखना पड़ेगा। लेकिन बट ये आज के दिन का आखिरी मैच है, हो सकता है कि ये जो आखिरी मैच है जाते जाते इस मैच के अंदर कोई
डोमिनेशन है वो आपको दिखाई दे जाए, चाहे वो टीम गॉडल है, चाहे वो टीम अल्फा 7 है, चाहे वो S2G है, चाहे वो त्याम्बा, कोई भी डोमिनेट कर सकता है। बिकॉज अगर मैं नामों की बात करूँ तो डोमिनेट कर रही है, इन नामों के अंदर पोटेंशियल कहीं कहीं हमें दिखाई दिया है। अगर आप गॉडल की बात करें फॉर एग्जांपल, तो गॉडल आई थिंक जो एक डिफरेंट चीज़ आपको दिखाई देती है फ्रॉम द ग्रुप ए टीम OG, जिस तरह से हमें वहाँ पर वो खेलते हुए दिखाई दिए। देयर इज़ नो डाउट कि OG के जो ओवरऑल पॉइंट्स थे वो ज़्यादा थे टीम गॉडल के मुकाबले में। बट आई थिंक द अदर थिंग, अगर आप दूसरा पर्सपेक्टिव एक देखें तो वो ये है कि टीम गॉडल का जो यहाँ पर एलिमिनेशंस का नंबर है या एलिमिनेशंस की जो परसेंटेज है उनके पॉइंट्स में वो ज़्यादा है। टीम गॉडल का एक ऐसा मैच भी इनफैक्ट आज ही के दिन पर जहाँ पर उन्होंने 11 एलिमिनेशन पॉइंट्स निकाले। आई रिमेंबर दो कि हमने टीम OG को जब देखा था तो OG का आपको शायद एक मैच का विनर चिकन डिनर दिखाई दिया था जहाँ पर उन्होंने 10 एलिमिनेशन और 10 पॉइंट्स चिकन डिनर के हासिल करके टोटल 20 पॉइंट्स निकाले थे। तो प्रोबेबली दिस इज अ डिफरेंस जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा एग्रेशन में जो है वो आपको गॉडल आप लेटर लाभ कमाना चाहते हो हेल नाम है, यहाँ पे भी पॉइंट्स चाहिए, उस तरह से सफिशिएंट पॉइंट्स नहीं आए हैं। क्या हाल है? उसके अलावा वुल्व्स जिनकी मैंने बात की थी पिछले मैच में कि टीम वुल्व्स, उनको हम अच्छा खेलते हुए देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा लगा कि उन्होंने फाइनली अच्छा खेला। टीम वुल्व्स पहले नंबर 15 पर थे और अब आपको जो है नंबर 11 पर दिखाई दे रहे हैं। 4 जो रैंक्स है उन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया है, अपने आप को ऊपर लेकर वो आए हैं। और इस मैच के अंदर भी मजीद अगर कुछ वैसी ही परफॉर्मेंस आई, अगर वैसा ही टॉप 3 का आपको सर्वाइवल दिखाए। PL से पूछो, उसको ज़रूरत है। एडसेंस काफ़ी कम पे देते हैं भाई। मैं तो यूट्यूब की कमाई पे नहीं हूँ मेरे भाई। मैं तो यूट्यूब से इनफैक्ट बहुत कम निकालता हूँ। मेरे को सारा देती है तो PUBG वाली देती है, PUBG वाले देते हैं मेरे को सारा कुछ, समझे? I'm इन्फ्लुएंसर ऑफ PUBG मोबाइल लेने का। पर वो भी हैं 30 पॉइंट्स पे। ये लाइव भी कर रहा हूँ, इसके भी मेरे को मिलेंगे। क्या आप कड़े करोड़ों गवाना चाहते हैं? आई थिंक अपना ही कंपटीशन बना रहे हैं और ऊपर वाले जो बस ऊपर ही जाते जा रहे हैं, तो ये जो है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन वाइटैलिटी उनके प्लेयर्स बहुत खुश हैं, उनको होना भी चाहिए। वन साइडेड डोमिनेशन की है इस टीम ने, रिप्रेजेंटिंग ऑब्वियसली इंडोनेशिया, द साउथ ईस्ट एशियन रीजन। कि इस टीम की तरफ से आपको एक प्योर डोमिनेशन के साथ ग्रैंड फाइनल्स की जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ से मुमकिन होते हुए नज़र आई है। एंड आई थिंक बड़ा आसानी के साथ अब आप कह सकते हैं कि टीम ये जो नाम है वाइटैलिटी का, वो तो जाने ही वाला है ग्रैंड फाइनल्स में, चाहे कोई और जाए या ना जाए, चाहे कोई टीम कल के दिन पर आपको जो है वो कम बैक करके क्वालिफाई करते हुए दिखाई दे। लेकिन वाइटैलिटी इनको अब जो है वो नीचे टॉप 1 से ज़्यादा दूर करना या टॉप 5 से इनफैक्ट जो ज़्यादा दूर करना, वो आपको मुमकिन होता हुआ नज़र आ नहीं रहा है। वो आपको पॉसिबिलिटी जो शायद अब 0.1% तक जाते हुए नज़र आ रही है। इनफैक्ट वहाँ पर भी शायद हम उसको माइनस कर देते, शायद 100% ही वो चांस है आउट कर दिया जाता है टीम की तरफ से। और अगर इस मैच में फिर 100 के उन्होंने मार्केट आपसे बात करने आया हूँ यार। अच्छा, मैं तो फ्लेयर करने का सोच रहा था। क्या बात है? टॉप 5 से जो निकाल सकती है। लेकिन अल्फा 7 के कारिहो, गुइजाओ, अल्फा 7 के रेवो, अल्फा 7 के यार ये वाइटैलिटी आज के दिन बहुत कुत्ते वाली खेल रहे हैं यार, वन साइडेड जा रहे पूरा। ये टीम कुछ ऐसे मैचेस को, खासतौर पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच को, जिससे इनको एक बड़ा शिफ्ट मिले, एक बड़ा जंप मिले और ये टीम भी आपको लगे कि हाँ वाकई वर्ल्ड कप चैंपियंस हैं, 2024 के PMGC 2025 के चैंपियंस हैं। और अल्फा 7 भी वर्ल्ड कप खेलने आई है, वर्ल्ड कप में डोमिनेट करने की नियत लेकर आई है। क्योंकि अभी तक अनफॉर्चुनेटली अल्फा 7 भी आपको वैसा कुछ है वो करने के लिए जाते हुए दिखाई नहीं दे पा रही। और इसकी वजह आपके बिल्कुल सामने जो पहले भी हमने बात की, लेकिन मैच का फर्स्ट एलिमिनेशन लूफा वो कंफर्म करेंगे और ये किया जाता है टीम डॉपनेस की तरफ से। डॉपनेस के प्लेयर है लूफा, जिन्होंने एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म किया और इनके साथ अभी के लिए स्पाइका हैं। इनके टीममेट्स में बाकी जो प्लेयर्स हैं वो आसपास ही होंगे। शॉटगन आपको चेंज कर लेनी चाहिए, आई थिंक करेंगे थोड़ी देर के अंदर। और इवेंचुअली टीम डॉपनेस, वैसे बड़ा कंफ्यूजिंग है इनका टैग, क्योंकि फॉर अ सेकेंड दो अगर आप देखें तो आपको लगता है शायद कि जैसे 1 लिखा हो, ONE आपको दिखाई देता है। बट देन जब आप नाम पढ़ते हैं तो जाहिर आपको रियलाइज़ होता है कि ये ONE नहीं है बल्कि ये DNE है। सो डॉपनेस जी, यस दिस इज द टीम। आई थिंक ऐसे अगर टैग की हम बात कर ही रहे हैं तो मुझे लगता है कि टॉपनेस का जो टैग है ना वो DOP होना चाहिए था, DOPE हो जाता तो होना चाहिए था। हाँ, ज़्यादा बेहतर DOP जी हाँ बिल्कुल होना चाहिए था उनका टैग। एंड उन्होंने 1 रखा हुआ है, आई डोंट नो व्हाई इज़ इट। लेकिन खैर अभी के लिए टैग से बाहर निकल कर हो रहा ई स्पोर्ट्स की बात करते हैं। सेकंड स्पॉट पर हैं 59 पॉइंट्स, 88 पॉइंट्स के ऊपर पहला नंबर है।
एंड हो रहा ई स्पोर्ट्स दे कैन, आई रियली बिलीव इन देम कि इतनी काबिलियत है हो रहा ई स्पोर्ट्स की कि इस एक मैच के बाद वो शायद इस सारे डिफरेंस को नैरो डाउन कर पाएंगे। बट हाँ, वही बात है कि विटालिटी ने जो एक स्टैंडर्ड लॉबी के अंदर बना दिया है, अब उस स्टैंडर्ड को तोड़ने के लिए आपको उन्हीं की तरह बल्कि उनसे बेहतर खेलना पड़ेगा। विटालिटी कंसिस्टेंट भी है और डोमिनेटिंग भी है। पिछले कई मैचेस से वो कंसिस्टेंटली डोमिनेट कर रहे हैं, चाहे चिकन डिनर्स आए या ना आए, उनकी डोमिनेशन बरकरार है इस ग्रुप के अंदर। एंड इसको अगर तोड़ा ना गया इस मैच के अंदर भी, अगर वो हाँ पीएल बाबू कहाँ तक पहुंचा तेरा? निकाल कर अगर लेकर चले गए तो फिर दिक्कतें बन जाएंगी पहले पायदान के लिए। लेकिन ये लो आ रही है, वो थोड़ा हार्ड शिफ्ट खाएगा। गॉडल बिल्कुल सर्कल के सेंटर के अंदर आ चुकी है। लॉस लियोनेस को अबैंडन कर दिया है सर्कल ने। चुमासेरा, लॉस लियोनेस और पिकाडो के बिल्कुल बीच में जाकर, जो ओपन फील्ड है पूरी रिजिस से भरपूर है ये जगह, वहाँ पर जाकर सर्कल एक हतमी फैसला सुनाता है। वहीं पर गॉडल के लिए अब काफ़ी दिक्कतें शायद बन सकती हैं क्योंकि वो सेंटर में आ चुके हैं। आप देखें कि पोर्टल जैसे ही सर्कल का शिफ्ट आया, गॉडल सेंटर में आई, उनको भी अंदाज़ा नहीं, इतना टाइम ही लॉबी ने उनको नहीं दिया कि वो अपना पोजीशन चेंज करें। अगर वो सेंटर में हैं, कहीं और साइड्स पर जाना चाहें, इतनी जल्दी टीमें रोटेट कर कर उनके सराउंडिंग्स में आ चुकी हैं। बिल्कुल। और इनफैक्ट थोड़ा अर्ली ऑन हमें यहाँ पर जो है ऐसी कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि एक अच्छा पीएल एक बार ओल्ड वाली वाइब चाहते हैं इन बिना तेल के। आए अब केला चैट पढ़ ले, कौन सा कोने में चला गया है। अब मेरी लेट चली गई थी, मैं यूट्यूब चलाने गया था। वो एरिया है जिसको आप कवर कर सकते हैं, आप कहीं पर भी जा सकते हैं, लेकिन समहाउ ये जो सर्कल का सेंटर है, सर्कल के लिए जो हमें एरियाज बनते हैं वहाँ पर ही टीम्स आ रही हैं। लेकिन लास्ट मैच रह गया, फाइट उनकी हमें यहाँ पे छिड़ते हुए दिखाई देगी और शानदार नॉकआउट उन पर उन्होंने जंप किया और वो प्लेयर एलेको जो कि इनको नॉकआउट करना चाह रहे थे विद द ग्रेनेड, उनके ऊपर ही डायरेक्ट जाकर उन्होंने उनको नॉकआउट दे दिया। सो टीम 721 प्रॉबेबली वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ऐसा उनको यहाँ पे सरप्राइज दिया जाएगा, लेकिन नॉन्गशिम जाहिर है आपने उनको जब जर्ब लगाई तो उन्होंने भी आपको जवाब देना था। और ये एक ऐसी टीम है जो कि आज के दिन पर पीछे हटते हुए नजर नहीं आई इन टर्म्स ऑफ द कंपटीशन, इन टर्म्स ऑफ एलिमिनेशंस। और वेरे चिकनर्स की भी बात की जाए तो बैक टू बैक आपको ये नाम जो है कुछ मैचेस को आज के दिन पर विन भी करता हुआ दिखाई दिया। द ओनली टीम प्रोबेबली जिन्होंने 2 चिकनर्स किए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी समहाउ आपको नंबर 4 पर भी ये दिखाई दे जाते हैं, तो ये भी एक वजह है। लेकिन फिर भी नॉन्गशिम रेड फोर्स अब उनको हम देखेंगे कि कंपाउंड्स की जानिब आए हैं, यहाँ पर भी इंतज़ार किया जाएगा। लेकिन जहाँ इस सारे कुछ इंतज़ार है वहाँ पर टीम ETSH और ईडा ये इंतज़ार नहीं करने वाले, इनके दरमियान कुछ झड़प जो है वो हो चुकी है। वहाँ से आपको एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म होते हुए दिखाई दे जाएंगे। ETSH अपना पहला पॉइंट निकालेगी, उसके बिल्कुल मुकाबले में ईडा, उन्होंने अभी तक कोई एलिमिनेशन पॉइंट निकाला तो नहीं, लेकिन उनका पहला ये खिलाड़ी था जो अब इस मैच से एलिमिनेट हो चुका है। सो मैच का 11वां मिनट है, 11 मिनट अब हो ही चुके हैं ऑलमोस्ट, लेकिन 4 खिलाड़ी एलिमिनेट हो जाना थोड़ा सा इंडिकेट कर रहा है कि मिरामार के मैच के हिसाब से इस मैच में काइंड ऑफ एग्रेशन आने ही वाला है और ज़्यादा वक्त नहीं है। स्टेज 3 का बनना है, जिस तरह से टीमें पहले मौजूद हैं, शायद आप एक्सपेक्ट करें कि आने वाले 1 से 2 मिनट में आपको कोई टीम भी एलिमिनेट होते हुए दिखाई दे। ब्रो मेंबरशिप का बेनिफिट क्या है? आई वांट टू बाय। भाई मेंबरशिप का बेनिफिट ये है कि जो भी मेरी वीडियो आएगी उसका तुम लोगों को फर्स्ट पता चलेगा, और जो भी मैं मेंबरशिप में लाइव या वीडियो पोस्ट करूंगा वो तुम लोग देख पाओगे। सेकंड बेनिफिट ये है कि जब चैट करोगे, अभी तो फिलहाल वॉचिंग कम है क्योंकि मैं वॉच पार्टी कर रहा हूँ, जब मैं गेम खेलता उस टाइम से टिकटॉक आती है, उस टाइम मैं चैट नहीं रीड कर पाता, इतनी फास्ट जाती है। तो मेंबरशिप का ये है कि उनका चैट ना सेपरेटली दिखता है, तो मैं तुम लोग की चैट भी इजीली रीड कर पाऊंगा, ये बेनिफिट है। और आगे इन फीचर अगर मैं जो करूंगा और अगर मैंने मेंबरशिप वाली पोस्ट में डाला तो वो उसका भी तुम लोगों को पता चलेगा। और दूसरी बात, इमोजीज एक्सक्लूसिव जो मेरे खुद के अपने, तो वो भी तुम लोग देख पाओगे, एवरीथिंग वो भी तुम लोग यूज़ कर पाओगे, आई मीन चैट में। सो मच। भाई 40 कहाँ है? 40 फाइनल्स में।
ओह वालेकुम अस्सलाम बिल्लू पाजी। हाउ मच? मेरी मेंबरशिप सबसे सस्ती है, तुम खुद देख लो। जी हाँ, और समहाउ आई थिंक यस, हमें जो है वो अभी के लिए टीम अल्फा 7 उनके प्लेयर्स भी नॉकआउट होते हुए दिखाई दे जाएंगी एंड टीम का अल्फा 7 के कार्य हो वो नॉकआउट हो जाते हैं। गुएसो द प्लेयर भी नॉकआउट। अगर ये जोनाथन होता तो गोल्ड लाइक टॉप 5 में होती। हाँ मे भी हो सकते हैं। थोड़ी देर पहले जिन फाइट्स की बात की गई कि हमारे सामने ये प्लेयर्स हैं, एक्सपेक्टेड रहेगा कि आने वाले टाइम में हमें कोई टीम जब एलिमिनेट होते हुए दिखाई दे। आई थिंक दिस इज द टाइम जहां पर अब आपको वो जो लम्हा है, वो मोमेंट है, वो आता हुआ दिखाई देने वाला है। टीम अल्फा 7 मोस्ट लाइकली जिस तरह से उनके 3 खिलाड़ी भी स्मार्ट से एलिमिनेट हो चुके हैं, वो ऑब्सक्योर भी अब हमें जाते हुए दिखाई दे और टीम अल्फा 7 ही यूरी प्लेज वाइटी। आपको मेरे बारे में इतना जानने की क्यों वो है? मतलब आई विल नॉट टेल यू कि मैं कहां पर रहता हूं। नाम बता दूंगा, साबित है मेरा, बट स्टडी से क्या करता हूं। 14-0-0 पर स्टडी मैंने भी कर ली सेकंड ईयर। लेकिन होराई स्पोर्ट्स वो भी इनको फॉलो करेंगे और टीम अल्फा 7 टीम होराई स्पोर्ट्स और रहता मैं अपने घर पे नाम है, 2 बड़ी टीम्स हैं और होराई स्पोर्ट्स जिस तरह से उन्होंने आज के दिन पर खेला भी था, अपार्ट फ्रॉम टीम अल्फा 7 हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कितना जल्दी वो एलिमिनेट हो जाएंगे, लेकिन स्टिल वो भी गए और दैट टू आई थिंक कोई भी इनको खास पॉइंट्स इस मैच से नहीं मिले। 88 पॉइंट्स और 59 और अब जो है वो मजीद टीम वाइटैलिटी को यहाँ पर जब मौका मिल जाता है कि वो अपनी जो लीड है वो बढ़ाते चले जाएं। ई अरीना उनको थोड़ा मौका मिलेगा कि वो कुछ पॉइंट्स निकाले टीम होराई स्पोर्ट्स को थोड़ा नीचे करने के लिए, लेकिन स्टिल हमारा जो सर्कल है उस पर वापस आते हैं और सर्कल शिफ्ट लेकर जा चुका है। आपको काफ़ी सारे जो नाम है वो सर्कल के अंदर दिखाई दे रहे हैं। टीम वुल्फ सर्कल के थोड़ा सा बाहर की जानिब अभी भी, और वैसा ही शायद टीम वुल्फ करना चाह रही है जो उन्होंने पिछले मैच में किया। पेशेंस और जो एलिमिनेशंस हैं वो निकालें पहले और उसके बाद जाके अपनी जो जगह है वो एजेस पर यहां पर होल्ड करते हुए टीम आपको मैच में टॉप अकाउंट सेलर, दैट्स व्हाई आई थिंक आई बाय योर मेंबरशिप। काफी स्मार्ट प्ले किया गया है मेरा मार के मैचेस में और बड़ी ही तेजी के साथ नंबर 15 पर ये मौजूद थे लास्ट मैच से पहले। तो मुश्किल है आप देखें क्योंकि पाकिस्तान में नहीं पाई पर आ चुकी है वुल्व्स भी। जी हाँ बिल्कुल, एंड वुल्व्स ई स्पोर्ट्स अभी फिलहाल के लिए नंबर 7 के ऊपर 4 एलिमिनेशन पॉइंट्स हासिल कर आ चुके हैं एंड वुल्व्स ई स्पोर्ट्स बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने स्टेप अप किया है। एंड आखिरी मैच इसी तरह का होता है, कुछ टीमें नीचे से उठकर कोशिश अपनी जान मारती हैं कि वो आगे मजीद बढ़ पाएं, लेकिन अल्फा 7 इस मैच से बाहर हो चुकी है जो कि अपने ही आप में आई वुड से कि एक अच्छी चीज़ नहीं है। अल्फा 7 बीइंग वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड टीम्स इन PUBG मोबाइल ई स्पोर्ट्स हिस्ट्री, ये साल उनके लिए इतना कुछ बेहतर नहीं चल रहा है। इससे पहले S1 मेन इवेंट के अंदर वो आई वुड से कि पहले स्टेज से ही बाहर हो चुके थे, ग्रुप स्टेजेस से ही PMGO के बाहर हो चुके थे एंड ओवरऑल भी इतना कुछ अच्छा नहीं खेल पाए वो ग्रुप स्टेजेस के अंदर PMGO के, एंड यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। लेकिन अल्फा 7 कल के दिन हो सकता है शायद अपनी जगह फाइनल्स के अंदर ना बना पाए अगर ऐसा ही चलता रहा, लेकिन वुल्व्स ई स्पोर्ट्स अनफॉर्चुनेटली उनको कर्ज लगता हुआ अभी आए ही थे ऊपर और अब उनको एलिमिनेट कर दिया जा चुका है। एंड वुल्व्स ई स्पोर्ट्स TT प्रोजेक्ट को अपने चारों के चारों एलिमिनेशन पॉइंट्स दे बैठेंगे। वहीं पर गॉडल वो सर्वाइव कर रहे हैं, अतराफ में उनके त्यांबा के प्लेयर्स मौजूद हैं। त्यांबा के खिलाड़ी आखिरी 2 ही बाकी रह चुके हैं, ज़्यादा कुछ नुकसान शायद वो गॉडल को ना पहुंचा पाएंगे। गॉडल ने पहले ही एक एलिमिनेशन पॉइंट शायद त्यांबा के ऊपर कंफर्म अपने खाते में कर रखा है एंड गॉडल को चाहिए कि जल्द से जल्द बाकी के 2 खिलाड़ी त्यांबा उनको भी एलिमिनेट किया जाए ताकि ये कहानी यहीं पर खत्म हो और ये जो खतरा एक आसपास मंडला रहा है गॉडल के उसको जल्द से जल्द एलिमिनेट किया जाए। यकीनन, लेकिन अभी भी खैर जो है हमें इस चीज़ का जो जवाब है वो आने वाले वक्त में ही यहाँ पर मिलेगा और इसके लिए इंतजार कर लेते हैं चले। लेकिन टीम वाइटैलिटी वर्सेस टीम त्यांबा ये किलफिट में ज़रूर फाइट चलेगी और यहाँ वहाँ पर टीम त्यांबा के प्लेयर्स हैं जो कि अनफॉर्चुनेटली एलिमिनेट हो जाएंगे। एलिमिनेशन जहाँ हमें एक जानिब ये जो है वो कंफर्म होते हुए दिखाई दे रहे, वहीं पर कोचेज़ उनको भी आप देख पा रहे हैं ऑन द वेरी लेफ्ट साइड ऑफ योर स्क्रीन कोच कॉर्नर में। ये भी आई थिंक अच्छी चीज़ है कि कोचेस जो हैं वो आपको अरीना में जो दिखाई देते हैं उनके क्या रिएक्शंस होते हैं रियल टाइम तब उनकी टीम्स एलिमिनेट होती हैं, किस तरह से वो मैचेस को देखते हैं वो आपके सामने खत्म हो गया, 2 बंदे रह गए, ये इंट्रोड्यूस करवाया जाए कि टीम्स के जो कोचेस हैं यार वाइटैलिटी बहुत अच्छा खेल रहे हैं यार, बहुत अच्छा जोन को कंट्रोल करने का है। ये भी के लिए खैर हम लोग वहीं तक महदूद रखेंगे इस बात को और मजीद अब रुख करेंगे टीम वाइटैलिटी का, टीम डोपनेस का की जानिब और टीम HC
हसलर क्रू जिन्होंने कुछ ज़्यादा हमें मौका नहीं दिया कि हम इनके बारे में बात कर पाएँ, हम इनका जो है वो इनकी फाइट्स को देखें या कुछ बेहतरीन कुछ ऐसे मोमेंट्स आए हो कि चले हम तभी मेंशन कर दें कि टीम हसलर क्रू ने जो है कुछ आउटस्टैंडिंग सम हमें करके दिखाया है। सो हसलर क्रू आपको अब हमें जो है यहाँ पर गलत साबित करना है, हमें बिल्कुल चैलेंज करें और इस मैच में और दिस गोना बी अ प्रॉब्लम फॉर देम। ये एक बहुत बड़ी मुश्किल होगी इनके लिए फिलहाल। सर्कल वो हमारा क्योंकि हर तरफ से इनके ऊपर बंदे आएंगे, हर तरफ से। के साथ ही टीम गॉडल सर्कल के ऑलमोस्ट डेड सेंटर में आ चुकी है, टीम त्यांबा उनके बिल्कुल साथ मौजूद है। और जहां सर्कल का सेंटर आपके लिए एक अच्छी बात है, वहीं पर सर्कल का सेंटर में होना, सर्कल के सेंटर में आपका होना इनफैक्ट बहुत बुरी चीज भी है, बिकॉज़ स्लैमन्स आएंगे आपके ऊपर एक के बाद एक टीम आ जाती है और आप अनफॉर्चुनेटली जहां एडवांटेज ये देख मानिया को पड़ रही है, हर तरफ से एडवांटेज पर चले जाते हैं। सो ऑल्दो यहाँ पे कंपाउंड्स ये लोग पीक भी नहीं दे पाएंगे, पता है, शुड यूज देम। और अगर एक विंडो से लोग पीक देने की ट्राई करेंगे पिछले वाली जगह से मारे जाएंगे, हर तरफ से नहीं पड़ेगी। पर भी है कि वो किस तरह से अब देखते हैं इनकी किस्मत कैसे है। फिल वक्त वो ढूंढ रहे हैं कि प्लेज वैसे पील कितने डॉलर देते हैं पबजी वाले, मैं क्यों बताऊं, शायद आसपास से ही एलिमिनेट किए गए थे। जी हाँ बिल्कुल। एंड वहीं पर टीम टीटी प्रोजेक्ट अब कोई अननेसेसरी फाइट के अंदर उनको जाना नहीं है, क्योंकि सॉर्ट ऑफ कमबैक उनका भी आपको इस मैच के अंदर दिखाई दे रहा है। लेकिन 5-4 एलिमिनेशन पॉइंट्स करने के बाद नीचे रहती सेकंड पेज से कोई भी टीम कर आती है तो उसके बाद वो एलिमिनेट ही हो जाती है। एंड अभी आप देखिए कि टीटी प्रोजेक्ट अनफॉर्चुनेटली उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है वो यांग ऑन गैलेक्टिकोस से फाइट लेकर के सर्कल के अंदर बनाए। लेकिन दिस फाइट कुड बी रिस्की फॉर टीम टीटी प्रोजेक्ट, क्योंकि वहीं पर जहां पर ये मैच उनका एक रिडेम्पशन मैच साबित होने को है, 5 एलिमिनेशन पॉइंट्स इकट्ठे किए हैं। अब यहां से चूकना बिल्कुल भी नहीं है। अपने लिए छठा एलिमिनेशन पॉइंट उठाएंगे। इस सारी फाइट में इन दो टीमों के बीच में ई अरीना के आखिरी प्लेयर भी सर्वाइव कर रहे थे, जिनको एलिमिनेट कर दिया जा चुका है। ई अरीना जितना एग्रेसिव स्टार्ट उन्होंने किया आज के दिन का, उतना ही अब वो धीमी आंच पर आपको ये कुछ इख्तितामी मैचेस के अंदर खेलते दिखाई दिए हैं। लेकिन टीटी प्रोजेक्ट जहां पर एक नॉकआउट उनको दर्ज किया गया है, वहीं पर उसके एवज यांग ऑन गैलेक्टिकोस के 2 अदद खिलाड़ियों को तकरीबन वो नॉकआउट करने को है। स्माइल उनका एचपी लो रहेगा, लेकिन बैकयार्ड से एक और टीम आ चुकी है थर्ड पार्टी करने के लिए, टीम S2G का नाम रहेगा। और S2G अगर यहां पर रुकते हैं तो शायद वो यांग ऑन गैलेक्टिकोस और टीम टीटी प्रोजेक्ट दोनों को ही थर्ड पार्टी कर सकते हैं। लेकिन वहां से सीधा चलते बनेंगे नोंगशिम रेड फोर्स भी अतराफ में मौजूद है। टीम S2G, नोंगशिम रेड फोर्स, यांग ऑन गैलेक्टिकोस और टीटी प्रोजेक्ट की ये जो खिचड़ी यहां पर बनी हुई है, शायद एक या 2 ही टीमें इन चारों में से अपनी जान बचा करके अगले सर्कल के अंदर अपना हिस्सा बना पाएंगे। लेकिन वहीं पर टीटी प्रोजेक्ट आगे बढ़ती देखने को मिलेगी। यूटिलिटीज का बेहतरीन इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन आखिरी प्लेयर, इनफैक्ट एक प्लेयर को टीम S2G यहां पर छोड़कर चली जाएगी। हम CG शिकंजे में फंस जाते हैं और अनफॉर्चुनेटली अपना एलिमिनेशन पॉइंट बराबर का फॉर टीम टीटी प्रोजेक्ट 8वां एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म कर लेंगे। लेकिन टीटी प्रोजेक्ट अभी भी वो तलवार सर पर मंडला रही है, वो तलवार सर पर ही लटकी हुई है, जो किसी भी लम्हे शायद उनको इस मैच से एलिमिनेट करवा दे अगर उन्होंने टाइमली यहां से फॉल बैक ना किया तो। लेकिन यांग ऑन गैलेक्टिकोस वो आगे बढ़ेंगे टीम नोंगशिम रेड फोर्स की जानिब। जी हाँ, और अनफॉर्चुनेटली उनके पास पहले ही 2 प्लेयर्स यहाँ पर एलिमिनेट हो चुके हैं। सो एक डिसएडवांटेजेस फाइट है और टीम यांग ऑन गैलेक्टिकोस उनका इस फाइट में विन करना मुश्किल होगा और चैलेंजिंग होगा इनके लिए कि वो हमें यहाँ पर जब एक अपसेट करते हुए दिखाई दे। लेकिन सिर्फ फाइट जो वो तो खैर आपको करना ही पड़ेगी। लेकिन ईना द ग्रेनेड्स और टीम त्यांबा जो कि यहाँ पर कुछ देर से भी सर्वाइव करते हुए दिखाई दे रही थी, इनके 2 खिलाड़ी काफ़ी देर से टीम गॉडल के साथ ही मौजूद रहे। लेकिन अब ये ग्रेनेड आए और टीम ईडा की तरफ से इनको इस मैच से एलिमिनेट कर दिया गया। सो टीम टीटी उनके पास अभी के लिए कुछ डिसेंट पॉइंट्स हैं। इसके साथ साथ इनफैक्ट अगर हम कुछ और ऊपर टीम्स की बात करें, 4 शायद आपको पॉइंट्स दिखाई दे जाते हैं टीम S2G के। उसके अलावा अगर आप देखें तो 2 हैं, एक करके इस तरह पॉइंट्स हैं। सो ज़्यादा जो पॉइंट्स अभी तक के लिए हमारी टीम ने निकाले नहीं हैं। सो दिस इज द टाइम प्रॉबेबली जब आपको अपने पॉइंट्स बढ़ाना है, जब आपको फाइट्स में जाना है। लेकिन YG के रोमियो अभी के लिए उनकी तरफ से कोशिश की जाएगी कि वो एलिमिनेशन पॉइंट्स कंफर्म करें। लेकिन जहां पे एलिमिनेशन पॉइंट्स कंफर्म करने के लिए गए, वहीं पर टीम YG उनके प्लेयर्स को चैलेंज किया गया। टीम YG ने अपना एक और खिलाड़ी यहां से गंवाया और अब सिर्फ इकलौता खिलाड़ी स्माइल वो अपनी टीम के लिए यहाँ पर मौजूद रह चुका है। सो टीम टीटी वो टीम YG ये भी हमारे सामने हुआ। टीटी प्रोजेक्ट वो तो इस मैच से गई, लेकिन YG क्या वो भी बचेंगे? इनफैक्ट अनफॉर्चुनेटली इसका जो जवाब है वो आपको ना में आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि टीम नोंगशिम रेड फोर्स ऐसा होगा नहीं कि वो यहाँ पर इस प्लेयर को बख्शें। ऐसा होना भी नहीं चाहिए, बिकॉज उनके पास नंबर्स का एडवांटेज है, उनके पास यहाँ से एक हाइट एडवांटेज है, उनके पास हर ही एतबार से एडवांटेजेस फाइट को विन करने के लिए। दे यू गो दो सो इजी, इसको इजी ही रहने देंगे और टीम यांग ऑन गैलेक्टिकोस आसानी इस बात से भी
एलिमिनेट कर दी गई। टीम ने 34 टोटल पॉइंट्स निकाले जब उस मैच से एलिमिनेट किए गए। 4 उन्होंने यहाँ से एलिमिनेशन पॉइंट्स कंफर्म किए गए कि कोई भी इनके पास प्लेसमेंट पॉइंट नहीं था जो टीम ने कंफर्म किया। सो इसका मतलब अब ये है कि टीम गॉडल जिनके पास 4 खिलाड़ी हैं, टीम वाइटैलिटी और टीम डॉपनेस जिनके पास 4 खिलाड़ी हैं, ये वो 3 नाम हैं जो कि ज्यादा कहीं आपको फेवरेट बनते हुए दिखाई देते हैं। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, लेकिन ETSH काफी एक आई वुड से कि शायद पहला ही मैच है जहां तक यहाँ तक वो आने में कामयाबी हासिल कर चुके हैं, लेकिन अभी भी आई वुड से कि एलिमिनेशन पॉइंट्स उनके पास इतने अच्छे मौजूद नहीं हैं कि आप इस मैच को एक कमबैक मैच कंसिडर कर सकें। 9वें पायदान तक आ चुके हैं इस मैच के अंदर मैच रैंकिंग्स में, लेकिन यहाँ पर आकर के भी अगर एलिमिनेट होते हैं तो कोई भी प्लेसमेंट पॉइंट उनको मिल नहीं पाएगा। वहीं पर गॉडल आसपास मौजूद है, बिल्कुल सामने ठीक उनकी फाइट चल रही है। बैकयार्ड से भी कुछ शॉट्स फायर आ रहे हैं थर्ड पार्टी की सूरत में। BHAI स्पोर्ट्स भी अतराफ में 2 खिलाड़ी हैं। ETSH का यहाँ से बचकर निकलना अभी के लिए तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल ही लग रहा है, लेकिन गॉडल वो बड़ा संभल कर खेल रहे हैं। गॉडल को थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाना चाहिए आई वुड से, इतना अंडर प्रेशर ऑलरेडी ETSH हैं, और बज़ाहिरी जब आप एक टीम के साथ फाइट लेते हैं आपको अंदाज़ा हो जाता है कि टीम अंडर प्रेशर है या नहीं है। लेकिन गॉडल शायद इस चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहती है कि वो बाहर अगर निकले तो उनको थर्ड पार्टी भी किया जा सकता है, लेकिन यूटिलिटीज़ का इस्तेमाल करना है। ग्रेनेड्स ऑलरेडी उनके पास इतने ज़्यादा मौजूद नहीं है, और एक हेड ऑन फाइट है। BHAI स्पोर्ट्स थोड़ा पीछे की जानिब मौजूद हैं। गॉडल अब उन्होंने फैसला कर लिया है, उनको आगे बढ़ना होगा। इनफैक्ट ETSH आगे बढ़ते हुए आपको देखने को मिलेंगे। ETSH के प्लेयर स्पीड गिराएंगे, 2 खिलाड़ी गिरते हैं। एडमिनो एस पावर को ग्रेनेड से गिरा देते हैं, अपने ही प्लेयर के बने जान के दुश्मन गॉडल के प्लेयर्स। लेकिन अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली आप कहें गॉडल के लिए ETSH बाहर कर दी जाती है। बाल बचती जरूर है टीम गॉडलाइक, लेकिन वहीं पर BHAI स्पोर्ट्स अगर उन्होंने थर्ड पार्टी कर दी, जो कि अभी तक के लिए तो वो करते दिखाई नहीं दिए, लेकिन अगर कर देते तो शायद गॉडल हमें इस मैच से बाहर होती देखने को मिल सकती थी। लेकिन वहीं पर गॉडलाइक अपने प्लेयर्स को रीसेट कर चुकी है, और ये रीसेट करना कहीं ना कहीं उन्हें एक कदम मजीद नजदीक ले आएगा इस मैच के चिकन डिनर के। बिल्कुल आई थिंक एक अच्छी फाइट टीम गॉडल की तरफ से विदाउट अ डाउट, और जिस तरह से उन्होंने अपनी फाइट में जो प्लेयर्स हैं उनको बचा के रखा। प्लेयर एक नॉकआउट ज़रूर हुए, लेकिन उसके बाद उनको रिवाइवल दे दिया गया। और टॉप 7 के अंदर टीम का आ जाना, सर्कल के ऑलमोस्ट एज पर भी वो अभी के लिए आपको रहते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो गॉडल आई थिंक डिसेंट इस मैच में चांस है उनका भी विनर से कंसिडर करने के लिए, जिस तरह से पहले बात की गई अलॉन्ग साइड टीम वाइटैलिटी, अलॉन्ग साइड टीम डॉपनेस, जिनके पास 4 प्लेयर्स हैं अभी तक के लिए भी इस मैच के अंदर मौजूद हैं। लेकिन सर्कल वंस अगेन विल डिसाइड कि आखिर कौन हमें सर्कल में रहता हुआ दिखाई देगा, किससे सर्कल दूर जा रहा है, और आने वाला ये जो 1.5 मिनट है उसके हिसाब से टीम्स किस तरह से अपने आप को मजीद सर्कल में लेकर जा पाएंगी। सो हमारा जो टाइमर है वो स्टार्ट हो चुका है। आपको जस्ट फाइट्स अगर करना है तो जल्दी कंप्लीट कर लीजिए, अगर आपको यहाँ से निकलना है तो निकल लीजिए, और जल्द से जल्द अपने जो डिसीजन मेकिंग है उसको यहाँ पे करिए, लेकिन किया जाए आपकी तरफ से। लेकिन यहाँ से नेड्स अब हमें जाते हुए दिखाई देंगे, और नॉन्गशिम के सो इजी, बेशक उनकी तरफ से यहाँ पर थोड़ा सा लो ग्राउंड के बाद डिसएडवांटेज है, लेकिन फिर भी वो यहाँ से फाइट करना चाहेंगे। टीम नॉन्गशिम के टीजी वो बैक साइड पे मौजूद हैं, उनकी तरफ से भी स्मोक्स का यहाँ पर जो जाल है वो बिछाया जाएगा, और स्मोक्स काफी एक सीध में यहाँ पर उनकी तरफ से किए जाते हैं। यहाँ पे टीम 721 ने स्मोक्स की है, बिकॉज़ प्लेयर्स अब आएंगे वही कर लेकर उस काम में दे देंगे टीम नॉन्गशिम के प्लेयर्स के ऊपर। टेजी विद द फाइट, लेकिन पैडल्स इन द किल फीड, वहां पर भी ये फाइट है, लेकिन मास्क को राइट है, टेजी उनको नॉकआउट करेंगे। सो इजी विद द आंसर, वो मास्क को कभी नॉकआउट करते हुए दिखाई देंगे। एंड राइट एट द सेम टाइम रेहान जो कि साथ ही आए थे आगे की जानिब, उनको भी पकड़ लिया जाता है। एंड टीम नॉन्गशिम रेड फोर्स वो यहाँ पे इस्लामैन जो कि लगा कि शायद टीम 721 का एक स्मार्ट मूव है उसको एक गलत मूव साबित कर देती है, और 721 अब सिर्फ एक खिलाड़ी पर, और टीम नॉन्गशिम रेड फोर्स उनके पास पहले भी 3 थे, अब भी 3 है, क्योंकि वो जो रिवाइवल है शायद दे दिया जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको गलत साबित किया गया। उनको कंफर्म किया प्लेयर ने, लेकिन जब वो कंफर्मेशन आप देने जा रहे थे टेजी को मौका मिला, एंड टेजी ऑब्वियसली मेड श्योर कि वो आपको इस मैच से अब एलिमिनेट करके ही जाएंगे। डाउन टू द टॉप 6 टीम्स, लेकिन डॉपनेस वर्सेस वाइटैलिटी बैटल करना है आपको, लेकिन अभी नहीं करना है बैटल, अभी सर्कल में जाना है। लेकिन जहां पर भी जाएंगे वहां पे खिलाड़ियों को पाएंगे, और जैसे टीम नॉन्गशिम के पास आप आए आसमान से गिरे खजूर लट के, और यहाँ पर क्या हुआ टीम डॉपनेस के साथ? आई थिंक सिर्फ सिलेक्शन इन्होंने यहाँ पर करना थी कि आखिर फाइट लेकर मरना किसके हाथों है, क्या टीम वाइटैलिटी या नॉन्गशिम रेड फोर्स? जी हाँ बिल्कुल, और उन्होंने
अपनी पिक चूज Vida की है, versus अब इस Gordon. मैच से बाहर हो चुके हैं। लेकिन हसलर्स क्रू उनके आखिरी प्लेयर वो भी अनफॉर्चुनेटली आपको थोड़ी देर में एलिमिनेट होते देखने को मिलेंगे। ईडा ई स्पोर्ट्स और गॉडल, वहां पर एक फाइट शुरू होने वाली है जहां पर ईडा ई स्पोर्ट्स बेशक उनके पास मिन एडवांटेज बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन 2 अदर प्लेयर्स गॉडल के आगे भेजे जाएंगे सामना करने के लिए। नुकसान पहुंचता है Gordon जरूर, versus थोड़ा Ida. बहुत यूटिलिटीज का इस्तेमाल किया गॉडल ने, लेकिन गॉडल के प्लेयर्स अभी भी संभल कर खेल रहे हैं। ईडा ई स्पोर्ट्स के खिलाड़ी वो भी ज्यादा कुछ गलतियां आपको करते देखने को नहीं मिल रहे हैं। सारा का सारा गेम यूटिलिटीज के ऊपर डिपेंड करता है। डार्कन इनफैक्ट रीता का ग्रेनेड जाएगा, एस पावर को घुटनों पर लेकर आता है। गॉडल वो मशहूर थोड़ा सा हो चुके हैं अपने ही प्लेयर्स को ग्रेनेड से उड़ाने में, लेकिन अभी फिलहाल के लिए टीम गॉडल जैसे तैसे कर कर अपने लिए सर्वाइवल यकीनी बनाए रखे हैं। अच्छे एलिमिनेशन पॉइंट्स इस मैच के अंदर बेशक उन्होंने कंफर्म किया, पिछला मैच भी उनका बेहतर रहा, लेकिन रीता बार बार कोशिश कर रहे हैं कि शायद नुकसान पहुंचाया जाए। एडमिनो वापस से ग्रेनेड लेकर आएंगे, प्लीज इस बार अपने प्लेयर्स को नहीं गिराना एडमिनो, लेकिन डार्कन बिल्कुल सामने रहेंगे। रीता के जानिब ग्रेनेड फेंका जरूर जाता है, अपना पोजीशन चेंज करेंगे, वापस से एस पावर ग्रेनेड को करते देखने को मिलेंगे। रीता गेट्स पिक्ड ऑफ, एस पावर को पकड़ा जाता है। डार्कन आगे बढ़ करके एक और प्लेयर को नॉकआउट करते हैं। बैकयार्ड से थर्ड पार्टी भी हो चुकी है, लेकिन गॉडल इस फाइट से बाहर तो निकल आते हैं। ईडा ई स्पोर्ट्स के 2 अदर खिलाड़ियों को तो एलिमिनेट कर ही दिया, लेकिन 5 एलिमिनेशन पॉइंट्स के डोमिनेशन के ऊपर अनफॉर्चुनेटली यहां तक ही सरवाइव कर पाएंगे गॉडल के खिलाड़ी, और इस मैच से बाहर का रास्ता ब्लू जोन के जरिए उनको दिखा दिया जाता है। विटालिटी बैकयार्ड से थर्ड पार्टी उन्होंने की, एक एलिमिनेशन पॉइंट गॉडल के ऊपर कंफर्म कर पाए हैं। एंड गॉडल की बात की जाए, जैसे तैसे कर 6 एलिमिनेशन पॉइंट्स और अच्छे प्लेसमेंट पॉइंट्स निकालने की वजह से टॉप 6 के अंदर अपना नाम ये टीम दर्ज कर चुकी है। लेकिन विटालिटी इनको कोई लगाम देने वाला है ही नहीं है। नॉन्गशिम रेड फोर्स सेकंड स्पॉट हासिल करेंगे, एंड विटालिटी बैक टू बैक 3 मैचेस से उनकी डोमिनेशन है। पोर्टल और 108 points in 6 matches. Nobody 108 पॉइंट्स 6 मैचेस। एक ही दिन पे 108 पॉइंट्स, यार क्या ही डोमिनेशन है। thinking, how's anybody gonna top that? Well, एक ही दिन में 108 पॉइंट्स, क्या बात है यार। Daddy Maka said thank you. विटैलिटी यस, क्या कहते हो, गेम खेले? शुड वी ट्राई गेम लिटिल बिट, वो भी वार्म मोड थोड़ा बहुत। Expectations are now through the roof for this squad, right? You gotta have a good day tomorrow, and you know what? As a matter of fact, forget tomorrow, dude, right? You're good to go. Finals time, right? That's where your eyes gotta lock in. So you know what? Even if Team Vitality doesn't go crazy tomorrow, I want tomorrow to be their day of, you know what is it that we need to fix for the finals, right? Absolutely. Is it any little tiny little mistake that we can adjust? Even if they do something so wild just to work on that, I'd rather them do that there. So come finals time, they pop off. Absolutely. I mean, I was really impressed towards the end as well. Try. With Godlike able to. Let's go, let's play a little bit PUBG. भाई विटालिटी ने तो पूरा डोमिनेट कर दिया यार, मजा आ गया। गाइस क्या खेलें बताओ, व्हाट वी शुड प्ले? गाइस आज एक वार्म मोड खेलते हैं यार, छोड़ो हर चीज। अबे क्या है, लोकल टीम, क्रिएट टीम। आज एक वार्म मोड खेलते हैं और फिर जाते हैं।
आ जाओ गाइस, एनीथिंग। पहले एक बार सबको कोड शेयर करो। ओके, मैं 2 कोड शेयर करूंगा, 2 वार्म मोड्स के। ये हो गया 2v2 का कोड 28 54 24 93। एक ये 2v2 के एंड 3v3 का किधर है? 3v3 का ये रहा 28 56 90 10 10। ये 3v3 का है। गेम अटक गई। अब मैं रिस्टार्ट करके आया। हाँ, इसके बाद शायद चले जाओ। आज थोड़ा सा वार्म मूड खेलते हैं, फिर बस जाते हैं। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? Yo, me, what's good, bro? हेलो। सब बच्चे हो यार, सब बच्चे आ गए। बोलो। गाइस आ जाओ ना, एक और बंदा आ जाओ ताकि बस स्टार्ट कर ले। वालेकुम अस्सलाम। विंडो 10 और 11 मेरा 10 है। 9202। हेलो, मेरी आवाज आ रही? ओके, मेरी आ रही है। चलो 9202 9202 9189 9189। गाइस आ जाओ, ये टीम कोड है। बस एक किल के दफा होते हैं। जॉनी भाई, हम बैक। क्या बात है? यू आर बैक। गो बैक अगेन टू योर प्लेस। जीबी कौन सा? 1066 GB। यार एक बंदा आ जाओ ताकि एक गेम खेल के दफा हो जाए। आ गया। Oh yeah. Glitch. What a glitch. What a glitch.
me fix this she. प्रोसेसर कौन सा है मेरा? i5 13 जनरेशन है, 13400F। आप पिशोर में किस जगह से हो? HAI गेमिंग क्या हो गया यार? आप मेरे घर का लोकेशन क्यों जानना चाहते हो HAI गेमिंग भाई? पहली बात, मैं तो पिशावर में रहती नहीं हूँ, मैं अपने घर में रहता हूँ। यार what the hell is this? कल भी इंशाल्लाह टॉप 1 पर होंगे। हाँ 40 तो फाइनल्स में है, अभी तो टॉप 1 नहीं चाहिए हमें, अभी तो बस फाइनल में टॉप 1 90 पॉइंट्स और एक चिकन डिनर चाहिए बस। और वो मैचेस अभी नहीं होंगे, वो उस मैचेस में टाइम है अभी थोड़ा बहुत। एरिया कौन सा है? एरिया अर्थ में, एरिया अर्थ है। गेम इम्प्रूव करो भाई, मैं कैसे इम्प्रूव करूँ यार?
और कितने इम्प्रूव करें इससे ज़्यादा? मैं थक चुका हूँ, मैं जिससे नहीं हो रही गेम। रियल कीबोर्ड कौन सा? कीबोर्ड मेरे साथ एक लोकल है, लोकल कीबोर्ड है यार। ये तो शॉटगन में कैली खत्म हो जाता है। ओह माय गॉड, झूठ मत बोला। हाँ मेरे साथ लोकल है, नॉर्मल तो नहीं है, मैकेनिकल है बट लोकल है। बट कीबोर्ड बहुत अच्छा है। गेम साउंड कम करो भाई, गेम साउंड कम करो यार, अभी कर ही नहीं सकता मैं। माइनक्राफ्ट खेलो, बेस्ट आइडिया, बट माइनक्राफ्ट अभी इस तरह नहीं खेली जा सकती, मेरा नेट बहुत खराब चल रहा है। हाँ थक गया मेरा हाथ। Hey you! Are you doing some? No. Panz gaya. Hey! Panz gaya. No. If you are stuck, no revive, no team up, shim up. You gotta fight.
Oh my god. Oh my god. यार these two combos are so good यार. तो भी को. बेचारे को पता ही नहीं चला. Ah, hell no, man. Of a Ferrari. You are now the proud owner of a Ferrari. I can see him through this glitch. ये हैक नहीं, ये ग्लिच है. खबर इसके किधर है? नहीं दिख रहा अभी. Oh my god. PUBG shall fix this glitch यार. हैक नहीं है पागल, ये ब्लैक ग्लिच है. अल्हम्दुलिल्लाह. Oh velocity rate, let's go man. Let's go velocity rate. झूठे. हाँ ग्लिच है सबर, मैं तुम लोगों को बताता हूँ, दिखाता हूँ. मैं भी HDR करूँगा ना. ये देख पत्थर भी ग्लिच है, मुझे इस पत्थर के आर पर हर चीज़ दिख रहा है. अगर अभी मैं HDR करूँगा तो ये ग्लिच मज़ीद ज़्यादा हो जाएगा. मेरा करैक्टर ही काला हो गया. देख करैक्टर ही काला हो गया. क्या बात है, उधर ज़मीन ही काली होगी. अगर अभी मैं स्मूथ करूँगा तो ये सारा ठीक हो जाएगा. बट स्मूथ में क्या अच्छी नहीं लगती. खैर स्मूथ में कर लेते हैं.
पे ग्लिच आता है। अबे चढ़ जा, अबे चढ़ जा, रिवाइव ले लेगा। गरीब की वजह से खिचड़ी खा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अबे यार तुम क्या बंदे हो। ऑडियो चेक करो कितना फास्ट हो गया, ग्लिच। मैंने मारा इसे शॉट, अबे मैंने इसे इसने शॉट ही नहीं मारा। लेट्स से मैंने कितना डैमेज दिया, 181 का डैमेज। मैं भी एमुलेटर पर खेलता हूँ, मेरे साथ भी एक ग्लिच होते हैं। हाँ, और ये ज़्यादातर ओपन जेल में होता है, वैसे होता ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम पेल, अवेज फ्रॉम योर ओल्ड टीम। क्या बात है मेरे भाई, वालेकुम सलाम। अवेज फ्रॉम माय ओल्ड टीम, अरे हम तेरे भाई सेंसी दे दो क्या, नो रिक्वायल है। माउस डिप्लाई कितनी मेरी 1200, मेरी 1200 डिप्लाई और सेंसिटिविटी वेट ले में की गया। अरे मेरा नो रिक्वायल कहाँ पर है, मेरा तो हेल्प रहता है। दिस इज माय सेंसिटिविटी। Did he get it?
पिल भाई अरे कैसे हो? आई एम गुड, मुझे भी खिला लो नेक्स्ट मैच में प्लीज यार। मे बी दिस इज माई लास्ट। ओके मैं बहुत थक चुका हूँ, बहुत जल्दी वॉच पार्टी का। एंड आई वांना गो, मुझे अपने घर जाना है। अबे हिलो मत। उसने तो रिएक्शन ही नहीं दिया। चलो कोई बात नहीं। अरे क्या बात है, थैंक यू फॉर द अंडरस्टैंडिंग मैन। अपन बेस पावर की तरह मारते हैं जरा। You are now the proud owner of a Ferrari. हेलो जी, यो सुल्ताना खतीजा, I'm back। क्या बात है? You are back and I am about to go यार। Thank you. You are now the proud owner of a Ferrari. You are now the proud owner of a Hey Ferrari. you toxic. Why you wanna blast these cards, huh? PL by new ID. Nah, this is fan gifted यार, fan ने gift कर दी है। बड़ी मस्त account है। ग्लव्स देख के समझ गया था अकाउंट तो मस्त है। हाँ अरे क्या बात है, माशाल्लाह। यो थैंक यू मैन फॉर सेइंग माशाल्लाह। ओह माय गॉड, जल दिया। Bro, what's your PC specification? I will tell you in the end, bro. Just wait. इतना गंदा दो रहा हूँ मैं, गंदा दो रहा हूँ पागल हूँ। जियो पिल यो मेहर ज़ैद साहब।
जालिम फेज सेकंड अकाउंट मेरा ये नहीं लास्ट बट नॉट लीस्ट आखिरी मैच है गाइस एंड उसके बाद मैं साइन आउट हो जाऊंगा हाय हाय मजा आ गया भाई ये वो मूड तगड़ा है यार मेरा वाला यू गाइस शुड ट्राई दिस शेविंग प्लीज पीसी स्पेक्स ओके मैं तुम लोग को पीसी स्पेक्स बताता हूँ पीसी स्पेक्स गाइस यू गोटा ट्राई दिस वो मूड इसका कोड है ये 2854 2493 वेरी अक्याटेबल वो मूड एंड आज मैं तुम लोग को स्पेक्स बताता हूँ और देन मैं साइन आउट होता हूँ व्यू शो स्टॉप आइकन हटा देते हैं और अब देख रहे गाइस दिस इज मेरे साथ है i5 13 जनरेशन 400F और ये मेमोरी है 16GB DDR3 एंड GPU एरा जो कि 63 टेम्परेचर पे जा रहे हैं गन लैब दिखाऊँ ओके गन लैब दिखाता हूँ गन लैब भी इसकी अच्छी खासी है Thanks, Bill Boy. Oh, you welcome, man. Welcome. Don't say things to me, bruh. Are you crazy? My brother and sisters. ये कुछ ज़्यादा ही लंबी होगी यार स्ट्रीम कितना टाइम का हो गया 6 घंटे 21 मिनट 3 दिन हो गए और मैं इतनी लंबी लंबी स्ट्रीम्स कर रहा हूँ गाइस दिस इज समथिंग गुड यार अप्रिशिएट मी यार अप्रिशिएट मी आज गन लैब दिखाता हूँ गाइस इसमें अपने साथ आ जाती है SLR लेवल 3 ये लेवल 4 जो न्यू अभी आई है कार 98 AUG लेवल 1 ये हो गया ये लेवल 4 आ गई ये AWM लेवल 4 ये लेवल 1 है ये लेवल 7 है ये भी लेवल 7 है एंड ये नहीं है ये भी नहीं है ये भी नहीं है P90 लेवल 7 है स्कॉरल फाइनल फॉर्म है ये नहीं है ये भी नहीं है ये भी नहीं है ये भी नहीं है ये लेवल 5 है ये लेवल 4 है AKM लेवल 7 है ये भी नहीं है UMP लेवल 7 है 4 लेवल 7 है क्या बात है ये भी लेवल 7 है MR ये लेवल 3 ये लेवल 7 ये भी लेवल 7 M762 लेवल 7 क्या ही बात है AUG लेवल 7 स्कारल अनदर लेवल 7 लेवल 5 ये तो है ही नहीं ये लेवल 8 है क्या बात है इसके अटैचमेंट्स कितने हैं ये रहा 3x मिल जाते हैं होलो मिल जाते हैं ये अटैचमेंट्स क्या बात है यार ये लेवल 3 ये लेवल 4 ये वाली ओम UMP लेवल 7 ये वाली लेवल 4 है कार 98 लेवल 4 नाइस क्रॉसबो लेवल 3 क्या बात है ये लेवल 4 ये कौन सी गन है S32 इसका तो एक फुल नहीं है इसका भी फुल फॉर्म नहीं है ये लेवल 2 है एंड ये फाइनल फॉर्म है AKM लेवल 7 की जीजीज क्या बात है ये भी लेवल 7 M762 लेवल 7 ये हिट इफेक्ट तक है एंड रोजा लेवल 4 मिनी 14 लेवल 4 UMP लेवल 4 AKM लेवल 2 ये उजी लेवल 4 M24 लेवल 4 क्या बात है AWM लेवल 5 है ये लेवल 4 है ये वाली स्कारल लेवल 4 है ये लेवल 1 लेवल 4 लेवल 4 और लेवल 7
अच्छी है यार, बहुत अच्छी खासी इन्वेंट्री। गन ले नाइस। बाकी इन्वेंट्री भी दिखाना। ये रहा बाकी इन्वेंट्री। अच्छे अच्छे आउटफिट्स हैं इसके साथ। इसमें अगर मेरे एक जैकेट होता ना, उसका लेवल ही अलग होता। गेम ही अटक गई, सेट होगी। हैमलेट सीन हेडगियर्स चश्मे मास्क टी शर्ट्स। क्या ही बात है यार, ये बहुत रेयर टी शर्ट है, पता है? शर्ट है, हुडी, बैकपैक्स, वेरी स्मैक्सी बैकपैक्स। इसमें मोस्ट रेयर चीजें क्या लगी? इसमें एक मोस्ट रेयर चीज एक ये बहुत रेयर है। ये देख रहे हो ये सूट, बट यार पहनने का दिल ही नहीं करता, मोटा बहुत है। इसमें बहुत रेयर चीज है यार, अगर अभी मैं दिखा दूं तो मेरे सर पे दर्द हो जाएगा। गाड़ियों में ये रही गाड़ियां, मस्त सी मस्त। पिकअप, oh my god bro, so many cars. So many cars, nigga. और कुछ तो दुकान नहीं होता। इमोटे शिमोटे, कितने हर्ट्स का मॉनिटर है मेरा? 144 हर्ट्स का। एक्सूट्स, ओके एक्सूट्स। इसमें हमें मिल जाता है ये जो न्यू वाला है, लेवल 2 कर रखा है। क्या बात है, 2 एक सूट हो गए, ये भी लेवल 2 है। ये तीसरा एक सूट, ये लेवल 4 है। और ये है कि नहीं, वेट लेट्स सी, नहीं ये है। 4 एक सूट, ये वाला लेवल 5 है। क्या बात है, ये वाले लेवल 1, ये वाला लेवल 2, ये वाला भी लेवल 5। अभी क्या पेजी आ रहा है। ये लेवल 1 टोटल है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 एक सूट है, जिसमें 2 लेवल 2 है और एक लेवल 4 है और 2 लेवल 5 है। 3 लेवल 2 है, 1 लेवल 4 2 लेवल 5 और बाकी 1 2 लेवल 1 है। नाइस। तबाही आइडिया। चलो गाइस, I'm साइनिंग आउट। मज़ा आ गया स्ट्रीम करके एंड मिलेंगे नेक्स्ट कल स्ट्रीम में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सही है, अच्छा खासा माल लगा दिया ये। चलो मेरे भाई और बहनों, I'm साइनिंग आउट। टेक केयर।